Yoga. The moment you hear this word, what comes to mind is generally asanas or meditation or wellness, and of course India as well. A very general perception about yoga is that it's one of the most effective fitness regimes, and that's about it. But is that all? Definitely not. Yoga is much wider, deeper and complex than what we think of. And in this documentary, we tried to cover the complete picture of yoga in a crisp and a simple format for everyone to understand. Before even getting to what is yoga, we need to first know about who gave yoga, the one which we are using today. It is Patanjali. So let's see the story of Patanjali in first place. The next, what exactly is yoga in very simple words? It is a very complex subject, but we tried our best to bring forward it in the most simplistic manner. So in this chapter, we'll see what it is. And the third chapter is about Kundalini Yoga, one of the highest forms of yoga, which is very complex. But the reason we brought that also into this documentary is there are a lot of misconceptions around Kundalini Yoga. So we want to do our bit in clearing out those misconceptions to the best of our abilities. Now let's see these three chapters in this documentary. Starting with the first chapter, the story of Patanjali. As per Shiva Mahapuranam and couple of other scriptures, one day Lord Shiva was in a deep state of ecstasy in the form of Nataraja and performing a special type of cosmic dance called Ajapatandavam. While this event is happening, Bhagavan Sri Mahavishnu goes into a deep state of meditation and experiences the cosmic dance of Shiva. Very much interested in this course of events, Adisesha, who is the Vahanam of Sri Mahavishnu, requests him he also would like to experience the ecstatic dance of Nataraja. That's when Bhagavan Sri Mahavishnu orders Adisesha to go to Chidambaram, a place which is the abode of Mahadev in the form of Nataraja. And that's where you can get to experience the celestial event of Shiva Tandavam. In simple words, Sri Mahavishnu orders Adisesha to go to Chidambaram and serve Nataraja. One day, a woman named Gonika was praying to Surya Bhagavan for her wish of bearing a child, and as she held her hands in a praying pose, which is called as Anjali, both palms joined facing above the sky, a small baby snake fell from the skies into her hands, and that baby snake is no one but Adisesha himself. As he fell down from the skies into her hands, the downfall in Sanskritam is called as Patana, and the folded hands is called as Anjali. As he fell into the folded hands from the skies, Patan plus Anjali, Patanjali, became his name, and he took up an incarnation of a humanoid snake. So after taking up that incarnation of Adisesha as Patanjali, in a place called Chidambaram in today's Tamil Nadu, where Mahadev is worshipped as Nataraja, that's where Patanjali served Nataraja. The worship of Nagas has been deeply into the culture of India since times immemorial, and Patanjali, being Adisesha, is highly revered and worshipped even today. And wherever Mahadev is shown as Nataraja, he has two attendants with him. One is Patanjali, whom we just discussed about, and the other one is Vyaghrapada, a humanoid with half tiger and half man. If one really have to experience Patanjali, is mostly found in Tamil culture. Across India, one of the greatest cultures that has incredibly long history and heritage is Tamil culture, and that's where we have 18 Siddhars or yogis who shaped up this great culture, and Patanjali is one of them. As you see in the pictures here or in the carvings shown with the markings, Patanjali is always shown accompanying Nataraja in his dance, and that's what he wished for as Adisesha. And now let's get to the point about why we are talking about Patanjali. He's the one who wrote 3 incredibly powerful scriptures which helped humanity from 3 most important quarters of life. Now let's see what they are. The first one is Ayurveda. Patanjali wrote a scripture on Ayurveda which is called as Patanjali Tantra, which in turn of course ascribes to Sushruta Samhita. But Patanjali Tantra is specialized in various kinds of treatments for different kinds of ailments what a human can come across. It is one of the primordial sources of Ayurveda. The second one is Mahabhashyam. Patanjali gave a detailed commentary for Panini's Ashtadhyayi. We have done a couple of documentaries on Sanskritam already on this channel, and like I already said,
The maturity of a language shows the maturity of a civilization. And if one can understand how matured Sanskritam as a language, one will be able to appreciate how advanced the civilization was back then. When I am saying advanced, it's not about outlandish claims of Vimanas or something like that. It's about the clarity people had back then about life, spirituality, mathematics, science, biology, philosophy, and a lot more. And the third one, the last and the most important reason why we are talking about Patanjali is he is the one who gave Patanjali Yoga Sutras. The foundation for the yoga what we know today was given by Patanjali. Now, yoga is not about stretching legs and hands on a mat. It is a lot deeper, and a vast majority of the people across the globe who are practicing yoga do not know where it came from. It came from Patanjali, and we'll see that in more detail in this documentary going forward. And a quick roll-up of the three, Patanjali gave Patanjali Tantra for physical health, that's Ayurveda, and Yoga Sutras for spiritual health, and Mahabhashyam for social health, that is through communication with a better language and grammar. There are many scriptures given by rishis or yogis and in Indian scriptures, but Patanjali stands out for one simple reason. He covered three most important quarters of anybody's life: the physical, the mental, and the social health, all three contributing to a better quality of life. Now, if you take a quick look back, yoga that started as a conversation between Bhagavan Sri Mahavishnu and Mahadev, Patanjali learned it from both Vishnu and Shiva, and he gave three different scriptures on yoga, Ayurveda, and Mahabhashya, and was passed down eventually to his student Adi Shankaracharya. Yes, that's right. Patanjali is in the Guru's lineage of Adi Shankaracharya, and Adi Shankaracharya has set up 4 Pithas: Dwaraka, Badari, Sringeri, and Puri, where his legacy is still being continued. So the knowledge that was passed down by Bhagavan Sri Mahavishnu and Bhagavan Shiva to Patanjali, and from Patanjali to Adi Shankaracharya, and from Adi Shankaracharya to 4 Pithas across India, running the great legacy of Patanjali. And that, in short, is the story of Patanjali. Now let's see what is yoga in simple words. While there are many scriptures defining what is yoga, the most simplistic one, which each and every one of us can understand, comes from Bhagavad Gita. And these are the words of Lord Krishna explaining Arjuna about what is yoga. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhas siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. That translates to: be steadfast in the performance of your duty and treat both success and failure equally, and such state of mind is called as yoga. Sounds very simple but incredibly complex to practice in real life. Can we really be so indifferent to success and failure? It's easier said than done, but that is what yoga is. Now that you understood the most simplistic definition about yoga, now let's get to one of the most complex definitions of yoga as well. And this is what Patanjali defines yoga as: Yogas chitta vritti nirodha. Sounds so simple, but the meaning is so deep. Yoga is a process of restraining chitta from any fluctuations. A very loose translation of this word chitta is mind, but it is actually not mind, it's a state of mind. And we'll see in a minute what it is. Let's step out a bit towards the human anatomy. The structure of the brain, as we know, is scientifically classified into 4 different parts, rather 5. So there are 4 lobes, which is called as cerebrum, and 1 lobe called as cerebellum. And these 4 lobes together are frontal lobe, which is responsible for personality, characteristics, decision making, movement, and actions like that. And the parietal lobe is more about identifying the objects, interpreting pain, touch in the body. So these are the functions of this part of the brain. Occipital lobe, it controls the vision and the color perception, about your abilities on recognizing the colors. All those are stored in this part of the brain. And the 4th one is temporal lobe, which is mostly the reservoir for short-term memory, hearing, speech, perception of musical rhythm, etc. And the 5th part is cerebellum, which is to coordinate voluntary muscle movements, to maintain the posture, balance of the body, etc. So this is the construct of human brain as we know today. And depending on which state of mind you are, different parts of brain gets activated and the actions are directed accordingly.
Now, if we try to understand the same human brain as per Yoga Siddhantam, the anatomy is classified in a different format. Towards the left, what we just saw, the lobes with different functions, the physical classification of the tangible parts of brain, that's how the anatomy is classified. While in Yoga Siddhantam, the human brain is classified into 4 levels. 4 levels of consciousness, or in simple words, 4 different states of mind. So the state of mind defines how the brain behaves. So the first level is manas, and the second level is ahankara or ahankaram, and the third level is buddhi, and the final level is chitta. These are the 4 levels in which a human brain could oscillate. And on a lighter note, you should not be comparing these two because the purpose is totally different. The scientific classification is more towards understanding the physical properties of a brain, while Yoga Siddhantam focuses on a holistic approach about how your brain would function in different states of mind. So they are not contesting but complementing each other. It is quite important to understand these 4 levels of brain as per Yoga Siddhantam. So let's briefly see them, starting with the first one, manas. Manas is a state of mind where the sensory perception of pleasure and pain takes the center stage. And in any of your decision makings, such kind of a pleasure would be the deciding factor whether you would like to opt for something or not. It depends on the pleasure or pain you derive from doing that specific thing. You take the call whether you want to do it or not. And that is the state of mind called manas. And the second one is ahankaram. Here, it's an egocentric attitude in decision making. So if I take a call in a self-centric approach, it's like I, me, myself. If I take a call in that note, then it is in the state of mind called ahankara. And the third state of mind is called as buddhi, where the decisions are made in a more rational approach, ability to discriminate what is good, what is not, and then take a call. Then that state of mind is called as buddhi. And the final and the topmost level of consciousness or your state of mind is called as chitta, which is the highest level where there is no difference between pleasure or pain. And honestly, this state of mind is very difficult to put in words. Apparently, they say that it is the highest level of consciousness, or in simple words, the most stable state of mind where you will not be affected by any reason whatsoever, and you are in full control. Your thoughts, emotions, feelings, everything is in full control of yourself, and you will not be distracted by any other means. And that rock steady state of mind is called as chitta. And if we reflect the definition of Patanjali, what he's saying is restraining chitta from any kind of fluctuations. That means how can you hold yourself in such kind of a rock steady state of mind where there is no space for neither pleasure nor pain. Holding your brain in that state is called as yoga. Like I said, it's a complex definition. So yoga is a practice where you raise your state of mind from manas to chitta. And once a person realizes the chitta state of mind, then there is no difference between God and man. If a person is in the state of mind of manas, it's called as pashu, and his journey all along these 4 levels of brain, reaching out to the highest level, is called as the journey towards Pashupati. A more mystical definition about yoga is a pashu becoming Pashupati is called as yoga. Pashu refers to anybody who is in the state of mind of manas, and Pashupati is anybody who is in the state of mind of chitta. And this is also the reason why there has been a saying of Aham Brahmasmi, which means I myself is the God. It's just that I have to realize it getting into the state of chitta. So that's a more of a mystical definition, but that's what it is. And this is also the reason why in Hinduism it is said that you are responsible for your life, good or bad. Further down, Patanjali explains about a process in which you can attain the highest level of chitta. And he says that it is an 8-step approach. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. These 8 are considered as the 8 limbs of yoga, or 8 steps towards the highest level of consciousness of human mind. And this is called as Ashtanga Yoga. Let's briefly see the 8 what they are. Starting with the first one, Yama. It means having external discipline, and it is 5-fold. Being non-violent, truthfulness, not stealing, and not wasting energy, and not being greedy. So this is the very first step in yoga that one has to practice. Strictly follow these 5 guidelines. And the second step is Niyama, which means to have internal discipline, and is again 5-fold. Bodily purification, contentment, spiritual observance, self-study, and devotion.
These are the 5 important traits one has to develop to get into the second phase of Ashtanga Yoga, which is Niyama. And the third phase is Asana. Asana is a posture which you can hold it comfortably and concentrate for a very long time. Now this is the step which is widely popular across the world, which are the Yoga Asanas. And as an offshoot from Patanjali's Yoga Sutra, eventually Hatha Yoga, a special branch of yoga, got developed and which has 84 different asanas, which is in practice across the world today. But the foundation of it is given by Patanjali about how an asana needs to be conducted. The main objective of asana is to sit comfortably for a long time in that posture and concentrate deeply on the entity that you would like to meditate. That we'll see in a short while. The fourth step of Ashtanga Yoga is Pranayama. This is also reasonably known across the world. Controlling the motion of exhalation and inhalation flows is called pranayama. And one very important point here with respect to pranayama is, it sounds to be so simple and easy task, but it is a very, very complex process, and I'll hold that for a minute because we're going to see something related to pranayama in a short while. Up next, and the fifth step of Ashtanga Yoga is Pratyahara. It is a process of withdrawing the senses from their abilities. From this step onwards, it goes into a metaphysical nature, but that's what it is. In this step of yoga, it's all about withdrawing the sensory abilities of the sense organs voluntarily. The sixth step is Dharana. Dharana is holding the mind onto a particular object of your focus. It could be an entity or an object or a murti of a god, anything that you would like to concentrate and meditate upon. Remember that the choice of the entity is also very crucial. Say for instance, if I am a devotee of Shiva, I could be meditating on a Shiva Lingam. And the seventh stage is called Dhyana. Dhyana is a state of meditation. An unbroken flow of knowledge from that object of meditation is called as Dhyana. At this point, the person who is meditating will think of nothing else except the entity about which he or she is meditating. Say for instance, if I'm meditating on a Shiva Lingam, I think of nothing else but fully just about that Shiva Lingam. And that state is Dhyana. And this state is very powerful because this state of Dhyana is the foundation for Buddhism, which originated eventually from Hinduism, and it is called as Zen as it went eastward. Dhyana became Zen. The eighth stage of Ashtanga Yoga is Samadhi, a final thoughtless state of mind. It is called as Samadhi. And this stage, a person will realize his or her highest state of mind, which is Chitta. It is difficult to verbally articulate what the stage is, but they say that this is the stage where one can realize Aham Brahmasmi, that I myself is the God. Back in the year 1961, a French cardiologist conducted a research in India about voluntary control of heart with yoga. A lot of experiments were done on 4 to 5 highly proficient yoga gurus who can stop their heart, yes you heard it right, who can voluntarily stop their heart to almost a steady state during the deep state of yoga. Sri Tirumala Krishnamacharya, yoga guru who is highly revered, who practiced yoga for his lifetime. So a research was conducted on Sri Tirumala Krishnamacharya along with 4 other yoga gurus, where they could stop their heart. You can see the ECG or the electrocardiogram reports here. The one which is highlighted is in a deep state of yoga of Sri Tirumala Krishnamacharya, where he took control of his own heart and he slowed it down, not with an intention to slow down, but when he enters that highest level of state of mind, which is Chitta, with a strong practice of pranayama, even the involuntary functions of the body can be brought into control. And anyone who meditates at that state, like I said, will be in the rock solid state of mind and body as well. A person taking control of involuntary functions of a body might go against the current laws of modern medicine, but that's the limitation of modern medicine, where yoga goes much beyond that. It is just that we haven't discovered fully the potential of yoga. And this research paper details about how the yogis in India back then took complete control of their body, including the involuntary functions. This is the power of pranayama.
And Hatha Yoga says that if pranayama is done in a right way, it will cure many bodily ailments. And if it is not done properly, it will bring all kinds of new ailments. So that is the reason yoga should always be administered under a supervision of a guru. Now the Ashtanga Yoga which we saw just now, the 8 steps, the journey from Pashu to Pashupati via the 4 levels of mind. It all might sound a bit abstractive or difficult to follow, but that's what it is. It's not so easy. It takes a lifetime of practice. And at the highest state, just like how we saw, the human body responds into a totally different direction beyond the understanding of modern science. In my opinion, the true potential of yoga is not really discovered by the current generation. Hope we will understand it in the years to come. As the Ashtanga Yoga is very complex to understand, that is the reason I pulled up this most simplistic definition about yoga from Bhagavad Gita. We do our duty and stay indifferent to success or failure, and that is yoga, the most simplistic form of yoga which each of us can practice. Now let's get to the third and the last chapter, Kundalini Yoga. A lot of commercialization, misconceptions and misunderstandings are entangled with Kundalini Yoga, especially the chakras. It is very loosely used, and of late there have been a lot of commercialization with respect to Kundalini Yoga, and we want to just do our bit to clarify what exactly is Kundalini Yoga. As I just mentioned, yoga is a journey of a man or a woman from a state of Pashu to becoming to the state of a Pashupati, and this journey is called as yoga. And there are multiple paths one can choose in this journey. There is Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Sankhya Yoga, and there is Kundalini Yoga. Kundalini Yoga is considered as the most powerful formats of yoga and also a very risky procedure to attain the Chitta state of mind. Now let's take a look again at the human anatomy. As we all know, human brain is the governing authority for the entire human body, and we have the nervous system, muscular system and the skeletal system in the operational hierarchy. The brain governs all these 3 systems top down. That's the basic of human anatomy as we all know. As we saw the anatomy as per Yoga Siddhantam, where there are 4 states of mind rather than physical classification, same way the human body as per Yoga Siddhantam is classified into nadis. A nadi is an energy channel that flows right from the brain up until the end point where the intended action is performed. A nadi is a transversal flow of energy which cuts through nervous system, muscular system and the skeletal system, which again in turn is governed by the brain. Let's take an example. Do as I say. Lift the little finger of your right hand. Now the moment you heard my words, your brain understands that I'm asking you to lift the little finger of your right hand. It understands that what is right hand and what is the little finger in the right hand, and sends a signal from your brain to the little finger which you wish to lift, and that's how the action is performed. Now as per human anatomy, this entire process goes through your nervous system, muscular system and the skeletal system because of a signal that was fired from the brain to lift the finger. Now this entire flow of energy right from your brain up until your little finger of right hand could be called as one nadi. So as per Yoga Siddhantam, instead of classifying them independently, Yoga Siddhantam classifies the entire human body in forms of nadis, and there are 72,000 of such energy channels in human body. Again, like I said, it is not a comparison between the human anatomy as we know today versus Yoga Siddhantam. They again complement each other. They do not contradict. Just that the nadis are not practically visible but are a logical classification about how the energy flows right from your brain to different parts of your body. Now that we have a brief understanding about nadis, which is the energy flow, coming to the Kundalini Yoga, it is all about how we channelize this energy flow in human body towards the brain to realize the Chitta state of mind. And to realize the Chitta state of mind, the brain needs to be pumped up with a lot of energy. And how you concentrate the entire energy in your body and pump it up towards your brain to realize that Chitta state of mind is called as Kundalini Yoga in very simple words. If this feels a bit abstractive in nature, then I would again reflect back to the research that was conducted about how voluntarily you can take control of your heart and other involuntary functions in your body. Just that
we don't have that enough understanding and maturity. When I'm saying we, it's you and me together. We don't have that enough understanding about what is the true potential of yoga. And Kundalini Yoga is about one such state of yoga where a person can master the art of controlling the energy flow in his or her own body. And this is the reason why Kundalini Yoga is considered as a very, very dangerous practice, and absolutely it is not recommended for anyone. Kundalini Yoga is not something that we pay a fee and learn from somebody from a yoga institute or something. That is absolutely nonsense. A guru who has mastered the art of Kundalini Yoga, in first place, he or she will never teach it for money or any materialistic things. And second thing, Kundalini Yoga is not taught to everyone who asks for it. The guru will assess whether a person is fit to learn Kundalini Yoga, both physically and mentally, and only then he or she will be taught Kundalini Yoga. So all the commercialization that is happening in the name of Kundalini Yoga, just don't trust them. There are other formats of yoga like Hatha Yoga, the simple asanas, which are actually meant for everybody. To theoretically understand what is Kundalini Yoga, one can refer one of the most credible sources, that is from Swami Vivekananda. He wrote a book back in 1800s called as Raja Yoga. As part of this book, the anatomy of human body and how the Kundalini Yoga works is explained out in a very subtle and detailed manner. And this is what Swami Vivekananda wrote in his book Raja Yoga about the anatomy of Kundalini Yoga. There are three most important nadis or the energy channels in human body called as Ida, Pingala and Sushumna. So this is what he says. If we take the cross section of a human spine, which is in the shape of a butterfly or a 8, the right column is called as Ida and the left column is Pingala. And the midpoint or the mid channel that runs straight across the spinal cord is called as Sushumna Nadi. So these are the three most important energy channels that are very crucial for Kundalini Yoga. In every human body, right at the bottom where the spinal cord hits the pelvis, that is where a corpus energy, a reservoir of energy is concentrated and lies dormant. And this reservoir of energy symbolizes Adi Shakti, the sacred feminine energy, and is called as Kundalini and is metaphorically represented as a coiled snake. The energy present in any living thing is considered and revered as the manifestation of Adi Shakti herself. And pumping up this corpus energy from your pelvis through the spinal cord of Ida, Pingala and Sushumna nadis up until the brain to eventually push it from Manas state to Chitta state. This entire process is called as Kundalini Yoga. Now coming to chakras, the most commonly and loosely used word, chakras. So now chakras are the core energy centers in the path of Kundalini energy as it moves as part of Kundalini Yoga right from pelvis to the brain. This is a bit abstract topic, and this is also a very, very commercialized element of yoga. And remember, no one teaches Kundalini Yoga for money. No one should teach it for money. And it is not a course that will be taught or learnt over a period of time. It takes a lifetime to just understand Kundalini Yoga, let alone practicing and mastering it. The most mystical definition about Kundalini Yoga is the unification of Shiva and Shakti in a human body. That is the ultimate state what anyone can realize once he or she gets to the epitome of Kundalini Yoga. So wrapping it up all, it was Patanjali who gave the Patanjali Yoga Sutras, which is one of the foundational texts for yoga. And then we have Bhagavan Sri Krishna who gave Bhagavad Gita, which is also a foundational text for yoga. And then we have Yajnavalkya Maharishi who gave Yoga Yajnavalkyam, which is another primordial text for yoga. And then we have Vasishtha Maharshi who gave Yoga Vasistham, which also talks about yoga at great detail. Like this, there are many scriptures which detailed out yoga and has been part of the Indian culture since thousands of years. And each of these great texts on yoga explains about different types of yoga like Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and there are many other formats of yoga. Like I said, yoga is about a journey of a Pashu becoming a Pashupati.
So there are different paths in this journey that one can choose to pick up, and these scriptures detail about different formats of yoga. And if we further zoom down into Ashtanga Yoga alone, there we have 8 steps: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, which we saw. And in this entire ocean of yoga, it's only asana that is widely known. But there is a lot more than just asanas. Yoga is a lifetime process of finding answer for one question, just one simple question: who am I? And as always, thanks for watching. आज योग के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, पर योग के मार्ग पर चलने का क्या तरीका है, इस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती। योग कोई व्यायाम की प्रणाली नहीं है कि 2-4 एक्सरसाइज कर लिए, 2-4 आसन कर लिए और योग हो गया। अधिकांश लोग आज योग को लगभग इसी संबंध में जानते और समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि योग किसे कहते हैं। वास्तव में आज हम लोग जो योग देखते हैं वह योग नहीं बल्कि व्यायाम है। आज 2-4 एक्सरसाइज कर लेना या 2-4 आसन कर लेना यह कोई योग नहीं है। आज मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से यह व्याख्या करने की कोशिश करूंगा कि योग किसे कहते हैं, वास्तव में योग होता क्या है। आज इससे आप पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे और आपके मन में योग के संबंध में जो गलत अवधारणा बनी हुई है, जिसे आप योग समझते हैं, यह गलत अवधारणा खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संदर्भ में विकसित सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली विधियों में योग को शामिल किया जाता है, जिसकी पद्धतियों के महत्व और उपयोगिता को आज समूचे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि को योग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चित्त वृत्तियों के निरोधन के लिए योग प्रणाली का विकास किया। योग का अर्थ होता है कि व्यक्ति के चित्त और ब्रह्मांडीय चित्त यानी इंडिविजुअल माइंड एंड कॉस्मिक माइंड के सर्वोच्च मिलन का एकीकरण हो जाना। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्रों के 8 अंग हैं। इसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसका वर्णन हम अब करने जा रहे हैं। यह जो योग है यह अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग में 8 तत्व शामिल होते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग कहा है और इसके अंतर्गत 8 अंगों की चर्चा की है। ये अष्टांग योग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए एक एक करके इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला है यम। इसे इंग्लिश में सेल्फ रेस्ट्रेंट कहते हैं। यम का उद्देश्य होता है शरीर, वाणी और मन का नियंत्रण। यम के 5 व्रत रूप होते हैं, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा से आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार यहां दोहरा देना चाहता हूं। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव को किसी प्रकार से कोई आघात न पहुंचाना, अर्थात किसी भी जीव को मन, वचन या देह से आघात न पहुंचाने को ही अहिंसा कहा जाता है। यम के अंतर्गत जो दूसरा तत्व है वह है सत्य यानी ट्रुथ। सत्य का अर्थ होता है मन और वाणी में यथार्थता का होना, अर्थात वैसा ही बोलना जैसा कि देखा गया है और वैसी ही स्मृति का होना जैसा कि देखा, सुना या कल्पना किया गया है। यम के अंतर्गत ही तीसरा अंग है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है किसी दूसरे की वस्तुओं को चुराने या चोरी के लिए बात करने, यहाँ तक कि ऐसी इच्छा से बचना ही अस्तेय कहलाता है।
यम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है संवेदी सुखानुभूति। संवेदी सुख की अनुभूति, विशेष रूप से यौनिक सुख की अनुभूति के अन्वेषण, मन, वाणी या शरीर के किसी भी स्तर पर बचना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और यम के अंतर्गत जो पांचवा रूप है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में सामग्रियों का संग्रह न करना। अष्टांग नियम के अंतर्गत जो दूसरा सूत्र है, जो दूसरा अंग है वह है नियम अर्थात प्रिंसिपल। नियम के अंतर्गत उच्चतर श्रेणी की सिद्धियों के लिए व्यक्तित्व को अभिप्रेरित करने वाले सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। इस नियम के 5 रूप हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल है। चलिए यहां इसे भी एक एक करके समझ लेते हैं। यम के अंतर्गत सबसे पहला नियम जो है वह शौच है। शौच का उद्देश्य शरीर, मन और परिवेश को स्वच्छ रखना है। मन की आंतरिक स्वच्छता या शुद्धता की प्राप्ति सहानुभूति, मैत्री, प्रसन्नता, विरक्ति इन सबों से आती है। भोजन की शुद्धता से मन की शुद्धता बढ़ती है। नियम के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह है संतोष। संतोष का तात्पर्य सहज ढंग से कर्तव्य पालन द्वारा प्राप्त फल से संतुष्ट होना ही संतोष है। योगी सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सफलता विफलता, सहानुभूति, आक्रोश इन सबों को समान रूप में स्वीकार करता है। यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति इन सब को समान रूप से स्वीकार करता है उसे संतोष की प्राप्ति होती है। नियम के अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट है तप। तप द्वारा आत्मनियंत्रण में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से स्वधर्म पालन प्राप्त करने वाले कष्ट, ताप, शीत आदि के लिए सहनशीलता में अभ्यास द्वारा वृद्धि होती है। नियम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा बुद्धि एवं उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास और जीवन का निरीक्षण एवं अध्ययन करना। और नियम के अंतर्गत जो 5वां पॉइंट है वह है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर को हमेशा स्मरण करना, सदैव स्मरण करना और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। अब अष्टांग योग के अंतर्गत जो तीसरा सूत्र है आसन यानी पोस्चर, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। आसन का अर्थ है व्यक्ति के दृढ़ता पूर्ण किंतु पूर्णतः शिथिलता के साथ यानी सुखपूर्वक विभिन्न मुद्राओं में बैठने की क्रिया। आसन का उद्देश्य मन की शांति एवं शरीर के अंगों को चुस्त दुरुस्त एवं नियंत्रित करना होता है। योग सूत्र में अनेक प्रकार के आसनों या मुद्राओं का वर्णन किया गया है। दुर्भाग्यवश इसके अनेक विकृत रूप भी आजकल योगासन के नाम से प्रचलित हैं और यह भली भांति फैली हुई देखी जा सकती है कि आसनों को ही योग का संपूर्ण पर्याय समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, पूरी तरह से गलत है। अष्टांग नियम के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वह है प्राणायाम यानी ब्रीथ कंट्रोल। प्राणायाम का अर्थ है प्राण वायु के आवागमन को नियंत्रित कर लेना। प्राणायाम की क्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अधिकाधिक मात्रा में शुद्ध वायु को ओम का उच्चारण करते हुए अंदर ले जाता है तथा अवस्था में दोगुने समय तक वायु को अंदर रोके रखता है। इसके पश्चात प्रथम अवस्था के बराबर समय विस्तार में धीरे धीरे वायु को बाहर निकालता है। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जैसे बाह्य वृत्ति, अभ्यास वृत्ति,
स्तंभ वृत्ति और राजयोग प्राणायाम। अब अष्टांग योग के अंतर्गत हम लोग प्रत्याहार यानी विड्रॉल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्याहार में विभिन्न इंद्रियों को उसके लक्ष्यों से विपरीत अंदर की ओर मोड़ने को ही प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रक्रिया के अभ्यास द्वारा मन गलत चीजों के प्रभाव से दूर होकर अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। यहां अभी तक हम लोग अष्टांग योग के अंतर्गत 5 अंगों जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को समझने की कोशिश किए हैं। इन अष्टांग योग के 5 अंगों को बाह्य साधन कहा जाता है और अभी मैं अष्टांग योग के 3 तत्वों या 3 सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं, जो कि धारणा, ध्यान और समाधि है। अष्टांग योग के इन 3 अंगों को आंतरिक साधन कहा जाता है। अभी जो यहाँ 5 अंगों की चर्चा की गई, उसे अगले 3 अंगों के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। आइए अब हम लोग यहाँ अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा को समझने का प्रयास करते हैं। धारणा का अर्थ होता है चित्त यानी मन का किसी एक सर्वोच्च बिंदु पर ठहरना या केंद्रित होना। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है। यह बिंदु बाहरी या आंतरिक अंग या कोई बिंब भी हो सकता है। यह क्रिया समाधि की तैयारी की अवस्था होती है। अब अष्टांग योग के अंतर्गत जो इसका अगला अंग है वह है ध्यान यानी अटेंशन। ध्यान होता है किसी ध्येय वस्तु की ओर चित्त का यानी मन का केंद्रित होना। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क में एक ही जैसी अनेक तरंगें उत्पन्न होती है। वे तरंगें उतनी ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है कि एक तरंग के शांत होने के पूर्व ही दूसरी तरंग का प्रवाह आरंभ हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण निरंतरता बनी रहती है। अब अष्टांग नियम के अंतर्गत, अष्टांग योग के अंतर्गत हम लोग इसका अंतिम सूत्र या अंतिम अंगों की चर्चा करेंगे, जो कि है समाधि। समाधि योग की अंतिम अवस्था होती है जब ध्यान में ध्येय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है। ध्येय के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। चित्त शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। यह अष्टांग नियम का सबसे अंतिम अंग होता है। इस अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्यक विकास होता है, उसका पूरी तरह से विकास होता है। उसे अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है। आत्मा और शरीर का तादात्म्य भंग हो जाता है। पुरुष चित्त प्रवृत्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दुख के कारण का उन्मूलन होता है और सुख अर्थात स्वास्थ्य की दिशा विकसित होती है। तो मित्रों, यह है संपूर्ण योग। से आज हम लोग योग समझते हैं, उससे यह कोसों दूर है। आज हमारे समाज में अनेक ऐसे बाबा हैं, अनेक ऐसे योगी हैं जो अपने आप को पूरी तरह से योगी कहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। वे इस योग के आड़ में अपना धंधा, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो मित्रों, आज अष्टांग योग के माध्यम से हम लोगों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को समझने का प्रयत्न किए हैं। इन सबों को अपनाने वाला ही एक सच्चा योगी होता है, एक सच्चा योगी कहलाता है। इन सभी योग के 8 अंगों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सच्चा योगी बन सकता है। तो मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी गलत अवधारणा, जिसे आप योग समझते थे, शायद अब वह दूर हो जाएगी या हो चुकी होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें
अगर पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर तो जरूर ही करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आप सभी के लिए हर बार की तरह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित यानी कि पातंजल योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अष्टांग योग योग दर्शन का मुख्य टॉपिक है। अगर जो आप योग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अन्य अगर जो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अच्छे ढंग से मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। आप अगर जो इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो चैनल पर अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि योग दर्शन से संबंधित अभी तक हम यहाँ पर चैनल पर लगभग 12 से 13 वीडियोज में आपको यहाँ पर चैनल पर दे चुका हूँ, जिनमें हमने योग दर्शन को पूरा लगभग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा था महर्षि पतंजलि, और योग दर्शन का हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा था। योग की परिभाषाएं हमने यहाँ पर चर्चा की थी, चित्त की वृत्तियों के बारे में चर्चा की थी, अभ्यास वैराग्य के बारे में चर्चा की थी, चित्त की 5 भूमियाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं, हमने यहाँ पर योगांतराओं के बारे में या फिर उसके अलावा जो अन्य जो विघ्न है, चित्त प्रसादन के उपाय हैं, कर्म सिद्धांत है, क्रिया योग है, पंचक्लेश है, पंचक्लेश की जो अवस्थाएं हैं, या फिर जो योग दर्शन में वर्णित जो प्रमाण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अभी तक चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी सारे लेक्चर मैं आपको यहाँ पर अभी तक दे चुका हूँ। साथ ही साथ योग दर्शन के भिन्न भी आपको चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस मिलते हैं। आप चैनल पर आकर के इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पूर्व तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अष्टांग योग है, इसका तात्पर्य क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग की व्याख्या। यहाँ पर आप देखेंगे जो अष्टांग योग जो शब्द है, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। अगर जो हम सिर्फ अष्टांग शब्द को देखें तो 2 शब्द हैं, अष्ट और अंग। और योग का तात्पर्य आप सभी को मालूम है, योग का तात्पर्य होता है जोड़ना। योग की व्याख्याएं या फिर अन्य चीज़ों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अष्टांग योग की अगर जो हम व्याख्या करते हैं, अष्टांग योग को अगर जो हम जानने का प्रयास करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे अष्ट अंग प्लस योग यानी कि अष्टांग योग। तो अष्ट अंग अर्थात जिसके 8 अंग हैं या फिर जो 8 अंगों वाला है, वह योग क्या कहलाता है? अष्टांग योग कहलाता है। आपने काफ़ी सारे योगों के बारे में पढ़ा है और आगे भी आपको मैं चैनल पर देने वाला हूं, जैसे कि क्रिया योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है। काफ़ी सारे योगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। अष्टांग योग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि अष्टांग योग के बारे में आपको अन्य ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है, इसको हम यहाँ पर और अन्य यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद राजयोगी माने जाते हैं। तो जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग को राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको ध्यान देना है कि धारणा, ध्यान और समाधि जो 3 इसके जो अंतरंग साधन हैं, कहीं पर सिर्फ राजयोग के अंतर्गत इन 3 ही साधनों को यहाँ पर लिया जाता है, और कहीं पर आपको पूरा जो अष्टांग योग है इसी को राजयोग को पढ़ने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होना चाहिए। जब कभी आपको राजयोग के बारे में पूछा जाए तो राजयोग का तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसके अन्य कोई साधन हो, वह अष्टांग योग ही कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर इसको और अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो अष्टांग योग है
ये किन साधकों के लिए बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि ने साधकों की 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई है, मध्यम, अधम और उत्तम। उत्तम के लिए हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। मध्यम के लिए भी हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। आपको ध्यान होना चाहिए, जो अष्टांग योग है ये किन साधकों के लिए है, जो निम्न कोटि के साधक हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 3 कोटि के साधक यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है। उनके लिए कहा है कि इन साधकों को अष्टांग योग की साधना करनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो अष्टांग योग है इसको यहाँ पर देखते हैं। आप अगर जो योग दर्शन का दूसरे पाद का यानी कि साधन पाद का अगर जो आप 29 नंबर का सूत्र अगर जो आपको यहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। वह है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। आपको जो ये सूत्र है याद होना चाहिए। अगर जो आपको ये सूत्र अगर जो पूरा याद हो जाता है तो आप अष्टांग योग को स्टेप बाय स्टेप आप याद कर पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट के में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पंचम साधन कौन सा है, तीसरा साधन कौन सा है या फिर 8वां साधन कौन सा है। तो अगर जो आपको सूत्र याद हो जाता है तो आपको इनके सीक्वेंस भी याद हो जाएंगे। फिर से सूत्र में यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टावंगानी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं अगर जो संस्कृत में याद नहीं होता है, लेकिन आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर इसका जो तात्पर्य आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। ये आपको यहाँ पर समझना है। देखो, मैं इस लेक्चर है आगे किसी एक टॉपिक में किसी एक वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो योग की परंपराएं हैं वो भिन्न हैं, लेकिन ये क्या है, ये योग के अंग हैं। ध्यान देना है, जो अष्टांग योग है ये योग का अंग है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कौन कौन से हैं? यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व एक डायग्राम में आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पूर्व में ही मैं आपको बता चुका हूँ, अष्ट अंग और योग 3 शब्द यहाँ पर हैं जिससे मिलकर के हमारा अष्टांग योग शब्द पूरा कंप्लीट होता है। तो अष्टांग योग कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हो सकता है कि आपको यहाँ पर मेरी इमेज के कारण यहाँ पर साफ न दिखाई दे, तो मैं अपनी इमेज यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 साधन हैं इनको बहिरंग साधन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और 3 जो साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग साधन के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 साधन आप प्रथम के जो पढ़ते हैं ये आपको योग दर्शन के दूसरे पाद में पढ़ने को मिलता है, यानी कि समाधि पाद में साधन पाद में पढ़ने को मिलता है। और जो 3 जो ये साधन हैं इनको आपको इनके बारे में आपको तीसरा जो पाद है यानी कि जो विभूति पाद है वहां पर पढ़ने को मिलता है। तो ये आपको इसको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये आपको यहाँ पर इसका जो पूरा जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको प्रत्येक को यहाँ पर एक को यहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन अगर जो आपको जो ये टॉपिक है इसको अच्छे ढंग से समझना है तो आप वीडियो का टाइम ना देखें। अगर जो आप वीडियो का टाइम देखेंगे तो आप हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से न समझ पाएं, और अगर जो आप पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो आप वीडियो का टाइम ना देखें। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम जो साधन है वह था यम। अब यम का अगर जो आप दूसरे पाद का 30 नंबर का अगर जो आप सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाह। फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाह। इसका तात्पर्य क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 महर्षि पतंजलि द्वारा यम कहे गए हैं। आपको ध्यान देना है। प्रथम जो साधन है कौन सा? यम। यम के अंतर्गत 5 साधन आते हैं, 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 चीजें आती हैं किसके द्वारा? किसके अंतर्गत? यम के अंतर्गत। अब जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है,
इसको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। इस चीज को हम यहाँ पर डीप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर जो हम सिर्फ अहिंसा को पढ़ने जाएं तो अहिंसा के फल भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा और डीप यहाँ पर पढ़ना होगा, तो सिर्फ एक ही टॉपिक में हमारा काफी सारा समय चला जाएगा। लगभग अगर जो मैं पूरा इसी को अगर जो अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा तो लगभग 1.5 से 2 घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अगले किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। जब पूरा हम वहाँ पर यम पढ़ेंगे तो हम पूरा एक एक को हम वहाँ यहाँ पर डीप देखेंगे, नियम पढ़ेंगे तो एक एक को हम यहाँ पर डीप देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अहिंसा का तात्पर्य क्या है या फिर अहिंसा का फल क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अहिंसा का तात्पर्य क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक शब्द होता है हिंसा। तो हिंसा का तात्पर्य होता है मनसा वाचा कर्मणा। आप किसी के भी द्वारा जो आप किसी की हिंसा करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोई जीव को आप हाथ से मार रहे हैं या फिर आप किसी को वाणी के द्वारा आप आहत कर रहे हैं। अगर जो आप मानसिक रूप से भी अगर जो आप उसके बारे में अगर जो आप गलत सोचते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। ध्यान देना है, आपको यहाँ पर समझना है, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा अगर जो हम किसी की भी हिंसा करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। अगर जो इसका यम के अंतर्गत अगर जो हम पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसका विपरीत आपका आचरण होना चाहिए। यानी कि कैसा आचरण होना चाहिए? हिंसा का आचरण नहीं, वरन अहिंसा का आचरण होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि हिंसा का तात्पर्य क्या होता है और अहिंसा का तात्पर्य क्या है। दूसरा शब्द यहाँ पर है सत्य। एक शब्द आप जानते हैं असत्य है, तो यहाँ पर भी वही है, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी को आहत न पहुंचे ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना, या फिर आपके द्वारा बोले गए किसी भी निरपराध को अगर जो कोई भी अगर जो सजा अगर जो मिलती है तो वह अहिंसा के अंतर्गत आता है। और अगर जो आप ऐसे सत्य या फिर ऐसे वचन का पालन कर रहे हैं तो वह आपका असत्य कहलाता है। तो यहाँ पर भी महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आपको असत्य का आचरण नहीं, वरन उसका भिन्न, उसका जो विपरीत जो सत्य है इसका आचरण करना है। तो सत्य का तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब इसके पश्चात अगर जो हम अस्तेय को देखते हैं तो अस्तेय का तात्पर्य क्या है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक शब्द होता है स्तेय, तो स्तेय का तात्पर्य होता है चोरी करना। अब इसी का जो विपरीत अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं तो इसी का विपरीत हो जाएगा अस्तेय। स्तेय अर्थात किसी की वस्तु को बिना बताए या फिर किसी की वस्तु का अपहरण कर लेना, यह स्तेय के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर जो हम इसका विपरीत अगर जो हम पालन करते हैं तो वह हमारा अस्तेय कहलाता है, जो कि महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर यम के अंतर्गत तीसरा साधन यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य अर्थात बिंदु को धारण करना। अब ब्रह्मचर्य आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे, वहां पर ब्रह्मचर्य के काफी सारे वहां पर प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ब्रह्मचर्य अर्थात यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मचर्या यानी कि ब्रह्म में विचरण करने वाला जो साधक है, या फिर ब्रह्म को अपने जीवन में अपनाना, या फिर आप बिंदु धारण करना, आप इस प्रकार से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी मनसा वाचा कर्मणा से हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य की यहाँ पर साधना कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या फल हैं, या फिर अन्य जो इन सब के क्या फल हैं, इसके बारे में भी हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। पांचवा यहाँ पर है अपरिग्रह। एक शब्द होता है परिग्रह और एक शब्द है अपरिग्रह। परिग्रह का ही भिन्न यानी कि उसका विपरीत शब्द है अपरिग्रह। तो परिग्रह का तात्पर्य होता है संचय करना। एग्जाम्पल जैसे कि मधुमक्खी या फिर हम भी संचय करते ही हैं, परिग्रह करते ही हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परिग्रह न करना अर्थात अपरिग्रह। तो ये जो 5 जो साधन जो बताए गए हैं, यह महर्षि पतंजलि ने प्रथम जो साधन है यम, इसके अंतर्गत बताए हैं। अब दूसरा जो साधन है वह है नियम, जो कि आपको दूसरे पाद का 32 नंबर का सूत्र में पढ़ने को मिलता है। सूत्र आप यहाँ पर पढ़ेंगे, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इसका तात्पर्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति, ये 5 महर्षि पतंजलि द्वारा नियम कहे गए हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा था कि यम को हम अच्छे ढंग से हम अगले किसी लेक्चर में समझेंगे, उसी प्रकार से मैं फिर से आपको यहाँ पर बता दूं कि नियम को हम किसी एक अच्छे ढंग से किसी एक लेक्चर में समझेंगे। एक एक चीज को हम किसी एक न्यू लेक्चर में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, शौच यहाँ पर प्रथम यहाँ पर साधन है नियम के अंतर्गत। तो शौच का तात्पर्य होता है शुद्धि। तो आंतरिक और बाह्य शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना, वह शौच के अंतर्गत है। इसी प्रकार से दूसरे यहाँ पर है संतोष।
तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे संतोषा धनुत्तम सुख लाभ, उसका जो फल है वह क्या है, उत्तम सुख लाभ है, जिसको कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरे यहाँ पर बताया गया है संतोष, अर्थात जो वस्तु जितनी हमें प्राप्त हो उसमें ही संतोष रहना। तीसरा यहाँ पर है तप। तो तप क्या है, तप के बारे में हम जब क्रिया योग पढ़ा था तो वहाँ पर भी चर्चा की थी। तो तप अर्थात तपाना, शरीर को तपाना, शीत उष्ण जो कुछ भी द्वंद्व हमारे समक्ष आए उनको सहन करना, यह क्या है, तप है। स्वाध्याय अर्थात नियमित स्वाध्याय, जैसे कि हम कहते भी हैं कि स्व का अध्ययन अगर जो हम करते हैं तो वह हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत कहलाता है या आता है। स्वाध्याय का तात्पर्य जैसे कि योग ग्रंथ या फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ना भी, यह भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य होता है ईश्वर शरणागति। तो ईश्वर शरणागति अगर जो हम करते हैं तो वह हमारा ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। तो ये 5 चीजें जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, यह नियम के अंतर्गत कहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ये भी हमें इनकी तैयारी करनी है। ये हमारे यहाँ पर यम और नियम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दूं कि सभी के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फल हैं, इनकी साधना अगर जो हम करते हैं तो क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब तीसरा जो साधन है कौन सा, आसन। आसन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, अर्थात निश्चल अर्थात हिलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही महर्षि पतंजलि द्वारा आसन कहा गया है। आप घेरण संहिता, हठप्रदीपिका या फिर अन्य ग्रंथों में शिव संहिता इत्यादि अगर जो आप अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आसनों के प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं। काफ़ी सारे प्रकार वहाँ पर बताए हैं कि इतने आसन या फिर इस प्रकार से करना है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार से कोई भी आसन की व्याख्या नहीं की है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सकें वही हमारा आसन कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। आप ध्यान रखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने आसनों की कोई भी व्याख्या नहीं कही है, आसनों के टाइप्स यहाँ पर नहीं बताए हैं। सिर्फ इन्होंने कहा है कि निश्चल अर्थात हिलन जलन से रहित सुखपूर्व बैठने का नाम ही आसन कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मैं लगभग आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी आपका यहाँ पर छूट नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसको और डीप अगर जो आप लोगों को पढ़ना है और डीप अगर जो आपको समझना है, अगर जो आप इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी आपको अष्टांग योग से संबंधित कोई भी प्रश्न करे तो आपका उसका ये आंसर न रहे कि मेरे को ध्यान में नहीं है, मुझे याद नहीं है। अगर जो आप इस प्रकार से समझना चाहें तो मैं आपको अन्य लेक्चर भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, अगर जो आप इतना भी अगर जो आप यहाँ पर समझते हैं तो आपको अष्टांग योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप आसन के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं। चौथा भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथा यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को यहाँ पर लिया है। जो सूत्र है उसको मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके बता देता हूँ। सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर जो आप तैयार कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रश्न जो सूत्र है फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। अब इसका तात्पर्य भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम कहा गया है। देखो, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की व्याख्या कब की है, जब आपका आसन सिद्ध हो जाए। अगर जो हमारा आसन सिद्ध हो जाता है तो इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने कहा है कि हमें प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। इसके बारे में कहा भी गया है उस आसन की सिद्धि होने के बाद कोई भी आसन, जब हमारा जो तीसरा जो हमने जो पढ़ा था, आसन जब हमारा सिद्ध हो जाए तो उसके पश्चात श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना। श्वास का तात्पर्य होता है जब हम श्वास अंदर लेते हैं और प्रश्वास अर्थात श्वास का निष्कासन करना। तो जब ये दोनों चीज़ें अगर जो रुक जाती हैं तो वह जो अवस्था कहलाती है वह प्राणायाम की अवस्था कहलाती है। अब प्राणायाम के टाइप्स भी यहाँ पर बताए गए हैं और उनके क्या लाभ हैं, प्राणायाम की साधना करने के पश्चात क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम अन्य लेक्चर में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर प्राणायाम को यहाँ पर समझना है। इसका सूत्र आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आसन की सिद्धि होने के पश्चात ही यहाँ पर प्राणायाम के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो साधन है वह है प्रत्याहार।
जो कि आपको दूसरे पाद में 54 नंबर का सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। सूत्र क्या है? स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः। अर्थात अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप तदाकार सा हो जाना ही प्रत्याहार है। देखो, अपने विषयों के संबंध से रहित जो हमारी जो इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग उनसे संबंध रखता है, उन पर होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप के साथ तदाकार हो जाना, जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो जब चित्त के स्वरूप के साथ, चित्त के साथ जब एक हो जाती हैं, तदाकार हो जाना ही वह क्या है? प्रत्याहार है। लेकिन किससे रहित यहाँ पर इन्होंने बताया है? यानी कि जब हमारी इंद्रियां विषयों से भिन्न, विषयों से रहित हो जाती हैं, हमारी जो इंद्रियां जो विषय अर्थात जो विषयों के साथ में जो संबंध है उससे रहित हो जाती हैं, और जो इंद्रियां है जो चित्त के साथ, चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाती है, एकाकार हो जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार की भी साधना अगर जो हम करते हैं तो उसके अन्य लाभ हैं जिनको कि हम अन्य लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही कहा है कि अगर जो हम प्रत्येक के बारे में अगर जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रत्याहार यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? प्रत्याहार आप जैसे कि कछुआ हम कहते हैं, कछुआ का रूप ही प्रत्याहार है। अर्थात अपनी इंद्रियों को जिस प्रकार से कछुआ समेट लेता है, तो उसी प्रकार से व्यक्ति को भी, उसी प्रकार से मनुष्य को भी इंद्रियों को अपने जो उसके जो विषय हैं उनसे समेटना चाहिए या समेट लेना चाहिए। तो वह जो क्रिया जो कहलाती है वह प्रत्याहार है। इसके पश्चात यहाँ पर है धारणा, जो कि आपको तीसरे पाद का प्रथम सूत्र पढ़ने को मिलता है। क्या है सूत्र? क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना ही धारणा कही जाती है। ये भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूजीसी नेट के काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बाहर या भीतर, तो बाहर अर्थात जैसे कि आप सूर्य, चंद्रमा, गंगा जी या फिर इत्यादि के ऊपर, या फिर जैसे कि गुरु मूर्ति या फिर किसी ईश्वर की, भगवान की मूर्ति, अगर जो आप उस पर अपने चित्त को ठहरा रहे हैं तो वह हो जाएगा बाहर। अब शरीर के भीतर का तात्पर्य क्या है? तो जैसे कि नाभि मंडल या फिर जैसे कि हृदय क्षेत्र में इत्यादि में अगर जो हम ध्यान को एकाग्र करते हैं, चित्त को ठहराते हैं, तो यह भीतरी शरीर का भीतरी देश कहलाता है। देश का तात्पर्य होता है क्षेत्र। तो बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना ही धारणा कही जाती है। अगर जो आप अपने चित्त को किसी गुरु मूर्ति या फिर किसी ईश्वर की, परमात्मा की मूर्ति या फिर बाहर अगर जो हम जैसे कहें सूर्य या फिर चंद्रमा पर अगर जो आप अपने चित्त को ठहराने की कोशिश करते हैं तो वह हमारी धारणा कहलाती है। देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ठहराना ही। धारणा क्या होती है कि धारणा में स्वयं नहीं ठहरता है, धारणा में हमें प्रयास करना पड़ता है, अपने चित्त को ठहराने का प्रयास करना पड़ता है। तो जहाँ पर हमें प्रयास करना पड़ता है वही हमारी धारणा स्थिति है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अगर जो हम शरीर के बाहर या भीतर अगर जो हम अपने किसी भी देश में अगर जो चित्त को ठहराने का प्रयास करते हैं तो वह धारणा कही जाती है। इसके पश्चात ध्यान को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यान आपको इसी के बाद का सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है। तीसरे पाद का दूसरा सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है, वह है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकाकार चलना ही ध्यान कहा जाता है। आपने धारणा में जहाँ पर अपने चित्त को लगाया, अगर जो आपने धारणा किसी गुरु मूर्ति पर की, लेकिन जब उसी गुरु मूर्ति पर जब हमारा चित्त एकाकार हो जाता है तो वही स्थिति हमारी ध्यान की कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान अर्थात जब हमारा जो प्रथम हमने जब देखा, धारणा जब हमारी स्थिर हो जाती है, जब धारणा हमारी जब एक तार हो जाती है, तो इसके पश्चात जो दूसरी जो स्टेज जो आती है वह ध्यान की आती है। तो आपको इस प्रकार से भी इसकी तैयारी करना है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से तैयार करने हैं। इसके पश्चात समाधि यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि हमें इसके पश्चात दूसरा जो सूत्र है तीसरे नंबर का, वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर है तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। अर्थात जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है,
और चित्त का निज स्वरूप का शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाता है। देखो, आप इसको समझने का प्रयास करें, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। धारणा में हमें क्या करना पड़ता है कि धारणा में हमें अपने चित्त को लगाना पड़ता है। अगर जो हम धारणा किसी, जैसे कि गुरु मूर्ति की अगर जो हम धारणा कर रहे हैं, लेकिन जब वही धारणा जब हमारा एकाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है, जब हम उसमें खो जाते हैं, तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान की। लेकिन जब वही ध्यान की स्थिति जब गंभीर हो जाती है, तो वह स्थिति कहलाती है समाधि। 3 चीजें होती हैं, ध्यान, ध्येता और ध्येय। फिर से मैं आपको यहां पर बता दूं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता का तात्पर्य क्या होता है? स्वयं अर्थात साधक, ध्यान अर्थात प्रोसेस, और तीसरी होती है ध्येय। तो जब हम धारणा करते हैं तो धारणा में तीनों चीजें होती हैं। साधक स्वयं भी होता है, जो प्रोसेस यानी कि जो ध्यान है वो भी चलती रहती है, और साथ ही साथ जो इसके पश्चात जो अन्य जो प्रोसेस आती है यानी कि जो ध्येय हमारा जो रहता है, ये तीनों की तीनों धारणा में रहते हैं। लेकिन जब यही धारणा जब हमारी स्थिर हो जाती है यानी कि ध्यान में बदल जाती है, तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो 2 चीजें वहां पर बची, कौन कौन सी? ध्यान और ध्येय। तो जब हमारी ध्यान और ध्येय बचता है तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान की। लेकिन याद रखें, जब ध्यान जो प्रोसेस है जब वो भी समाप्त हो जाती है, सिर्फ ध्येय मात्र बचता है, सिर्फ ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, तो वह जो स्थिति कहलाती है वह समाधि की स्थिति कहलाती है। आशा है आप इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर देता है, ध्यान जो प्रोसेस वो भी समाप्त हो जाती है, सिर्फ ध्येय मात्र जिस पर आप ध्यान को एकाग्र कर रहे थे, जब सिर्फ वही बचता है, तो वह हमारी समाधि की स्थिति कहलाती है। और याद रखना, अगर जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो समाधि का भी त्याग करना पड़ता है, अर्थात जो ध्येय है उसका भी हमें त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समाधि का तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। समाधि के टाइप्स भी यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, और समाधि के क्या फल हैं ये भी यहाँ पर बताए हैं, जो कि हम अन्य वीडियोज में जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लेक्चर में देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर है, जिसको कि आपको यहाँ पर चैनल पर इनके आंसर यहाँ पर आपको देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित योग के अंगों की संख्या है 4, 5, 7 या फिर 8? आपको इसका सही आंसर आपको देना है। सरल सा प्रश्न है, हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा भी कर चुके हैं और इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न फिर से यहाँ पर दोहरा देते हैं, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित योग के अंगों की संख्या है। तो आपको इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र में वर्णित बहिरंग साधनों की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बहिरंग और अंतरंग साधन दोनों मैंने आपको चैनल पर इसी वीडियो में फर्स्ट में बताया था, जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में अंतरंग साधनों की व्याख्या की गई है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद या फिर कैवल्य पाद? ध्यान देना है, आपको अंतरंग साधन यहाँ पर पूछा है। तो अंतरंग और बहिरंग साधन मैंने आपको बताए हैं, आप इसका सही आंसर आसानी से दे पाएंगे। मैं साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको चैनल पर मिल जाती है। काफ़ी सारे प्रश्नोत्तरी सीरीज मैं आपको यहाँ पर बुक्स के माध्यम से यहाँ पर दे चुका हूँ। 2 बुक हमने यहाँ पर पब्लिश की हैं। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। अगर जो आप इन ई बुक्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में बहिरंग साधनों की व्याख्या की गई है? पहले हमने अंतरंग साधनों के बारे में चर्चा की, अब यहाँ पर बहिरंग साधन यहाँ पर पूछे हैं। समाधि पाद या फिर साधन पाद या फिर विभूति पाद या फिर कैवल्य पाद? इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। जो भी आपका सही आंसर होगा वो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में रीड करने वाला हूँ। आशा है आज का जो लेक्चर है आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। मैंने काफ़ी प्रयास यहाँ पर किया है जो कि आपको जो पूरा जो लेक्चर है, जो अष्टांग योग जो पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। इसको हम और भी डीप यहाँ पर अगली वीडियोज़ में यहाँ पर समझने वाले हैं।
इससे संबंधित आपका अगर जो कोई भी प्रश्न होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रश्न करने से पूर्व आप लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। अगर जो आप लेक्चर को फिर से देख लेंगे तो आपका जो भी प्रश्न होगा वो उसमें उसका आंसर निहित होता ही है, आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जो आपका कोई भी डाउट यहाँ पर होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर अगर जो प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार अपने एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आशा है आज का जो लेक्चर था आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ भी चुके होंगे और अच्छे ढंग से हम इसको न्यू लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर मैं आपको चैनल पर यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन तब तक जब तक हम ये सब आपको देते हैं तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। Oh, I love you, my dear India. You are the sweetest land of all. I love you in the winter, summer, spring, and in the fall. I love your fertile valleys, your dear Ganges I adore. I love your Indian Ocean, and I love a ragged shore. Oh, I love you, my dear India. You are the sweetest land of all. I love you in the winter, summer, spring, and in the fall. I love your fertile valleys, your dear Ganges I adore. I love your Indian Ocean, and I love a ragged shore. Where the snow-crowned golden Himalayas keep the watch, where the sages bloom. It is there that I would be, in the land of the free. It is there that I would be, in the land of the free. Paramahansa Yogananda changed the world. One of the greatest saints of the 20th century, he brought the ancient science of well-being, mastery of the physical, mental, emotional, and spiritual dimensions of life to an awakening humanity. He honored the divine in every person and taught how to awaken to our true nature and full potential. His mission was founded in the science of religion, a profound awareness of the underlying beliefs and practices common to all authentic religious traditions. He encouraged everyone to develop the spiritual dimension of life,
to discover their personal relationship with God. Immersed in the inner bliss of soul awareness, he taught that heaven is not a place to go after physical death, but that heaven is within us, and how to experience it. He touched millions, improving their lives, showing them the way to be happy, fulfilled, and successful. How did Yogananda become such a powerful force for positive, world-transforming change? The strength of his personality and character, his enlightened consciousness, and his commitment to a lifetime of selfless service came through years of study, practice, devotion, the transformative touch of a master, and unwavering dedication to complete spiritual realization. He was steeped in the rich spiritual culture of India. He was profoundly influenced by great saints. Sri Ramakrishna, a highly realized spiritual powerhouse who was able to ignite flames of devotion in the hearts of all who came near. He taught that the one God could be experienced through all religions. Mahendranath Gupta, an illumined disciple of Sri Ramakrishna and great educator, recorded his master's words verbatim, making this great teaching available for seeking souls in his time and for generations to come far into the future. Swami Ramatirtha, enlightened teacher and spiritual dynamo who traveled to America, bringing profound insights from the ancient Vedas through his books and lectures. Baduri Mahashaya, a sage Yogananda referred to as the levitating saint in his autobiography. And the great masters of Kriya Yoga. From his youth, to know God was Yogananda's one absorbing thought. His mind and heart were ever fixed on being spiritually awake. He spent endless hours in meditation, prayer, devotional chanting, spiritual discourse, and study of the great world scriptures in order to awaken to the consciousness of one supreme reality. Paramahansa Yogananda was born Mukunda Lal Ghosh on January 5, 1893, into a world in transition. Barely a century before, the United States and France had won their independence. Now his motherland was struggling to be free as well. The agricultural and industrial revolutions were creating a new economic freedom for the masses and more time to pursue interests in art, music, and self-development. Electricity was just beginning to be deployed for lighting and to power motors that would accelerate progress into the modern era. The internal combustion engine was being applied to transportation with new horseless carriages and motorcycles, increasing the speed and the distance it was possible to travel. With newfound freedom and dramatic change, driven by science and technology, there was a growing need for spiritual balance. A renewed understanding of man's true nature was destined to come from the motherland of spirituality and religion, India. Here, every home has an altar. Millions of blossoms are sold every day for the sole purpose of worship.
Individuals begin their day offering the flowers of their devotion to God through prayer, ritual, and meditation. The magnificent Ganges River, winding its way for more than 1,500 miles, is revered as an expression of Divine Mother, source of life and nurturing support. Tens of thousands gather daily at sundown to chant and worship her with tiny rafts of candles and flowers. Temples, roadside shrines, holy statues, garlands of flowers, incense burning, everywhere. Dashboards are adorned with icons of saints or gods. People, places, cities, towns, all have spiritual names. Greeting is with folded hands and a bow of respect, or saying, Namaste, I bow to the divinity in you. Mukunda lived in Gorakhpur until he was 9 years old. His father, Bhagavati Charan Ghosh, served as deputy examiner in the office of the government examiner of railway accounts. He earned a very good salary, lived simply, was frugal, and thus was able to easily supply all of his family's needs with a substantial surplus. Mukunda referred to his mother, Gyanaprabha Ghosh, as Queen of Hearts, because she was a loving, compassionate parent, devoted wife, deeply spiritual, and generous with the poor. Mukunda found comfort and safety in his loving mother's presence. With one older brother and 2 older sisters, he was the 4th of 8 children. Both parents were disciples of a great saint living in Benares. The teachings of the quiet, unassuming Lahiri Mahashaya would eventually spread worldwide through the efforts of their son. Shyamacharan Lahiri Mahashaya unlocked the secrets of the soul. From a humble home in a remote corner of the oldest inhabited city on earth, his science of spiritual awakening breathed new life into man's quest to know God. Becoming a wind of change, it now carries millions of sincere seekers to realization of their divine nature. Yamacharan was born in 1828 to a prosperous family. His father, Gormahan, was a devout Hindu. He built a Shiva temple for worship and read from the Rig Veda every day. When Shyamacharan was 5, his mother had died and their home was lost in a flood. The family moved to Benares, where his 2 older stepbrothers and stepsister were already living. A bright student and voracious reader, Shyamacharan was intelligent, devotional, strong, and athletic. He enjoyed swimming some distance in the cold Ganges and then back against the current. Gentle and unpretentious, he excelled at literature, history, geography, and language, learning Bengali, Hindi, English, Urdu, some Farsi, and Sanskrit. A
call to spiritual awakening dawned within him at an early age. Every day after school, he would chant from scripture with his Vedic tutor, then visit Sri Kedarnath temple to honor Lord Shiva. He would follow with prayers and devotion on the ghats, the concrete steps along the sacred river. In 1846, at age 18, his marriage to Kashi Moni was arranged. After graduating, it was hard to find a job. In 1849, he went to work as a clerk for the British military, in the department responsible for procuring supplies and supervising road building. His father died in 1852, and by the following year, disagreement with his stepbrothers over property ownership led him to move from the family home and rent a house. Life was filled with many difficulties. He and his wife faced financial challenges. Always peace-loving and spiritually inclined, when his inheritance was taken by family members, he avoided conflict and let it go. Because wages from his position as a clerk were barely enough, he taught Hindi and Urdu to British co-workers for extra income. Through the years, when Kashi Moni would worry about finances, he would simply say, "Pray to Lord Vishwanath. Surely he who sustains the universe can maintain a small family." Shyamacharan believed that education should be available to all. Always industrious, he helped found a high school in the Bengali section of Benares and served for years as its founder secretary. He was also retained to serve as private tutor for a long period of time to the fourth prince of the royal family of Nepal. All this in addition to his job as a government clerk. Kashi Moni was a frugal wife, managing to save enough from her husband's meager salary to purchase a home in 1864 before the birth of their second son. Here, near the Bengali Tola, they raised 2 sons and 3 daughters. In November of 1868, Shyamacharan was transferred as head clerk to Raniket in the Kumon Hills, Almora district of Uttarakhand, where the British military planned to build a hill station. The first leg of his long journey to the lofty Himalayan foothills was by train to Delhi. The final 240 kilometers of his trip were traveled by Ekka, a small one-horse carriage. In Raniket, at 2,000 meters above sea level, with the magnificent Himalayan peaks as a backdrop, the spiritually charged, enchanting atmosphere called to some forgotten memory deep within his being. Here, his nights were spent out in the wild forest, sleeping in a tent alongside the workers he was assigned to. Shyamacharan had heard that a few renunciate yogis were residing in this remote district. On a day when his duties finished early, he set out on an uphill hike through dense forest to visit Dunagiri Temple, an ancient sacred shrine honoring Divine Mother. After an arduous climb through the crisp winter morning, he met a holy sadhu. Except for the young man's long hair, the resemblance was so strong he could well have passed for Shyamacharan's brother.
This was the great yogi, Babaji. Babaji planted a divine seed of awakening consciousness that is now blossoming in millions of hearts around the world. He was a master of 5,000-year-old spiritual practices perfected by renunciate sages. These sadhus, or wise holy men, left the comforts of society and the endless drama of desire, expectation, frustration, and suffering in order to discover the meaning of life. Remote and sacred spaces like Dunagiri were ideal environments to plumb the depths of mind and consciousness. Babaji did not stay in any one place for long and was known to travel with several of his disciples. He was friendly and joyful, strict yet deeply compassionate, and had a fine sense of humor. It is rumored that he was over 300 years old at that time, able to maintain a youthful body by periodically performing the rejuvenative yogic procedure of Kaya Kalpa. In the great yogi's cave, Shyamacharan was overcome with devotion to this enlightened master. In subsequent days, Babaji shared ancient Raja Yoga methods of meditation and purification for inner development. One evening, after purification rites, Babaji initiated Shyamacharan Lahiri, along with another aspirant, into the timeless tradition now referred to as Kriya Yoga. Initiation is a new beginning and a commitment to spiritual mastery. The guru or teacher shares energy and meditation techniques with the disciple. Shyamacharan was instructed to resume his life as a householder. Babaji taught him how to perform initiation so that he would eventually be able to transmit the practices he had learned and perpetuate the sacred tradition. In January, he was granted medical leave to return home. Back in Benares, resuming his duties as a clerk, Shyamacharan continued his studies of Hindu scripture and spent time every day in deep meditation. He experimented with the actions or kriyas learned for the purpose of purifying and calming the mind. He worshipped Atman, or innate soul, turning his awareness to the indwelling, enlivening expression of God. He adapted the intricate Raja Yoga routines of reclusive renunciates into a program that could be used by householders for spiritual awakening, and kept detailed journals of his personal practice and progress. Even though he was a quiet, humble yogi, word spread of his teaching and advanced enlightenment. He spent evenings in the parlor of his home, freely sharing his wisdom and meditating with students. They referred to him respectfully as Yogi Raj, Kashi Baba, or Lahiri Baba. After bathing in the Ganges for purification, new aspirants would receive initiation.
He asked them not to tell others that he was their guru, not to talk about what they had learned, rather to only focus on their practice. Lahiri Baba said the spiritual practices he was teaching were Atma Kriya, actions performed to be soul cognizant. He shared methods for inner worship of prana, life energy moving in the spine and upper brain in order to attain absolute tranquility of body and mind, resulting in the transcendental experience of one's true self. He taught the kriyas or techniques that were best suited to each individual's temperament, capacity, and progress. He commented on many classic Hindu scriptures, but his favorite was the Bhagavad Gita. Becoming increasingly popular after retirement, he made his innovative, non-sectarian approach to spirituality and individualized Kriya practice available to all, regardless of caste or religion. The lives of Muslims, Christians, Hindus, Jains, Jews, and Parsis were all blessed and enriched from contact with this great sage and his insightful teaching. In his humble, unpretentious way, Lahiri Mahashaya initiated more than 5,000 individuals in his lifetime and continues to be acknowledged as a great saint. Mukunda's parents' guru, Lahiri Mahashaya, blessed him as a baby, predicting he would become a spiritual engine, leading many souls to God. This benediction was only the beginning of the Yogi Raja's lifelong guiding influence on Yogananda. At the age of 11, Mukunda's father was transferred to Bareilly. While settling in their new residence, Mother was in Calcutta, making arrangements for the wedding of older brother Ananta, renting a spacious house at 50 Amherst Street. The day his father was to begin his new job, Mother died. She had been tending a boy with cholera, contracted the disease herself, and passed quickly. This was a hard blow for the devoted young Mukunda. His natural love for Divine Mother developed into an obsessive ardor as he sought a replacement for his lost parent. By 1906, the family had relocated to Calcutta. Bhagavati Ghosh nurtured his sons' spiritual education, requiring them to memorize all the verses of Swami Shankara's treatise on the world's delusions, and he initiated Mukunda into the meditation techniques of light and sound. Mukunda started exploring the realms of mind and consciousness at an early age. Through regular meditation practice, he discovered the extraordinary potential of mind, demonstrating knowledge of distant events, predicting the future, and manifesting the power of the spoken word. He played with hypnotism, using his little brother Sananda for demonstrations. Worshipping the goddess Kali Ma and experimenting with Tantra practice, he left no stone unturned in his dedication to spiritual awakening. A natural leader, his enchanting and magnetic personality, deeply devotional nature, and commitment to spiritual mastery attracted many into his orbit. These he inspired and motivated, serving as role model and guide.
Mukunda was very athletic. He ran like the wind and wrestled like a dervish. At 13, he was the captain of the neighborhood soccer team that played in nearby Greer Park. One day, a flat soccer ball led him up the street to the deaf and dumb school in search of an air pump. Here, he met the son of the school's director, 10-year-old Manumohan Mazumdar, who was destined to become one of his closest friends and lifelong spiritual brother, Swami Satyananda. Soon after their meeting, Mukunda introduced the younger Manumohan to spiritual practice. The two inseparable friends spent hours meditating in an attic room at Mukunda's house. The urge to deeper spiritual realization had become a burning passion within the young Mukunda. He dreamt of leaving home and joining the reclusive sadhus living in the Himalayan wilderness. Several times he tried running away to follow his dream, but his plans were always thwarted. In 1907, one of the major formative influences in Yogananda's early years came into his life. Ashutosh Chattopadhyay, known as Shastri Mahashaya, was a remarkable being and revered scholar. He held the most prestigious degrees and titles in Sanskrit and Eastern studies. With affection and high regard, his guru, Lahiri Baba, would address him as scholarly sir or rishi, meaning great sage. Throughout his life, he faced many domestic difficulties, yet he lived as a master, egoless, non-attached, simple, without concern for money. Those who were privileged to be in his sacred company were inspired. His grounded, quiet character awakened reverence and belief, encouraging them to seek the higher goal of spiritual realization. Shastri Mahashaya was so humble that when hired to tutor Mukunda in Sanskrit, the family was not aware of how highly he was respected as a scholar. Mukunda was enraptured by this great yogi, who formally initiated him in Kriya Yoga and served as his first guru. Under Shastri Mahashaya's guidance, Mukunda's fervor for Kriya Yoga practice intensified and blossomed, resulting in rapid spiritual progress. He was so enthusiastic that he brought many of his friends to be initiated by his enlightened guru. His mother's photo of Lahiri Mahashaya became a prized possession, object of his devotion and meditations. The next year, at the age of 15, Mukunda rented a small adobe hut next to a canal about a kilometer from his home for 1 rupee per month. He and Manumohan transformed this into their first spiritual center, Sadhana Mandir. Mukunda whitewashed the building inside and out to make it bright and suitable for devotion and worship. Desire to make a beautiful place and attention to all of the most minute details set the tone for his future endeavors. He created an altar with religious items, pictures of saints, gods, and goddesses. The boys would sneak out in the evening and come here to chant, pray, meditate, and study the Bhagavad Gita. In time, other schoolboys and some local folks joined their regular devotional sessions. The next year, his friend Tulsi Bose, who lived around the corner from the Ghosh residence, offered rooms for use as a new meeting place. Mukunda's obsession with his spiritual quest led him to seek out saints and enlightened persons
to study their teachings and imitate their practice. He felt a profound reverence and attraction for Sri Ramakrishna Paramahansa, the illumined mystic sage who had been the priest at Dakshineswar Kali Temple on the outskirts of Calcutta. He made regular visits to this holy ground, often bringing his younger brother Sananda, along with Mano Mahan and other friends, sitting for hours in meditation in the grove of trees where the great saint attained his enlightenment. Mukunda also visited Baluramat, final resting place of Sri Ramakrishna and his chief disciple, Swami Vivekananda. He was there so often that the head monk referred to him as our boy. Whenever possible, he sought out the company of other eminent disciples, such as Swami Turiyananda. When Sarada Devi, Ramakrishna's wife, visited Yogadhyan in Calcutta, Mukunda rushed to be the first to touch her feet in reverence. He often read to his friends from a book of the great saint's teachings that he carried in his pocket. After graduating from high school in 1909, Mukunda enrolled in Metropolitan College, purchased textbooks, and half-heartedly began attending classes. He met a young Swami, Dayananda, in temporary residence near his home. 16-year-old Mukunda was attracted by the intelligence and dispassion of this model of renunciate life. The two quickly became friends. Within a month, the impulsive Mukunda convinced his father to let him go to Benares to live in the Bharat Dharma Mahamandal ashram where Swami Dayananda was the head monk. His father reluctantly agreed, but the family was quite upset that the boy was not going to continue his studies. Uncle Sarada Ghosh in Serampore informed Mukunda's father that Swami Sri Yukteswar, a grounded, rational brother-disciple, was visiting Benares. He sent a letter asking the Swami to speak with the boy. He also wrote Mukunda, asking him to meet with this holy man. Swami Sri Yukteswar, incarnation of wisdom, was an enlightened visionary, a tireless teacher who aspired to unify spirituality. Through organized groups around Northeast India, he disseminated and popularized Kriya Yoga practice, along with the study of the Bhagavad Gita. He was able to transform the impulsive Mukunda into a focused dynamo, Swami Yogananda. In 1855, Priyanath Karar, who would later become Swami Sri Yukteswar, was born in the town of Serampore. His parents were affluent, with several rental properties and a family business. An only child, Priyanath was bright, intelligent, athletic, and inquisitive, with a compulsive urge to learn. He was driven to discover the truth about the world around him and the deeper world within. With a special love of math and science, he was known amongst his friends and elders in the community as having a quick, insightful mind. While Priyanath was still a young boy, his father passed away, leaving his mother to run the family business. Attending Serampore Christian College, he studied the Bible and developed a profound understanding and deep respect for the philosophy and teachings of Christianity.
His thirst for knowledge of the inner working of the human body went unquenched, as his probing questions could not be answered. In frustration, his science professor suggested that he attend medical school. Priyanath convinced the head of the medical college in Calcutta to allow him to attend classes. He studied physics, chemistry, biology, anatomy, and physiology for almost 2 years. He married, was briefly involved with his family's business, then worked as a clerk. None of these positions suited him. After his mother's passing, he sold his estates to the tenants and invested the proceeds in government bonds. This provided him with a lifelong income. Love of music led him to learn a few compositions on the sitar. His performance was so enchanting that his teacher often asked that he play for others. Priyanath felt that music should be a part of everyone's education. As a young man in his 20s, Priyanath was driven by a thirst to discover the essence of life and his own spiritual nature. Whenever he heard of saints or holy men, he sought them out, observed and studied them, and learned from them practices he could implement. He met several authentic holy men. Befriending and learning from these spiritual masters enabled him to greatly deepen the knowledge and the experience of his own self. One mentor who Priyanath visited regularly in Benares was the highly revered saint Trialinga Swami. Observant and discerning, he also debunked several so-called miracle workers, seeing the trick behind their extraordinary claims. His wife and daughter both died young. His granddaughter, being raised by her father's family, left him free to continue his spiritual quest in earnest. Known for his quick wit, delightful sense of humor, and love of the arts, Priyanath could converse intelligently on almost any topic. In the upper-class society of Serampore, he was a welcome guest, advising lawyers, doctors, and public officials. At a social function, he overheard friends talking of their saintly guru. When he pressed them to find out more, they refused, explaining that they had been told not to reveal their teacher or his teachings. His only clue was that the saint lived in Benares. After searching for some time, he finally located the secret yogi, Lahiri Mahashaya, and was initiated into the practice of Kriya Yoga at the age of 28. When his mother wished to move to holy Benares, he rented rooms in Rana Mahal, adjacent to Chausadi Ghat, where his guru would come to bathe and walk along the Ganges. He visited Lahiri Baba often. They would sit and talk about many topics long after all other disciples had departed. He realized afterwards that, through these informal talks, his guru had been subtly instructing him. Priyanath maintained his relationship with Trialinga Swami and continued to seek out saints and advanced yogis, discussing their approaches to experiencing the divine. He studied Ayurveda, the science of life and wellness, and became a master of Vedic astrology. He established a group to study and discuss the Bhagavad Gita based on Lahiri Baba's interpretations. He wrote a few books, including commentaries on the first 9 chapters of the Gita, sharing his own insights resulting from group discussions and the latest scientific theories from the East and West, all validated by his enlightened guru.
Priyanath had been thinking about the spiritual potential of Westerners. He saw many similarities between the Christian Bible and Hindu philosophy. At the 1894 religious festival, the Kumbh Mela in Allahabad, he met a yogi of unusual radiance. During their conversation, he shared his views with the saint, who agreed, suggesting that he write a book on the matter. Later, when recounting the episode to Lahiri Baba, he discovered that the saint he met was the illustrious master Babaji. The next year, the book, The Holy Science, was completed, and Babaji visited him in Serampore. Lahiri Mahashaya passed in 1895 during the Durga Puja festival. Priyanath was present at his beloved Guru's home every year on that day to honor him and to commemorate his transition. With the help of his disciple Motilal Thakur, he turned his family home in Serampore into a hermitage called Priyadam. Here, Motilal helped transform the Gita Sabha gatherings into Satsanga Sabha, Society for God Realization. A printing press was installed to print booklets and a quarterly newsletter. They conducted seminars to introduce the general public to esoteric meanings of scripture, spiritual practice, and created formal groups for ongoing study across northern India. Priyanath Karar's main focus always remained grounded in the Kriya Yoga practices he learned from his revered master. He taught that all other works are secondary to realizing the ultimate self through austerity, self-study, and self-surrender to the Lord. In 1904, his profound belief in the importance of education led him to found Karar Ashram for boys on the East Coast in Puri. He instructed his students that Karar meant servant, and he would advise that each individual be a helper or servant to each other. Later, he would encourage his disciples to incorporate his innovative ideas about teaching in the schools and centers that they would go on to create. By 1906, Priyanath was already living like a monastic, completely focused on his spiritual path and teaching ministry through Satsanga Sabha. He decided to take monastic vows and become a Swami so he could teach and interact with members of all castes and religions. A Swami is free to come and go without constraints. Instead of Mrs. or Mr., Priyanath would address every member of his spiritual fellowship with the title Shri Yukta, Radiant One, before their name, to remind them that they are expressions of God. He was given the name Shri Yukteswar from Shri Yukta combined with Ishvara, God. In Benares, with the help of his brother disciple, Swami Pranabhananda, a third ashram, which he called Pranabashram, was created in his rented rooms. Here, they would conduct classes and seminars on Vedic astrology and continue the work of Satsanga Sabha. In a lifetime of selfless service dedicated to his beloved Guru and the ideal of God realization, he was responsible for spreading the teaching of Lahiri Mahashaya across northern India, paving the way for its broader dissemination around the world. In the summer of 1910, Swami Sri Yukteswar Giri,
was in Benares when he received a letter from Sarada Ghosh requesting he convince nephew Mukunda to return home and attend college. The Swami sent someone to the Bharat Dharma Mahamandal ashram to check up on the boy and ask for a meeting. Sri Yukteswar was coming from his rooms in Rana Mahal into the Bengali Tola market through this lane when he saw Mukunda, who was immediately attracted to the charismatic Swami. After a brief exchange, Sri Yukteswar invited the lad to his rooms. There, in Rana Mahal, overlooking the sacred Ganges, spellbound by the sage's spiritual power and straightforward teaching, Mukunda asked to be accepted as his disciple. Sri Yukteswar agreed, then suggested that the boy return home and attend college to earn his degree. By September, following his guru's wishes, Mukunda enrolled in the Scottish Church College of Calcutta. In school, he met Basu Kumar Bagchi, who became the third member of an inseparable band of spiritual friends. Mukunda was a student in name only. Rarely attending classes, he devoted most of his time to spiritual practice and visits to his guru and other sages. In August 1911, on the occasion of Lord Krishna's birthday, Mukunda conducted special rites for he and his dear friends, Basu Kumar, Shishir Kumar, and Manomohan Mazumdar. They committed themselves to the ideals of monastic renunciation, resolving to become swamis after graduation. They promised to always deeply think of each other on this special day, wherever they would be in the future. During 2 years in Calcutta College, the trio of aspiring yogis, Mukunda, Manomohan, and Basu, continued to use the rooms at Tulsi Bose's house. Here they practiced meditation, studied the Bhagavad Gita, and joined together in devotional chanting with God-intoxicated fervor. Others from the community would also attend the Friday evening Satsanga Sabha meetings. A devoted student of Swami Sri Yukteswar, Mukunda found spiritual inspiration and guidance from many sources. He and his friends continued visiting the Kali Temple and Balur Mat for meditation and to be in the company of Ramakrishna's disciples. The sage Nagendranath Baduri, referred to as the levitating saint, was a poised and grounded yogi with an intense love of learning. He lived near the Ghosh residence in a 3-story house. This great spiritual teacher was a font of wisdom and source of motivation on the boy's path of soul awakening. Holding weekly spiritual discourses explaining yoga philosophy, he emphasized Bhakti Yoga, the path of devotion, as the easiest and surest way to realize God. Kind and compassionate, he advocated proper education of youth and a harmonious synthesis of religions. Another educator who lived nearby had a profound effect on young Mukunda. Master Mahashaya, the faithful disciple who wrote the Gospel of Ramakrishna, was now running a school at 50 Amherst Street. Humble, gentle, wise, and nurturing by nature, his innovative teaching style earned him great respect in the educational community. Mukunda loved to be in the Master's uplifting, inspiring presence. Almost every day he would visit to meditate and hear stories about Sri Ramakrishna. Master Mahashaya's ever blissful state of fervor for Divine Mother intoxicated the boy, fanning flames of devotion in his receptive heart.
Mukunda had a great reverence for the high realization of Swami Ramatirtha and his successful teaching mission abroad in America and Japan. In his pocket he carried a booklet of the Swami's sayings and blissfully read from it to his friends. He adapted some of Swami Ramatirtha's poetry into songs using traditional Bengali melodies. Later, in America, he composed many chants and poems highly inspired by the Swami's writings. After Mukunda graduated with a 2-year degree, Sri Yukteswar encouraged him to enter Serampore Christian College to obtain his B.A. In Serampore, he first lived with Uncle Sarada, who had arranged for him to meet Sri Yukteswar 3 years earlier. After a few months, he moved to Panti boarding house near Raigat. Sri Yukteswar's ashram was close, several blocks away. The Karar family estate included a large garden, courtyard, and hall for worship. The mansion was decorated with remnants of his family's past as wealthy landlords. Shields and swords adorned the walls, and fine furniture populated the rooms. Here, Mukunda spent many hours learning at his beloved Guru's feet. Through duties, spiritual discussion, disciplined practice, and the harsh criticism of Master Sri Yukteswar, he was transformed. Sri Yukteswar was outgoing, gregarious, and could easily, intelligently converse with anyone about anything, spending hours in conversation with visitors. Yet he expected disciples to see to their practice and remain introspective, not to waste time talking. Later, as Swami Yogananda, Mukunda would comment that Swami Sri Yukteswar would have had many more disciples if he had not been so strict and critical. When asked what his guru had done for him, Yogananda replied, "He made me what I am. I needed his discipline to balance my devotional temperament." In 1915, after graduating from college with a B.A. degree, in a ceremony presided over by his guru, Mukunda took his final monastic vows, becoming Swami Yogananda Giri. The meeting place at Tulsi Bose's house was refurbished and landscaped. Rooms were prepared for a meeting hall and kitchen. This center was the seed that would blossom into the worldwide teaching mission of Yogananda. Swami Sri Yukteswar joined them once a week for community satsang, teaching and interaction, along with meditation. In the summer of 1916, Swami Yogananda told his dear friend Manu Mahan that he was feeling restless and wanted to go abroad. Two of his spiritual heroes, Swami Vivekananda and Swami Ramatirtha, were both very popular when they visited America to teach, and were greatly admired by young Indians. At this time, it was very difficult for natives of India to obtain a visa to visit America. Swami Yogananda learned of a program being set up for the education of Indian students in Japan. Thinking it might be possible to obtain a visa to America from Japan, with the help of a friend he applied and was accepted. After only 1 week in Japan, he learned that he could not obtain the coveted visa for travel to the United States, and returned home. During his return trip on a steamship, he met an American couple. After several conversations, they encouraged him to come to America to lecture and teach. Feeling this as an invitation to his destiny, he quickly wrote an outline for the spiritual talk he envisioned giving in America, Dharma Vijnana, which became his first book, The Science of Religion.
Back at home, Swami Sri Yukteswar asked him to become more involved in organizational affairs and encouraged him to start delivering speeches on spiritual subjects at special events. He was preparing him for the future. Assuming new responsibilities, Yogananda began coordinating the activities of his guru's ministry, while starting a simple school with a few boys in the spiritual center at Tulsi Bose's house. His guru and mentors Master Mahashaya and Nagendranath Baduri shared their ideas for educational reform with the young yogi and encouraged him to create a larger, more formal school. He asked his friend Basu to draft a proposal requesting support for this new expanded school from Sir Mahendra Chandra Nandi, the Maharaja of Kazan Bazar. Sir Nandi had been knighted by the British Crown in 1915 for his lifelong support of general education, providing funding for many universities and schools for all age levels. Swami Yogananda's innovative approach to education, incorporating a balance of physical, intellectual, moral, and spiritual development, impressed the Maharaja, who offered his house and property in Dihika on the banks of the Damodar River for use as an ashram and school. This was the beginning of a long relationship, with Sir Nandi financially supporting Yogananda's institutions, making it possible for the work to grow and prosper. 1917 saw the dawn of this educational experiment with 6 students in an enchanting pastoral land amidst the beauty of nature. The school's program included devotional chanting, singing, recitation of sacred verses, study, house cleaning, sports, hatha yoga, gardening, meditation, and spiritual talk. Swami Sri Yukteswar visited, offered suggestions for methods of teaching, and gave his blessing. Yogananda served as teacher and director. Basu Kumar, now Swami Dhirananda, was administrator, and Shastri Mahashaya joined the staff as teacher and headmaster. Manu Mahan remained in Calcutta to manage the ashram there and would visit the new school to assist from time to time. Another successful pioneering educator, Rabindranath Tagore, heard of Yogananda's school and sent representatives to Dihika. Impressed by their glowing report, Tagore invited Yogananda to visit. During their meeting, he shared much useful advice and encouragement. It was at his school, Shantiniketan, that the inspiration came to conduct classes outdoors beneath the trees. Yogananda's ashram school was remarkably successful and grew quickly. He also took personal responsibility to teach impoverished local children in a thatched roof hut nearby. Within a year, in 1918, the school had grown to the point where it needed to expand. Once again, the Maharaja of Kazan Bazar came to Yogananda's aid, offering his estate in Ranchi with more room for growth and a larger population to serve. Here, the vision really blossomed. Highly regarded for its effective teaching in both academic and spiritual areas, the school grew rapidly. Students were learning outdoors in a natural setting with a balance of fresh air, exercise, study, and meditation. Manu Mahan had become Swami Satyananda. He and Dhirananda were Yogananda's left hand and right hand, teaching and assisting with the myriad details of running the school, helping to make possible its success.
From the beginning, the school relied upon the vision and tireless energy of Swami Yogananda. He served as fundraiser, administrator, teacher, and principal, surrounding himself with young, inspired, enthusiastic teachers. He was, by turns, disciplinarian, peacemaker, and inspiration. He helped create the curriculum, led outings, conducted chanting and Sankirtan programs every Saturday evening. He was constantly planning for future expansion of services and activities. In the evenings, he would engage in discussions with his dear friend, Satyananda. He loved cooking, often innovating new recipes. He was ever attentive to the comfort of the guests who visited the ashram school. He directed and worked with the students in creating the gardens and caring for the animals which he loved to have roaming the grounds. When the Venerable Swami Pranabhananda visited the school, he commented that his guru, Lahiri Mahashaya, would have been very pleased seeing his views on education being carried out so well. After reading a book by the bodybuilding pioneer Eugene Sandow, Swami Yogananda created a program of energization exercises to enhance health and vitality, combining visualization, muscle tension, and breathing. As a schoolboy, his younger brother Vishnu learned these innovative exercises and built upon them to become world famous for his expertise in physical culture and Hatha Yoga. One morning, in the summer of 1920, at the age of 27, Swami Yogananda had a vivid dream of being in America. Feeling the time had come to share his love for God with the world, he returned to Calcutta, where he made arrangements for the long journey. Never doubting, he went forth, knowing all grace was supporting him in following his intuition and long-time desire to go. Support came in many forms. He was invited by a friend of Satyananda's to represent India at the International Congress of Religious Liberals in Boston. This allowed him to obtain an otherwise impossible visa. His father agreed to provide financing for the trip and ongoing expenses while abroad. He left Swami Dhirananda in charge of the Ranchi school and sent his other spiritual brother, Swami Satyananda, to oversee the Karar ashram in Puri. All was in place for operations to continue uninterrupted in his absence. In the fall of 1920, he boarded the city of Sparta, bound for Boston. It was the first passenger ship to depart from India to America since World War I. His revered guru, Swami Sri Yukteswar, visited in his stateroom before departure, gave some parting advice, suggested that he teach from the holy science, and reassured him that he would be well received and ever guided from within. Yogananda followed his heart, crossing the ocean to share his awakened consciousness with the Western world. Mukunda Lal Ghosh was transformed from a dedicated lover of God to his faithful, tireless servant. As the selfless Swami Yogananda, he became a spiritual dynamo, inspiring, motivating, encouraging, leading, and guiding so many onto a path to know God. He had a remarkable impact on all those who knew him. Before leaving India, he had organized the teaching centers and publications of his guru, Swami Sri Yukteswar.
He would go on to transform the Satsanga Sabha into a new global outreach as Yogoda Satsanga. He founded an alternative school with innovative educational and spiritual practices, offering them for free to the lower classes that would not otherwise have been able to attend school. All this prepared him for the work he would accomplish during his next 31 years in America. He was a visionary, ever grounded in the practical development and plans for future growth of his ministry, remaining firmly established in the awareness of God's will moving through him, awake to his own innate divine nature. He said, "I sow the seeds of my desires into the ethers, and they must come into manifestation." And they have. While alive, he touched hundreds of thousands. In his lectures, eloquent words awakened responsive hearts. His classes motivated students to live a nobler life. His poems and chants fueled devotional ardor. His books, magazines, and monthly lessons carried his enthusiasm and love of God into homes around the world. He worked intimately with sincere individuals and close disciples, assisting their spiritual evolution, ordaining some to teach, initiate, and continue the Kriya Yoga tradition in India and America. Since his passing on March 7, 1952, his work continues to blossom, influencing and touching lives everywhere. Paramahansa Yogananda is responsible for introducing the health and spiritual benefits of yoga to the West. The popularity of Hatha Yoga for physical well-being, through his promotion, paved the way for the steady stream of yoga teachers who would emerge in the 50s, 60s, and 70s. His tireless teaching of the usefulness of meditation to know and experience God and to improve the quality of life set the stage for all those who have followed. The widespread practice and growing acceptance of this life-enhancing process has helped transform millions of lives. The work, as he called it, continues to bear fruit, expanding from personal growth to applications in the fields of corporate efficiency, neuroscience, and healthcare. His seminal Autobiography of a Yogi has been a bestseller in its category since publication in 1946. Yogananda said, "This book will be my messenger when I am gone." Selling millions of copies, it has been translated into more than 45 languages, touching and changing lives for more than 60 years. His work improved our culture, influencing politics, movies, music, science, education, and physical well-being. His books and lessons for spiritual growth and awakening continue to be distributed to a worldwide audience hungry to find meaning in life. The organization founded to carry his teachings into the future, Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga Society, has more than 500 centers in 157 countries. His mother India has 50 YSS centers and ashrams, some supporting large schools, giving free medical care, providing much-needed services in impoverished areas. In his adopted homeland, America, Self-Realization Fellowship carries on his mission with 100 centers, ongoing classes, study lessons, an annual convocation, and dissemination of new books and lectures by SRF monks and nuns.
Every center worldwide is an oasis of peace, adorned with resplendent gardens and permeated with the loving consciousness of a true man of God. Dahika. Dakshinesvar. Dwarahat in the Himalayas. Ranchi. San Diego Temple. Hollywood Temple. Encinitas Hermitage and Retreat. Lake Shrine in Pacific Palisades. And the SRF headquarters atop Mount Washington in Los Angeles. Each temple and ashram reflects Yogananda's exquisite sensitivity to beauty, attention to detail, and intention to create an environment that would automatically make one feel closer to God. A few of Yogananda's ordained personal disciples created outreach and organizations that continue to share the great master's teachings. Yogacharya Oliver Black founded the SRF Center in Detroit and a yoga retreat, Song of the Morning Ranch, in Michigan. Swami Kriyananda founded Ananda, with world headquarters in California. Roy Eugene Davis founded Center for Spiritual Awareness, with world headquarters in Georgia. Paramahansa Yogananda's legacy is the fruit of his vision and inspired innovation in the teaching of Kriya Yoga. Lahiri Mahashaya innovated by taking the timeless practices of renunciate sages and adapting them for modern householders. Swami Sri Yukteswar innovated by popularizing his guru's teachings. He created a network of study groups and ashrams, maintaining a presence from Benares to Puri with regular visits and through the publication of magazines and booklets. Continuing the tradition, Yogananda adapted the essence of practices which had evolved in the spiritually grounded culture of his homeland to the more pragmatic, scientific, and Christian West. Thus, combining the best of his beloved India with the best of his beloved America, he conveyed the world-unifying message so dear to his master. Much more than an ambassador of India's rich spiritual heritage, Paramahansa Yogananda was an emissary of the divine to mankind. He worked to accomplish a higher vision where, through universal brotherhood resulting from the recognition of the divine in everyone, world peace can prevail. We pray that on the greater altar of our united hearts, may God's love, wisdom and bliss reign forever and forever. Thy joy and I are one. Thy
With the love of God I will think, with the thoughts of all, the hearts of all will be my heart, the souls of all will be my soul, and the smiles of all my smile. I will love, with the love of God I will think, with the thoughts of all, the hearts of all will be my heart, the souls of all will be my soul, and the smiles of all my smile. Thy peace and Thy are one, Thy joy and Thy are one, Thy wisdom and Thy are one, Thy love and Thy are one. Thy peace and Thy are one, Thy joy and Thy are one, Thy wisdom and Thy are one, Thy love and Thy are one. I will flow to the shore of bliss, I will sing through the voice of all, and I will preach in all temples, and I will pray in all prayers, and I smile through all Thy smiles. Keep your eyes closed. One Om and the opening mantra together. Inhale completely. वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्म सुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहल मोहशान्त्यै आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम् नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि. Release your arms. Open your eyes. Surya Namaskara A. Ekam inhale. Arms up. Look up. Dve exhale. Palms down. Trine inhale. Half lift. Chatvari exhale. Chaturanga. Pancha inhale. Shat exhale. Adjust your feet. The legs are apart, hips width. Bringing the heels down. Inhale, come up on the toes, bend at the knees and jump front. Ashtau exhale, head down. Nava inhale, arms up, look up. Exhale, samasthiti. Ekam inhale, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, half lift. Chatvari exhale, chaturanga. Pancha inhale, shat exhale. 1, 2, 3, 4, 5, Sapta inhale, jump front. Ashtau exhale, head down. Nava inhale, arms up. Exhale, samasthiti. Third round. Ekam inhale, arms up. Dve exhale, lengthen the spine. Trini inhale, chatvari exhale, chaturanga. Pancha inhale, shat exhale. Fingers are well spread, pressing the complete palms down on the mat. Draw the shoulder blades wide and back. Come up on the toes, bend at the knees and Sapta inhale, jump front. Ashtau exhale, head down. Nava inhale, arms up. Exhale, samasthiti. Ekam inhale, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, chatvari exhale, chaturanga. Pancha inhale, shat exhale. Buttocks up, head down. 1, 2, 3, 4, 5, Sapta inhale, jump front. Ashtau exhale, head down. Nava inhale, arms up. Exhale, samasthiti. Ekam inhale, urdhva tadasana. Dve exhale, uttana, straight legs. Trini inhale, urdhva. Chatvari exhale, chaturanga. Pancha inhale, shat exhale.
lengthening the spine, shifting the weight towards the feet, taking the tailbone up to the ceiling. Come up on the toes, bend at the knees, sapta inhale and jump front. Ashtau exhale, uttan. Nava inhale, urdhva tadasana. Exhale, samasthiti. Surya namaskara B. Ekam inhale, bend your knees, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, half lift. Chatvari exhale, chaturang. Pancha inhale. Shat exhale. Sapta inhale, right leg front, arms up. Ashtau exhale, chaturang. Nava inhale. Dasha exhale. Ekadasha inhale, left leg, arms up. Dvadasha exhale, chaturang. Trayodasha inhale, Chaturdasha exhale. Keep your belly completely sucked in, neck and the head completely relaxed, looking to the center between both the knees. Come up on the toes, bend at the knees. Panchadasha inhale, jump. Shodasha exhale, head down. Saptadasha inhale, bend your knees, arms up. Exhale, samasthiti. Second round, ekam inhale, bend your knees, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, chatvari exhale, chaturang. Pancha inhale, shat exhale. Sapta inhale, right leg, arms up. Ashtau exhale, chaturang. Nava inhale, dasha exhale. Ekadasha inhale, left leg, arms up. Dvadasha exhale, chaturang. Trayodasha inhale, Chaturdasha exhale. One, two, three, 4, 5, Panchadasha inhale, jump. Shodasha exhale. Saptadasha inhale, bend your knees, arms up. Exhale, samasthiti. Third round, ekam inhale, bend your knees, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, chatvari exhale, chaturang. Pancha inhale, shat exhale. Sapta inhale, right leg, arms up. Ashtau exhale, chaturang. Nava inhale, dasha exhale. Ekadasha inhale, left leg, arms up. Dvadasha exhale, chaturang. Trayodasha inhale, Chaturdasha exhale. Keeping your tailbone up and away from the thighs. If possible, keeping the straight legs, preferably lifting the tailbone up
and backwards. Maintaining the same pace of the breath. Inhale, come up on the toes, bend at the knees and jump. Exhale, head down. Saptadasha, inhale, bend your knees, arms up. Exhale, Samasthiti. Fourth round. Ekam, inhale, bend your knees, arms up. Dve, exhale, palms down. Trini, inhale. Chatvari, exhale, chaturanga. Pancha, inhale. Shat, exhale. Sapta, inhale, right leg, arms up. Ashtau, exhale, chaturanga. Nava, inhale. Dasha, exhale. Ekadasha, inhale, left leg, arms up. Dvadasha, exhale, chaturanga. Trayodasha, inhale. Chaturdasha, exhale. One, two, three, four, five. Panchadasha, inhale, jump. Shodasha, exhale. Saptadasha, inhale, bend your knees, arms up. Exhale, Samasthiti. Last round. Ekam, inhale, Utkatasana. Dve, exhale, Uttan. Trini, inhale. Chatvari, exhale, Chaturanga. Pancha, inhale. Shat, exhale. Sapta, inhale, Virabhadrasana A. Ashtau, exhale, Chaturanga. Nava, inhale. Dasha, exhale. Ekadasha, inhale, left leg, arms up. Dvadasha, exhale, Chaturanga. Trayodasha, inhale, Urdhvamukha. Chaturdasha, exhale, Adhomukha. Two, three, walk a little front, four, five. Panchadasha, inhale, jump front. Shodasha, exhale, Uttana. Saptadasha, inhale, Utkatasana. Exhale, Samasthiti. Padangushthasana and Padahastasana. Apart the legs, hips width with a jump if needed. Reaching all the way forward. Grabbing both the big toes we are preparing. Ekam, inhale, look front. Dve, exhale, tip of the head down. Draw the shoulder blades back. Two, keep the belly completely sucked in, tailbone up to the ceiling. Four, five. Three, inhale, look front. Hold the pose, exhale. Padahastasana, place the palms under the feet. Prepare. Ekam, inhale. Dve, exhale. Tip of the head down. Nasagra drishti, looking to the nose tip. Two. Three. Four.
5, त्रीणि inhale, look front, hold the pose, exhale. Take the arms out, inhale, slowly come up, back to Tadasana, keeping both the feet together. Utthita Trikonasana, A and B. Ekam inhale, apart the legs, arms up, turn the right toes to the right side. Dve exhale, reach down to grab the right big toe, roll the eyeballs, Hastagra Drishti. 1. Keeping the same body weight on both the feet, keeping both the legs straight, the entire pelvis facing towards the wall. Exhale completely. Trini inhale, arms up, turn the toes. Chatvari exhale, left side, grab the left big toe. Hastagra Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha inhale, come up, turning towards the right side, square the hips for B. Dve exhale, left palm down on the outside of the right foot, use the block if needed. Hastagra Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Trini inhale, come up, turning towards the left side. Chatvari exhale, right palm on the outside of the left foot, both the legs straight. Hastagra Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha inhale, come up. Exhale, Samasthiti, coming to the front of the mat. Utthita Parshva Konasana. Ekam inhale, apart the legs, large stance. Turn to the right. Dve exhale, bend at the right knee, placing the right palm on the back side of the right foot, left arm up. Hastagra Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Trini inhale, come up, turn to the left. Chatvari exhale, bend at the left knee, place the left palm down, use the block if needed. 1, Hastagra Drishti. 2, 3, 4, 5. Pancha inhale, come up, turning towards the right side, adjust the position. Dve exhale, left arm on the outside of the right knee. You can take the complete pose or take the variation if needed. Completely hook the arm until the armpit. 1, 2, 3, 4, 5. Trini inhale, come up, turning towards the left side. Chatvari exhale, right arm on the outside of the left knee until the armpit.
You can tuck the back toes, lift the back knee, keep the back heel down if possible. 2, 3, 4, 5. Pancha, inhale, come up. Exhale, samasthiti, coming to the front. Prasarita padottanasana. Ekam, inhale, apart the legs, medium stance, hands on the waist, lifting the chest up. Dve, exhale, reaching all the way forward. Place the palms down, inhale, look front. Trini, exhale, tip of the head down, palms down on the mat. 1, roll the eyeballs, looking to the nose, tip. 2, 3, 4, 5, Chatvari, inhale, look front, hold the pose, exhale. Pancha, inhale, come all the way up, exhale. B, Ekam, inhale, arms up. Dve, exhale, hands on the waist. Inhale, lift the chest up. Trini, exhale, reaching down. 1, 2, 3, 4, 5, Chatvari, inhale, come all the way up, exhale. C, Ekam, inhale, arms up. Dve, exhale, interlace the fingers on the back. Inhale, lift the chest up. Trini, exhale, reaching down. Bring the interlaced fingers towards the floor, opening the chest. 2, looking to the nose, tip. 3, 4, 5, Chatvari, inhale, come up, exhale, release the hands on the waist. D, Ekam, inhale, lift the chest up. Dve, exhale, reach down to grab the big toes. Inhale, look front. Trini, exhale, tip of the head down. 1, bend elbows. 2, 3, long ujjayi. 4, 5, Chatvari, inhale, look front, hold the pose, exhale. Pancha, inhale, come all the way up, exhale, coming to the front of the mat. Parshvottanasana, place the palms on the back into Namaste. Apart the legs, Ekam, inhales, turning towards the right side, square the hips, lifting the chest up. Dve, exhale, bring the chin down. So go slowly, don't round the spine, lengthen it. 2, looking to the tip of the big toe, Padagra Drishti. 4, 5, Trini, inhale, come up, turning to the front of the shala. Chatvari, exhale, bring the chin down. Go halfway. If you are rounding the spine, square the hips. 1,
2. Keep your back foot really strong. Do not put all the weight only on the front leg. 4. 5. Pancha, inhale, come up. Exhale, coming to the front of the mat. Release the arms. Utthita hasta padangusthasana. If you need to use the belt, take the wall support if that is needed. Ready? Ekam, inhale, lift the leg up, grab the big toe. Dve, exhale, bring the chin down. 1, 2, 3, 4, 5. 3, inhale, lift the head. Chatvari, exhale, right leg to the right side. Parshva drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Pancha, inhale to the center. Shat, exhale, chin down. Sapta, inhale, lift the head, release the hands. 1, toes pointed. 2, 3, 4, 5. Release the leg down. The left side. Shift the body weight on the right foot. Ashtau, inhale, lift the left leg up, grab the left big toe. Nava, exhale, bring the chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, inhale, lift the head. Ekadasha, exhale, left leg to the left side. Parshva drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Dwadasha, inhale to the center. Trayodasha, exhale, chin down. Chaturdasha, inhale, lift the head, release the hands, leg lifted. 1, toes pointed. 2, 3, 4, 5. Release the leg down. Relax the legs. Ardha Baddha Padmottanasana. If you're finding it difficult today, you can also take Vrikshasana, the tree pose, as a variation. If you need to use the block, please keep it next to the left foot. Use the belt if needed. You can bring the right leg into the half lotus. If you're taking the complete practice, grabbing the right big toe from the back, take time. If you are a slight leaning front bent knee, you may be able to grab it. Don't rush. Reach down. Place the palm down. Ekam, inhale, look front. Dve, exhale, bring the chin down. Looking to the nose tip. 2, try to square the shoulders. 3, 4, 5. 3, inhale, look front. Exhale. Chatvari, inhale, come up. Pancha, exhale, release the leg down. Do not rush, go slow. Taking the left leg into the half lotus. Take time to open from the pelvis, reaching the big toe from the back. Then go all the way down. Not necessary to raise the arm. Bent knee, reach down. Place the palm down. Shat, inhale, look front. Sapta, exhale, take the pose, chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtau, inhale, look front. Hold the pose, exhale. Nava, inhale, come up. Exhale, release the leg down. Relax the legs. Coming to the front of the mat, keeping both the feet together, preparing for Utkatasana.
arms on both the sides. Ekam inhale, arms up. Dve exhale, palms down. Trini inhale, Chatvari exhale, Chaturang. Pancha inhale, Shat exhale, Utkatasana. Sapta inhale, jump front, bend knees, arms up in the same vinyasa. 1. Looking to the base of the palms, just lift it. 2. 3. 4. Preparing for the lift. 5. Place the palms down. Ashtau inhale, lift up. Nava exhale, Chaturang. Dasha inhale. Ekadasha exhale, Virabhadrasana A. Sapta inhale, right leg front. Bend at the right knee, arms up. Looking to the base of the palms, draw the shoulder blades down. 1. Square the hips. 2. 3. 4. 5. Inhale, straighten the legs, turning towards the left side. Ashtau, exhale, bend at the left knee. 1. The back foot really pressing the outer edge. 2. Tuck the tailbone in, lower rib cage in. 3. 4. 5. Never inhale, take the arms up, looking to the tip of the left middle finger, Virabhadrasana B. Tuck the tailbone in, B. 3. 4. 5. Inhale, straighten the legs, turning towards the right side. Dasha, exhale, bend at the right knee, looking to the tip of the right middle finger. 2. Right knee facing the front of the shala. 4. Preparing for the lift. 5. Ekadasha inhale, lift up. Dvadasha exhale. Trayodasha inhale. Chaturdasha exhale. Dandasana. Sapta inhale. Jump front. Take time before we get into Dandasana. Adjust yourself. Once you're ready, keeping the straight spine, sit on the block if needed. Keep the straight spine, draw the shoulder blades back, chin down, Nasagra Drishti. 1. Looking to the nose tip. 2. 3. 4. 5. Paschimottanasana A, reaching all the way forward. Grab the big toe. Inhale, look front, Ashtau. Nava, exhale, bring the chin down. Roll the eyeballs, looking to the center between both the big toes. 2. Tailbone out, lengthening the spine, reaching forward. 4. 5. Dasha, inhale, look front, hold the pose, exhale. Now holding the outer edge for B. Ashtau, inhale, look front, Nava, exhale, chin down. Padagra Drishti. 1. 2. Try to reach forward, don't think of reaching down. 4.
5. Dasha, inhale, look front. Exhale. Release the arms, cross the feet. Ekadasha, inhale, lift up. Dwadasha, exhale, chaturang. Trayodasha, inhale. Chaturdasha, exhale, Purvottanasana. Sapta, inhale, jump front. Stretch the legs front. In the same Sapta, exhale, place the palms on the back. Preparing for the lift, toes pointed. Ashtav, inhale, lift up. Hang the head back completely. 1, 2, 3, 4, 5. Now exhale, come down. Cross the feet. Dasha, inhale, will lift up. Ekadasha, exhale. Dwadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Ardha Baddha. Sapta, inhale, jump front. Padma Pada, Paschimottanasana. The right leg is into the half lotus. Want to grab the big toe from the back, use the belt if needed. Take the complete variation if needed. Reaching all the way forward, hold the outer edge. Ashtav, exhale, chin down. Padagra Drishti. 1. Try to square the shoulders. Bring your right shoulder forward. 3. 4. 5. Nava, inhale, look front, straight arm, exhale. Now release the arms, cross the feet. Dasha, inhale, will lift up. Ekadasha, exhale. Dwadasha, inhale. Trayodasha, exhale, left side. Chaturdasha, inhale, jump front. In the same vinyasa, we take the left leg into the half lotus. Grab the big toe from the back, reaching forward. Still in Chaturdasha. Panchadasha, exhale, bring the chin down. Draw the right shoulder back, left shoulder forward. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look front, hold the pose, exhale. Release the arms, cross the feet. Saptadasha, inhale, lift up. Ashtadasha, exhale. Ekonavimshatihi, inhale. Vimshatihi, exhale. Trianga Mukhaika. Sapta, inhale, jump front. Pada Paschimottanasana. Bend at the right knee, the right toes facing back, knee facing front. Reaching all the way forward, still in Sapta. Right arm holding the left wrist on the front. Ashtav, exhale, bring the chin down. Padagra Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Nava, inhale, look front, hold the pose, exhale. Release the arms from there itself. Dasha, inhale, will lift up. Ekadasha, exhale. Dwadasha, inhale. Trayodasha, exhale, left side. Chaturdasha, inhale, jump front. Left toes facing back, left knee facing front. Reaching forward, left arm holding the right wrist. Panchadasha, exhale, chin down. 1. Draw the shoulder blades back. Do not get tilted to the right side. Keep your left buttock down. 3,
4, 5. Shodasha inhale, look front, exhale, release the arms. Saptadasha inhale, lift up. Ashtadasha exhale. Ekona vimshatihi inhale, vimshatihi exhale. Janushirshasana. Sapta inhale, jump front. A, bend at the right knee, the right heel to the left groin. Reaching forward. Still in Sapta. Ashtau, exhale, bring the chin down. Padagra drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look front, hold the pose, exhale. Release the arms, cross the feet. Dasha inhale, will lift up. Ekadasha exhale. Dvadasha inhale. Trayodasha exhale, left side. Chaturdasha inhale, jump front. With the same vinyasa, bend at the left knee. Left heel to the right groin, reaching forward. Left arm holding the right wrist. Panchadasha exhale, chin down. 1, 2, 3, long breaths. 4, 5. Shodasha inhale, look front, exhale. Release the arms, cross the feet. Saptadasha inhale, will lift up. Ashtadasha exhale. Ekona vimshatihi inhale, vimshatihi exhale. B, Sapta inhale, jump front. Now as we bend at the right knee, we want to lift the pelvis, sit on the heel. The perineum is on the heel. The knee goes slightly in, reaching all the way forward. Once you hold, Ashtau, exhale, chin down. 1, Padagra drishti. 2, 3, 4, 5. Nava inhale, look front, exhale. Release the arms, cross the feet. Dasha inhale, will lift up. Ekadasha exhale. Dvadasha inhale. Trayodasha exhale, left side. Chaturdasha inhale, jump front. Bend at the left knee, lifting the pelvis, sit on the heel, reaching forward, take time. Still in Chaturdasha, Panchadasha exhale, bring the chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Shodasha inhale, exhale. Release the arms, cross the feet. Saptadasha inhale, lift up. Ashtadasha exhale. Ekona vimshatihi inhale, vimshatihi exhale. C, Sapta inhale, jump front. Bend at the right knee, toes down, heel lifted. You can sit on the block if needed. Just work on the leg position, not reaching down if that is tough. Just be mindful, reaching all the way forward if you're comfortable.
Right arm holding the left wrist, reaching forward. Ashtau, exhale, bring the chin down. 1, 2, 3. Always come out if it is uncomfortable. 5. Now inhale, look front. Exhale. Release the arms. Slowly take the leg out. Dasha, inhale, lift up. Ekadasha, exhale. Dvadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Left side. Chaturdasha, inhale. Jump front. The left toes down. Rotating at the ankle joint. The knee softly goes downwards, reaching all the way forward. If you have slight pain in the last 2 to 3 toes, don't worry, that's perfect. Chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Shodasha, inhale, exhale. Take the leg out, cross the feet. Saptadasha, inhale, lift up. Ashtadasha, exhale. Ekonavimshatihi, inhale. Vimshatihi, exhale. Marichasana, A. Sapta, inhale, jump front. Bend at the right knee, having 1.5 to 2 fist distance between the right foot and the left thigh. Same leg, same arm. Taking the right arm all the way forward, wrap around to the mid of the shin. Wrapper is the grabber, right arm holding the left wrist. Ashtau, exhale, we bring the chin down. Padagra drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Now inhale, look front, exhale. Release the arms, cross the feet. Dasha, inhale, will lift up. Ekadasha, exhale. Dvadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Left side. Chaturdasha, inhale. Jump front. Left leg. Do not bring the foot to the groin. Having 1.5 to 2 fist distance there. Knee facing up. Wrap around. Try to wrap to the mid of the shin. Make a hook. Left arm holding the right wrist. Panchadasha, exhale. Bring the chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Shodasha, inhale, look front, exhale. Release the arms, cross the feet. Saptadasha, inhale, lift. Ashtadasha, exhale. Ekonavimshatihi, inhale. Vimshatihi, exhale. B. Sapta, inhale. We jump front. The left leg is into the half lotus. The right knee facing up to the ceiling. You can take the left leg into the cross leg position for the variation if needed. Wrapping around. Same leg, same arm. If you are comfortable already getting in, do not take the variation. Ashtau, exhale, chin down. Same leg, same arm, reaching forward. 2, 3, 4, 5. Now inhale, look front, exhale. Release the arms, cross the feet slowly. Dasha, inhale, lift up.
ekadasha exhale, dwadasha inhale, trayodasha exhale, left side, chaturdasha inhale, jump front. The right leg is into the half lotus. The left knee facing up to the ceiling. Same leg, same arm, reaching forward, wrap around. Left arm holding the right wrist. Panchadasha exhale, chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Shodasha inhale, look front, exhale. Release the arms, slowly take the legs out. Saptadasha inhale, lift up. Ashtadasha exhale. Ekonavimshatihi inhale. Vimshatihi exhale. C. Sapta inhale, jump front. In the same vinyasa, bend at the right knee, left palm on the right knee. Twist towards the left side, wrap around, make a hook. Left arm holding the right wrist, Parshva Drishti, looking to the back. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly look front, release the arms, cross the feet. Ashtau inhale, lift. Nava exhale, chaturang. Dasha inhale, ekadasha exhale, left side. Dwadasha inhale, jump front. Left knee facing up to the ceiling. Right arm on the outside, push the arm until the armpit, rotate from the shoulder joint, make a hook. Right arm holding the left wrist. 1, Parshva Drishti. 2, 3, 4, 5. Slowly look front, release the arms, cross the feet. Trayodasha inhale, lift up. Chaturdasha exhale. Panchadasha inhale. Shodasha exhale, Marichasana D. Sapta inhale, jump front. The left leg is into the half lotus or in the cross leg position. Right knee facing up to the ceiling. If you are almost there, don't take the variation. Opposite arm, push the arm on the outside of the left knee. Parshva Drishti. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly look front, release the arms, slowly take the legs out, cross the feet. Ashtau inhale, lift up. Nava exhale. Dasha inhale. Ekadasha exhale, left side. Dwadasha inhale, jump front. The right leg is into the half lotus. Left knee facing up to the ceiling. Keep the right thigh down. Opposite arm, push the right arm on the outside of the left knee until the armpit. Make a hook, Parshva Drishti. 2, 3, 4,
slowly look front, release the arms, slowly take the legs out, cross the feet, Trayodasha inhale, lift up, Chaturdasha exhale, Panchadasha inhale, Shodasha exhale, Navasana, Sapta inhale, we jump front, buttocks down, lift the legs up, straight legs, arms on both the sides, 1, toes pointed, 2, pull the kneecaps, 3, 4, 5, cross the feet, Ashtau inhale, lift, exhale, buttocks down, Sapta inhale, second round, arms on both the sides, 1, 2, 3, 4, 5, Ashtau inhale, lift, exhale, buttocks down, Sapta inhale, lift the legs up, third round, 1, Padagra Drishti, 2, 3, 4, 5, Ashtau inhale, lift, exhale, buttocks down, Sapta inhale, fourth round, take the arms on the side, 1, 2, 3, 4, 5, cross the feet, last round, Ashtau inhale, lift, exhale, buttocks down, Sapta inhale, take the legs up. If you need, you can bend the other way, straight legs, 1, 2, 3, 4, 5, cross the feet, Ashtau inhale, will lift up, Nava exhale, Chaturanga, Dasha inhale, Urdhva Mukha, Ekadasha exhale, Adho Mukha, Bhuja Pidasana, we jump on both the sides of the palms, Sapta inhale, jump front, slowly take time to adjust, you can just walk front also to adjust, cross the feet. If you're still comfortable, Ashtau exhale, slowly bring the chin down. Otherwise, continue staying there. 2, 3, 4, 5. Nava inhale, look front, hold the pose, exhale. Slowly take the legs on both the sides. Dasha inhale, Ekadasha exhale, Chaturanga. Dvadasha inhale, Trayodasha exhale. Again we want to jump on both the sides for Kurmasana. Sapta inhale, jump front. And slowly bring the buttocks down. Otherwise just walk front, reaching down. Slowly buttocks down. Insert the arms, bring the legs closer to the shoulder joints. Still in Sapta. Inhale, getting into the pose. Do not rush, go slow. Toes lifted and then reaching forward. Then keep the toes slowly pointing forward. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtau inhale, take the arms closer towards the pelvis. Nava exhale, bring the legs closer in front. If possible, cross the feet. Take time, do not rush, bring the head down. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly place the palms down. Dasha inhale, will lift up. Hold the pose. Exhale. Ekadasha inhale, take the legs to Bakasana.
द्वादश exhale chaturanga, त्रयोदश inhale ऊर्ध्वमुख, चतुर्दश exhale अधोमुख, गर्भपिंडासना, सप्त inhale jump front. The legs are into the lotus. Take time to keep the legs, do not rush. Inserting the arms very softly. Take the variation if needed. Half lotus is also fine. Insert the arms and slowly place the palms. 1. Even if you are in the cross leg position, still good. Still in the same 5 breaths. 2, 3. Cross leg is also fine. 4, 5, 9 times. So inhale, slowly coming up. Exhale, go down, round the spine. Inhale, come up. Exhale, go down. Don't come all the way, just halfway, keeping the spine rounded. If possible, 9 times, exact circle. Don't come all the way up, halfway, just only in the spine. Once you're ready, slowly coming to the center, rounding. Inhale, will slowly come up. Kukutasana, otherwise arms on both the sides. 1, 2, complete palms down. 3, 4, 5, slowly release. Take the arms out into the lotus itself or taking the legs out. Inhale, lift up. Exhale, jump back to Chaturanga. Inhale, opening the chest. Exhale, lifting the buttocks up. Baddha Konasana, Sapta inhale, jump front. Keeping the legs into the Namaste position. Bring the heels as close as possible. Straight spine. Still in Sapta. Ashtau, exhale. Bring the chin down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, lift the head up. Now exhale, rounding the spine, bringing the forehead down on the soles. 1, 2, 3, 4, Jai, 5. Now inhale, come up. Exhale, cross the feet. Dasha inhale, will lift up. Ekadasha exhale. Dvadasha inhale. Trayodasha exhale. Upavishta konasana. Sap inhale. Jump front. Apart the legs on both the sides. Still in Sapta, reaching forward to hold the outer edge. If not, grab both the big toes. Ashtau, exhale, bring the chin down. Bhrumadhya Drishti, 1, looking to the eyebrow center. 2, 3, 4, 5. Inhale, look front, hold the pose, exhale, B. Now inhale, lift the legs up on both the sides. Urdhva Drishti, looking up. 1, still holding the outer edge. 2, 3, 4, 5. Cross the feet. Dasha inhale, will lift up.
Ekadasha exhale. Dwadasha inhale. Trayodasha exhale. Supta Konasana. Sapta inhale. Jump front. Exhale, body down on the mat. Ashtau inhale, take the legs to Halasana, plow position. Apart the legs on both the sides, grabbing both the big toes. 1, 2, legs on both the sides, not together. 3, 4, 5, rounding the spine. Never inhale, come up. Exhale, slowly legs down, chin down. Dasha inhale, look front. Hold the pose, exhale. Release the arms, cross the feet. Ekadasha inhale, will lift up. Dwadasha exhale. Trayodasha inhale. Chaturdasha exhale. Supta Padangushthasana. Sapta inhale. Jump front. Exhale, body down on the mat. Going for the leg rising. Ashtau inhale, lifting the right leg up, grab the big toe. Left palm on the left thigh. Nava exhale, bring the chin up, chin to the near the shin bone. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha inhale, back of the head down. Ekadasha exhale, right leg to the right side. Parshva drishti, looking to the left shoulder. 1, your left palm still on the left thigh. 2, 3, 4, 5. Dwadasha inhale, take the leg up. Trayodasha exhale, chin up. Chaturdasha inhale, back of the head down. Panchadasha exhale, leg down. Left side. Shodasha inhale, lift the left leg up. Saptadasha exhale, chin up. 1, 2, 3, 4, 5. Ashtadasha inhale, back of the head down. Ekonavimshatihi exhale, left leg to the left side, looking towards the right shoulder. 1, 2, 3, 4, 5. Vimshatihi inhale, leg to the center. Ekavimshatihi exhale, chin up. Dvavimshatihi inhale, head down. Trayovimshatihi exhale, leg down. The first chakrasana, backward vinyasa. Chaturvimshatihi inhale, lift up. Exhale, chaturanga. Panchavimshatihi inhale, urdhvamukha. Shadvimshatihi exhale, adhomukha. Ubhaya Padangushthasana. Sapta inhale, jump front. Exhale, body down on the mat. Ashtau inhale, we take the legs to Halasana, the plow position, keeping both the legs together, grabbing both the big toes here. Exhale, rounding the spine. Nava inhale, we come up to balance in the air. Look up, Urdhva Drishti. 1, 2, 3,
4, 5, cross the feet. Dasha, inhale, lift up. Ekadasha, exhale. Dvadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Urdhva Mukha Paschimottanasana. Sapta, inhale. Jump front. Exhale, body down. Ashtav, inhale. Take the legs to Halasana position, the plow. Hold the outer edge, rounding the spine. Exhale here. Nava, inhale, round the spine. Inhale, come up. Dasha, exhale, chin to the shin. 1, 2, 3, looking to the center between both the big toes. 5, Ekadasha, inhale, legs away from the chest. Exhale, cross the feet. Dvadasha, inhale, lift up. Trayodasha, exhale. Chaturdasha, inhale. Panchadasha, exhale. Setubandhasana. Sapta, inhale, jump front. Exhale, body down. You can take the normal Setubandhasana also if you want to. So Ashtav, inhale, we prepare the legs in the V shape, keeping the heels together, toes going out, arms on both the sides. Ashtav, exhale, lifting the chest up, placing the tip of the head down. Prepare the body. Nava, inhale, let's come up. Engage the core, keeping the legs strong. 2, 3, 4, 5, exhale, come down. Second chakrasana. Inhale, will lift up. Exhale, chaturanga. Dvadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Urdhva dhanurasana. Sapta, inhale, jump front. Exhale, body down. Bend knees. Ashtav, inhale. Place the palms on both the sides next to the ears. Exhale. So we are ready. Preparing the body, preparing the mind, engaging the core. Nava, inhale. We come up, lift and push the chest towards the back of the shawl. 1, 2, 3, 4, 5. Tip of the head down. Dasha, exhale. Nava, inhale, come up, opening the chest. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, exhale, tip of the head down. Nava, inhale, come up. Last round. 1, 2, 3, 4. Dasha, exhale. 5. Slowly come down. Prepare for the third backward vinyasa. Ekadasha, inhale, will lift up. To exhale, chaturanga. Dvadasha, inhale. Trayodasha, exhale. Sapta, inhale, jump front for Paschimottanasana. Stretch the legs front, keeping both the legs together, reaching forward. If you need to, you can hold the outer edge, otherwise hold the wrist on the front or the big toe going for A. Ideally C here. Draw the shoulder blades back. Nava, exhale, keeping the chin down. Long breaths here. 4, 5,
6, 7, 8, 9, look front, look to the big toes, 10, Dasha, inhale, look front, exhale, release the arms, cross the feet, Ekadasha, inhale, lift up, Dwadasha, exhale, Trayodasha, inhale, Chaturdasha, exhale, Sarvangasana series, Sapta, inhale, jump front, exhale, body down for Salamba, Sarvangasana. Make sure you are on the mat, keeping both the palms together next to the buttocks, keeping the legs active. Stay here for few breaths. Take long and deep breaths. If you need to tuck the shirt in, adjust the hair. We can take variations. If there is any neck uncomfortability, head uncomfortability, cervical issues during menstruation, if in any of these cases, if you are not practicing Sarvangasana series, I'll come there to give you the variations. Once you are ready, now Ashtau, inhale with the straight legs if possible. Those who are taking Sarvangasana, taking the legs up. Toes pointed, chin away from the sternum, chest. Keeping long and deep breaths. Try to visualize the palm position. They are not to the lower back but to the mid back. Elbows little closer to each other. Every next exhalation is longer than the previous. Now Ashtau, exhale, slowly bring the legs to Halasana, the plow, toes down. Keep the straight legs, interlace the fingers on the back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karnapidasana, bent knees, knees by the side of the ears. If the knees reach down, that's good. Not reaching down, no problem. Try to have a flexion from the pelvis. 3. Try to relax the spine. It is slightly rounded here. 6, 7, 8. Urdhva Padmasana. So Ashtau, inhale, lift the legs to Sarvangasana position. Nava, exhale, slowly keep the legs into the lotus, half lotus or cross legs. If you're still comfortable, place the palms on the knees. Softly press the palms on the knees. The knees are softly pressing the palms backwards. Thighs parallel to the floor. 5, 6, 7,
8. Slowly bring the legs down towards the forehead. Take the arms on the top. Pindasana, if possible, interlace the fingers or make a hook on the top of the thighs. Maintaining the same pace of the breath. Three more breaths. Bring the palms here. That's nice. That's slow. Perfect. Now, if you can, keep the legs in the lotus, rounding the spine very slowly. We take the body down on the mat, vertebra by vertebra. Come slowly to prepare for Matsyasana. Ashtau, inhale, lift up, place the tip of the head down. Now you see the passive back bend here. Long breaths. Your belly in. Observe the chest being completely open. One more breath. Now Ashtau, inhale. Slowly take the legs out for Uttana Padasana, keeping the head in the same position. Legs up, arms up, your palms in line parallel to the legs. Legs are in the Navasana position, toes pointed, core really engaged. Three more breaths. 3, 2, 1. Legs down, arms down. Lift the head up, head down. Last chakrasana of the practice. So you can come up if you want to. Inhale, lift up. Exhale, chaturanga. Inhale, urdhva mukha. Exhale, adho mukha. Shirshasana. Sapta, inhale, slightly bent knees. We'll go for 20 counts of Shirshasana. Place the tip of the head down. Ashtau, inhale. Now, exhale, slowly getting into the position in Ashtau. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly the legs parallel to the floor for Urdhva Dandasana. 7 counts. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Inhale, take the legs up. Exhale, slowly bring the legs parallel to the floor. We'll do one more time. Inhale, go up slowly. Exhale, take the legs parallel to the floor. Last round. Inhale, slowly take the legs up. Exhale, slowly bring the legs down. Place the knees down. Balasana, child pose. Take some really long breaths, at least 10 to 12 seconds for one inhale, exhale together. Always make sure you have the normal pace of the blood flow, and then make it ready. Slowly placing the palms on both the sides, taking the legs back. Nava exhale, Chaturanga. Dasha inhale, Ekadasha exhale. Yoga Mudrasana. Sapta inhale, jump front. Legs into the lotus. Half lotus or the cross leg position. Exhale, we grab both the big toes from the back. Use the belt if needed. Once you're ready, reaching all the way forward, bringing the chin down. Bhrumadhya Drishti, looking to the eyebrow center. Yoga Mudrasana. Completely surrender the practice to the Supreme Power. Surrender the strength and the weakness. The flexibility and the rigidity. Surrendering the complete practice. One more breath. Inhale, slowly lift the head up. Ashtau, exhale, slowly take the arms down on the knees into Chin Mudra. Bring the chin to the sternum chest, having the throat lock here. Looking to the nose tip, straight spine, belly in, slightly contracting the perineum. All the three bandhas here. Observe the practice. Do not go to any boxes, the good or the bad. Just observe the body, observe the breath, observe the mind. 3 more breaths. Inhale, slowly lift the head up. Now we place the palms on both the sides for Utpluti, placing the palms down. Use the blocks if needed. Now inhale, we'll lift up. 7 counts. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Slowly come down from the lotus or taking the legs out. Feel free to cross. Inhale, lift up. Dasha, exhale, chaturanga. Ekadasha, inhale, urdhva mukha. Dvadasha, exhale, adho mukha. Coming to the standing. Trayodasha, inhale, jump front. Chaturdasha, exhale, head down. Coming to the standing position. Keeping both the feet together, palms into Namaste. Keep your eyes closed. We'll complete the practice with the closing mantra together. Inhale. Swasti prajabhyaha paripalayantam nyayena margena maheshaha gobrahmanebhyaha shubhamastu nityam loka samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Release your arms. Open your eyes. Inhale, arms up. Exhale, palms down. Inhale, half lift. Exhale, chaturanga. Inhale, urdhva mukha. Exhale, adho mukha. Shavasana. Inhale, jump front. Stretch the legs. Body down on the mat. Prepare well for Shavasana. Do not rush. Adjust the legs. Adjust your arms. Once we are in Shavasana, we will not move until the end of Shavasana. We'll stay here for at least 5 to 7 minutes, unmoving. Whenever you feel comfortable, completely relaxed, you can end the practice. Try not to control the mind. Just let it go.
आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज की दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है।
नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल
उनसे चिपक मत जाइए, विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है।
ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से
आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल की उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है।
ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर चीज में ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझ बूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव हैं। और ज्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये तीन प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए यह अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं।
जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो 5 ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। और अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है
जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं, हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है, जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है।
ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना है। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक
कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में ये क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता। इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती।
गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है। और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। वो जो सोचेगा वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण ने 3 अप्रैल सन 1781 के दिन उत्तर भारत में अयोध्या के निकट स्थित छपिया गांव में मनुष्य रूप में जन्म लिया। बाल घनश्याम के रूप में दिव्य लीलाओं से भरे बाल्यकाल के कुछ वर्ष उन्होंने छपिया में बिताए।
और कुछ वर्ष अयोध्या में बिताए और 29 जून सन 1792 की रात को वे नीलकंठ वर्णी के रूप में अयोध्या से गृह त्याग कर निकल पड़े, अनंत जीवों को अपना योग करवाकर उनका कल्याण करने के लिए एक कल्याण यात्रा पर। अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गौरी कुंड आदि स्थानों से होते हुए उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट मार्ग लांघकर उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और आगे घोर शीत ऋतु में भी बद्री वन में कठोरतम तपश्चर्या करके विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वत शिखरों को पार करके उन्होंने मानसरोवर जाकर निवास किया। पुनः बद्रीनाथ आकर वहां से गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, अयोध्या आदि स्थानों से होते हुए वे वंशीपुर आकर रहे और अयोध्या से गृह त्याग करने के लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा। सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है।
पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना। भजन करना रे, भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था। इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था।
और इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मारफा, जोमसम आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित खाई से गुजरे। विश्व की कुछ सबसे गहरी खाइयों से होते हुए नीलकंठ वर्णी एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंचे जहां सबसे वास्तविक रूप के शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा बहुत शालिग्राम लग रहा है। नहीं, पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले। और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। क्या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं। और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। कागबेनी, रानी पौवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे।
नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। हाँ, ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ। मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ, चलो आ जाओ। जाओ, घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो, हाँ? मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुलह जी ने यहीं कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे। इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहाँ तपश्चर्या करनी है। आप इतने तपस्वी तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपश्चर्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भागरूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए, तब तक। जी, प्रणाम। मैं भी करके देखता हूँ। परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अरे, कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं। कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है।
अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। हाँ, कितनी शोभायमान लग रही है उनकी मूर्ति, जैसे तप और ब्रह्मचर्य का साक्षात स्वरूप। सूर्य देव को भी तेज प्रदान कर रहे हो, ऐसी तेजोमय कांति। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है, तो आज एकादशी का व्रत, भोजन और जल का संपूर्ण त्याग। कल द्वादशी के दिन पारणा करके मैं ये तपश्चर्या पूर्ण करूंगा। अगर आप एकादशी का व्रत करोगे तो मैं भी करूंगा। नीलकंठवर्णी, जाते जाते कुछ उपदेश देते जाइए, जिससे कि हम भी सर्वोच्च तपश्चर्या कर सके और हमारा मोक्ष हो। तप, त्याग, वैराग्य, तीर्थ, सेवा आदि तो अनेक साधन हैं, पर वे आत्यंतिक मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पर हाँ, यदि परमात्मा का दृढ़ आश्रय कर लिया जाए तो ऐसे कई सारे साधनों के फल से भी अधिक ऐसा आत्यंतिक मोक्ष मिल सकता है। नीलकंठवर्णी, आपकी तपो मूर्ति की दिव्य स्मृति हमेशा के लिए हमारी हृदय में जीवंत रहे और उसी के आश्रय से ही हमारा पूरा जीवन बीते। ऐसे ही आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। नीलकंठ प्रभु, प्रणाम। तपश्चर्या में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हो इस धन्यवाद। बाल योगी को। प्रणाम।
नेपाल के रिरिविजोर गांव से होते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया बुटोल नगर की ओर। अरे एक तो ऐसा निर्जन विस्तार, उसमें इतना अंधकार, कदम कदम पर जहरीले सांप और बिच्छू अपार। और ऊपर से कभी भी कोई भी जंगली पशु कर सकता है कहीं से भी वार। हे भगवान, अब तो तू ही कर मेरा उद्धार। लगता है कि अब यहीं से आगे रास्ता मिल जाएगा। भगवान, अरे ये तो मैं उसी जगह पर आकर अटका जहां से रास्ता ढूंढने के लिए निकला था। भगवान, क्या मुसीबत है। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है ये? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अरे वर्णी जी, साधु राम, अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा नाम मोहन दास है। मैं हिमालय की तलहटी में जाना चाहता हूँ, पर कब से घूम फिर के यहीं आकर अटक जाता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अंत तक रास्ता दिखाऊंगा। भूले भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, वही तो मेरा काम है। हाँ। बस मेरा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जरा संभल कर चलिएगा वर्णी जी, यहाँ पर बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल आते हैं। शिकारी पशुओं की तो भरमार है यहाँ, कहीं से भी सामने आ सकते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आज तो वर्णी जी के लिए बहुत बढ़िया भोजन बनाऊंगा। प्रभु जी उतारे भाव पार मेरे। बोलो कर ले भजन लगातार मनवा, ओ आत्म उद्धार मनवा, प्रभु जी उतारे भाव
वर्णी जी सो गए, मैं भी जरा आराम कर लेता हूँ। लाइए मैं आपको स्नान करा देता हूँ वर्णी जी। नहाइए। आपकी सेवा करने से ऐसा आनंद मिलता है जैसा भगवान की सेवा करने से मिलता है। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे और अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो। इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ। वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडल, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर। लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर, संभल कर। बच गया। जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना। कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं? अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए, संभालिएगा। अरे संभल कर, क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर। अरे संभल कर। हाँ, संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगा और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए, मुझे दीजिए।
क्या कर दिया आपने? अरे क्या? सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता। आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मैं बहुत खुश हूँ नीलकंठ वर्णी जी। मैं भगवान को ढूंढने की साधना कर रहा था और आप मुझे मिल गए। कर ले भजन लगातार मनवा, हो आत्म उद्धार। अब बहुत भूख लगी है, मैं भी ये फल खा लेता हूँ। ये फल जहरीले हैं, आप मत खाना। अब तो बहुत भूख लग रही है और कुछ खाना मिले ना मिले, ये फल खाकर काम चला लेते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं तो ये फल ही सही। अरे ये फल मत खाइए, ये जहरीले हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने बताया। हाँ? पर ये स्वयं तो यही फल खा रहा है और हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे हैं? ऐसी अर्थहीन बातें करने वाला कौन है ये? ये महापुरुष हैं, इनकी बात मानने में भलाई है। ये बच्चा महापुरुष। यदि ये महापुरुष है तो हम तो अति महापुरुष हैं। अरे ये स्वयं भगवान है। वे जो करते हैं वो करने में नहीं, पर वे जो कहते हैं वो करने में ही हमारी भलाई है, समझो। तुझे भूखा रहना है तो रहे, हम तो ये फल खाएंगे। चलो महापुरुषों, ये फल खाओ और भूख मिटाओ। लाओ भाई, महापुरुषों। अब भी कहता हूँ इनकी बात मानो। ये जहरीले हैं। छोड़ो फिर। तू भी खा ले। ये देख, मैंने तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देख, मैंने भी खाया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमें। हम भी तो महापुरुष हैं। आजा तू भी खा ले। ये क्या हो रहा है? ये अरे ये वर्णी जी की बात सही थी। वर्णी जी की बात सच थी। जो भगवान की नहीं सुनेंगे उनका तो यही हाल होना निश्चित है। पर हाँ, इन सबको एक बार तो आपके दर्शन जरूर हुए हैं, तो कभी ना कभी तो उनका कल्याण जरूर होगा। मोहनदास जी, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, मुझसे जुड़ भी गए हैं। अभी आप थोड़े समय के लिए यही कहीं किसी तीर्थ स्थान में बस जाइए। समय के चलते पश्चिम दिशा में आपको पुनः मेरा योग होगा और आपका मोक्ष भी होगा। ठीक है वर्णी जी, जैसा आप उचित समझे। मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम।
नीलकंठ वर्णी का अगला पड़ाव था नेपाल की दक्षिण दिशा में स्थित बुटोल नगर। सबका न्याय करने वाले तो भगवान हैं। वही हैं जो सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। राजा होते हुए आप जो न्याय करते हैं वो तो एक निमित्त मात्र है। जी। ये देखो, महादत्त राजा और उनकी बहन माया रानी को हमें छोड़कर एक बच्चे से उपदेश ले रहे हैं। और ये बच्चा ऐसे राजा रानी को उपदेश भी क्या देता होगा? इस तरह परमात्मा को साक्षी मानकर कार्य करोगे तो राजधर्म का पालन भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। जी नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ वर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु तीन अलग अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवंत शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठ वर्णी। हमारे राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी, इन दोनों को नीलकंठ वर्णी के प्रति कुछ असाधारण सा भक्ति भाव है। हाँ, तभी तो वे जब जब नीलकंठ वर्णी जी हमारे बुटोल नगर से बिना बताए विदा हो जाते हैं, तब तब हर बार किसी भी प्रकार से उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं। हाँ, देखना, अब तो नीलकंठ वर्णी जी जन्माष्टमी का उत्सव भी यहीं मनाएंगे और हम सब के प्रेम के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे। नीलकंठ वर्णी को बांध कर रख सके ऐसा तो कौन सा बंधन हो सकता था। हर बंधन से अनंत जीवों को मुक्त करके उन्हें परम कल्याण प्रदान करने के लिए तो नीलकंठ वर्णी की ये यात्रा थी। अपनी कल्याण यात्रा को चिरकाल तक अविरत रखने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए एक सुबह नीलकंठ वर्णी बुटोल नगर से आगे बढ़ चले, उत्तर में नेपाल के पोखरा की ओर। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम।
प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम। ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम। जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। एको वशी सर्वभूतानांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थतम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। अष्टांग योग सिद्ध करने से भी जो आज तक नहीं हुई ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति आपकी उपस्थिति से हो गई। बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, बहुत प्रतीक्षा करवाई। गोपाल योगी जी, हाँ, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रह जाइए प्रभु। आप जैसे निर्मल अंतर के मुमुक्षु के साथ रहने के लिए और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
थोड़ा इसका भी सेवन कीजिए। ये ग्रहण कीजिए प्रभु। सर्वप्रथम कुछ ग्रंथों के अभ्यास से आपका प्रशिक्षण आरंभ होगा। जी। अयुतो मे आत्मा, अयुतं चक्षुः, अयुतं मे श्रोत्रम्, अयुतो मे प्राणः, अति सुंदर। अयुतो मे अपानः, अयुतो मे व्यानः, अयुतोऽहं सर्वः। ग्रंथों के अभ्यास के बाद अब नेति, बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख, प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठ योग की क्रियाओं का शिक्षण होगा। हठ योग के पश्चात अब एक एक करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब अष्टांग योग के अंग आपको सिद्ध करने होंगे।
गोपाल योगी जी, मुझे समाधि की अवस्था तक अष्टांग योग का प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद। यह तो आपकी मनुष्य लीला है प्रभु कि मुझे आपकी भक्ति का अवसर देने के लिए आपने 12 मास तक मुझसे अष्टांग योग की शिक्षा लेने का यह प्रसंग उपस्थित कर दिया। अन्यथा आपके योग से परे और कोई योग ही नहीं है प्रभु। आप तो सर्वोच्च साध्य ऐसे परमात्मा है। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। आपने अतिशय कृपा करके मुझे ऐसे दुर्लभ और नवीनतम दर्शन का प्रशिक्षण दिया है प्रभु। मेरे अंतर में आप ही का स्वरूप स्थित हो गया है नीलकंठ वर्णी। मुझे देह भाव की विस्मृति हो रही है। आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हूं नीलकंठ वर्णी। स्वतः अष्टांग योग सिद्ध कर लेने के पश्चात भी गोपाल योगी जी के लिए जो कुछ अपूर्ण रह गया था उसे वे नीलकंठ वर्णी के योग से प्राप्त कर पाए और परम कल्याण के मार्ग पर प्रयाण कर पाए। पृथ्वी पर कई ऐसे जीव थे जो अष्टांग योग जैसी उच्च साधना तो नहीं कर पा रहे थे, पर किसी न किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास तो अवश्य कर रहे थे। नीलकंठ वर्णी चाहते थे कि हर एक जीव आत्यंतिक मोक्ष की परिभाषा से अवगत हो और परम कल्याण को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिम दिशा में जाकर बसने के संकल्प के साथ नीलकंठ वर्णी बढ़ चले अपनी अनंत कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव पोखरा से होते हुए काठमांडू की ओर।
अंगपोगा दे। ए साधु, ए साधु, उधर मत जा। डोंट गो इन देयर। अरे कोई तो बचाओ। अरे देखो क्या कर रहा है। ए साधु, वापस आ जाओ। क्या कर रहे हो साधु? साधु, हम इतने सारे साधु संत हैं, घूम घूम कर लोगों को दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। ये सब पागलपन है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, खाली पेट को धर्म सिखाना पाप है। अपनी अज्ञानता के कारण गरीब लोग पशुवत जीवन बिता रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर कुछ सन्यासी जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, अगर वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर शिक्षा देकर और कई अन्य तरीकों से उन सब की स्थिति सुधार कर दूसरों के लिए अच्छा करें, मौखिक शिक्षा के द्वारा और मानचित्रों, कैमरा, ग्लोब और ऐसी अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो क्या हम अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते? अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। हमने एक देश के रूप में अपनी पहचान खो दी है। हमें अपने देश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी और जनता का उत्थान करना होगा। इसके लिए पहले हमें लोग चाहिए। चलो निज निकेतने जल्दी आ रहे, उठ जल्दी आना। हरि भाई, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन मेरा हृदय विस्तार हो चुका है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। धर्म सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया है। मेरा मन मुझसे ये कहता है, तुम बहुत जल्द ये होते हुए देखोगे।
इन पाश्चात्य देशों में आने वाला मैं पहला सन्यासी हूं। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक हिंदू सन्यासी ने समुद्र पार किया है। यह मेरा कमजोर हृदय है जिसने मुझे भारत से बाहर जाने को प्रेरित किया है। उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं और मैं इसीलिए यहां हूं। जो खर्च मैं यहां झेलने के लिए मजबूर हूं वो भयंकर है। आमतौर पर मुझे एक दिन का $1 खर्चा लगता है। एक सिगार की कीमत हमारे पैसे के 8 आने के बराबर है। वो सभी सहज विचार जो चलने से पहले मेरे भीतर थे, वो सब पिघल चुके हैं और अब मुझे असंभव के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। Eastern Marble, Japanese bamboo house. It's only $50 per day, sir. You are from Boston? Okay, sir. See you soon. Excuse me? Yes. Can I get a room? No room. Could you check? Money. Oh. एक 100 बार मुझे लगा मुझे इस देश को छोड़ अपने देश भारत वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित हूं और यह ईश्वर का आदेश है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखें देखती हैं और मुझे अपनी बंदूक थामे खड़ा रहना है, चाहे जीऊं या मरूं। अगर मुझे यहां लंबे समय तक रहना है तो इस अनूठे पहनावे से काम नहीं चलेगा। 100 से भी अधिक की संख्या में लोग मुझे देखने के लिए गलियों में इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे चाहिए कि मैं एक लंबा काला कोट पहनूं और अपने पास एक ढीली लंबी पोशाक रखूं और पगड़ी रखूं उस समय के लिए जब मैं भाषण दूंगा। यह सब मुझे सहन करना ही पड़ेगा। भूख, मेरे अनूठे आकर्षक पहनावे के कारण गलियों में लोगों का मुझ पर ठहाका मारकर हंसना और मुझ पर हमला करना। ठंड, इन सब के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी महान कार्य बिना कड़ी मेहनत के कभी नहीं हो पाए हैं। हो सकता है मैं सर्दी, ठंड और भूख के कारण इस देश में मर जाऊं। मैं 12 साल से इस भार को अपने दिल में लिए हुए चल रहा हूं और इस विचार को अपने दिमाग में। मैं इन तथाकथित अमीर और बड़े कहलाने वाले लोगों के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कई बार गया हूं। इस रक्त रंजित हृदय के साथ मैं आधी दुनिया पार कर चुका हूं, इस अनजानी धरती पर पहुंच मदद मांगने के लिए।
संसद के आरंभ होने की सुबह हम सभी एक भवन में इकट्ठा हुए जिसका नाम था आर्ट गैलरी। वहां एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हम मंच की ओर बढ़े। कल्पना कीजिए, नीचे हॉल और ऊपर विशाल गलियारा ठसाठस भरा हुआ 6000 स्त्री और पुरुषों से, जो कि उस देश की सर्वोत्तम संस्कृति के सूचक थे। और मंच पर थे संसार के सभी देशों के ज्ञानी लोग और मैं, जिसने कभी लोगों के सामने नहीं बोला था, उसे आज इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष बोलना था। इसका आरंभ भव्य तरीके से संगीत, औपचारिक सार्वजनिक समारोहों और भाषणों के साथ हुआ। जी हां, मेरा हृदय घबराहट के कारण धड़क रहा था और मेरी जीभ लगभग सूख चुकी थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और सुबह भाषण देने का जोखिम न उठा सका। थियोसॉफी के चक्रवर्ती का भाषण बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। ब्रह्म समाज के मजूमदार का भाषण तो उससे भी बेहतर था, उन्हें बहुत सारी तालियां भी मिली। ये सभी लोग पहले से ही तैयार थे और अपने साथ पहले से तैयार किए गए भाषण लाए थे। मैं बेवकूफ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम किया और मंच के ऊपर कदम रखा। Sisters and brothers of America, करीब 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of the monks in the world. I thank you in the name of the mother of all religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform, who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I will quote to you, my brethren, few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest childhood, which is every day repeated by millions of human beings. As different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. जब भाषण खत्म हुआ, मैं अपनी भावुकता के कारण थक चुका था। सारे अखबारों ने घोषणा की कि मेरा भाषण उस दिन का सबसे सफल भाषण रहा और सारा अमेरिका मुझे जानने लगा, और वो भी किस प्रभाव के साथ। मैं कुछ अखबारों और पत्रिकाओं से पढ़कर तुमको बताऊंगा जो मेरे हाथ में है।
मुझे आत्म अहंकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे विश्वास की वजह से मैं ये कहने को विवश हूं। इससे पहले इस तरह का प्रभाव अमेरिका पर किसी हिंदू ने भी नहीं छोड़ा। But eloquent, as were many of the brief speeches, no one as well expressed the spirit of the parliament and its limitations as the Hindu monk. His culture, his eloquence, and his fascinating personality have given us a new idea of Hindu civilization. His fine, intelligent face and his deep musical voice, prepossessing one at once in his favor, he speaks without notes, presenting his facts and conclusions with the greatest art and the most convincing sincerity, raising often to rich, inspiring eloquence. Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. Herald, the greatest newspaper here. जो अखबार मुझे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी कहा है कि This man, with his handsome face and magnetic presence, is undoubtedly the prominent figure in the parliament, etc., etc. अब इन सब उदाहरणों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि एक सन्यासी को अमेरिका तक भेजना सार्थक था? अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस शहर के कई सुंदर मकान मेरे लिए खुले हैं। अगर मैं चाहूं तो अपनी पूरी जिंदगी यहां बिता सकता हूं, ऐशो आराम के साथ। लेकिन मैं एक सन्यासी हूं। हे भारत देश, तुम्हारी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। हे मां, यहां लोग फूलों के बिस्तर पर सोते हैं। ये लोग सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये आनंद नहीं लेते, जबकि मेरे देश में लोग भूख से मर रहे हैं। हे मां, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा? मुझे अपने बारे में बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपका मेरे ऊपर ऋण है। मैं बंगाल में पैदा हुआ। मेरे पिता और मां ने कई सालों तक उपवास रखा ताकि मैं पैदा हो सकूं। मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने मेरे जीवन की कुंडली बनवाई, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या है। मैं ये जानता हूं कि मेरी मां मुझे पूरी चेतना के साथ इस संसार में लाई, उसके लिए जो मैं हूं। वो प्यार जो मेरी मां ने मुझे दिया, उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं, और यह उसका ऋण है मुझ पर, जिसे मैं कभी ना चुका पाऊंगा। मां, कई बार मैंने अपनी मां को अपना नाश्ता उस वक्त लेते हुए देखा जबकि दोपहर के 2 बज चुके। कोई दरवाजा खटखटाता और कहता था मेहमान, और तब खाना खत्म हो जाता था, सिवाय उसके जो मेरी मां के लिए बचा था।
वह पूरी इच्छा के साथ वह खाना उसे दे देती और फिर अपने खाने का इंतजार करती। यही उसका जीवन था और वह उसे पसंद करती थी। मुझे याद है जब मैं 2 साल का था, जब मैं खेलता था एक बैरागी की तरह, कौपीन और भस्म में लिप्त। यदि कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आ जाता तो वो मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर देते ताकि मेरे अत्यधिक देने की आदत को रोका जा सके। मुझे भी महसूस हुआ करता था मैं भी ऐसा हूं और कोई गलती मैंने की है जिसके कारण मुझे भगवान शंकर से दूर भेज दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे परिवार वालों ने मेरे इस भावना को बल दिया। जब मैं कोई शरारत करता तो वे कहते, हे भगवान, इतनी सारी पूजा अर्चना, फिर भी भगवान शंकर ने एक अच्छी आत्मा की जगह मेरे घर पे एक राक्षस भेज दिया। और जब मैं विद्रोही हो जाता, वो तब ठंडे पानी से भरा बर्तन मेरे ऊपर उड़ेल कर खाली कर देते थे। कहते थे शिव शिव, और मैं बिल्कुल शांत हो जाता, हमेशा हमेशा। आज भी जब मुझे कोई शरारत सूझती है, वो शिव मुझे संभाल लेता है। शिव शिव। ताथैया नाच भोला, बम बब बाजे गाल। ताथैया नाच भोला। शिव शिव। यह आश्चर्य का विषय है कि ये हर रात हो रहा था, बहुत लंबे समय तक। जैसे मैं बिस्तर पर जाता था, हर रात 2 आदर्श मेरे सामने आ जाते थे। एक आदर्श मुझे उस व्यक्ति की भांति प्रस्तुत करता जिसके पास असीम दौलत, समृद्धि, असंख्य नौकर चाकर और आश्रित थे। हाँ, मुझे मालूम था कि मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य था ये सब पाने के लिए। अगले ही क्षण मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं इस संसार की सारी चीजों को त्याग दिया है और त्यागी की जिंदगी जी रहा हूं। सिंह की चमड़ी से बने वस्त्र पहने हुए, खाके जो कुछ भी उपलब्ध हो, बिना किसी प्रयास के। मेरे दिमाग में ये 2 तस्वीरें आती थी जिनके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को ढाल सकता था। लेकिन आखिरकार दूसरी तस्वीर ने मेरे दिमाग को पकड़ा। कुछ साल पहले जब मैं अपने घर गया, अपने पिता की मृत्यु के बाद, मुझे अपनी मां के कागजातों के बीच मेरी कुंडली मिली और मैंने उसमें देखा नियति के द्वारा मेरा इस धरती पर घुमक्कड़ बनना तय था। मैंने 12 साल कड़ा अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्नातक हो गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह भय था कि धर्म समाप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिक खोजों की भारी भरकम हथौड़े नुमा जोरदार मार के कारण पुरानी रूढ़ियां चीनी मिट्टी की ढेर के समान ढहकर समाप्त हो रही थी। हिंदुत्व भारतीयों के लिए भ्रमात्मक हो चुका था। वह जिनके लिए धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों और सराहनीय अनुष्ठानों का गट्ठर मात्र था, वह सब दुखी थे। इस अविश्वास ने मुझे भी घेरा और कुछ समय तक मुझे लगा कि धर्म संबंधी सारी आशाएं त्याग देनी चाहिए। कलकत्ता शहर में
मैं धर्म की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था और हर जगह व्याख्याता का लंबा वक्तव्य सुनने के बाद मैं पूछता था, सर, क्या आपने भगवान को देखा है? बेचारे व्याख्याता भगवान को देखने के विचार से ही हतप्रभ हो जाते थे। और केवल वह व्यक्ति जिसने मुझे कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वह थे श्री राम कृष्ण परमहंस। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलाऊंगा जहां से तुम भी भगवान को देख सकोगे। यह व्यक्ति कलकत्ता के पास रहने आया था, जो कि भारत की राजधानी थी, देश का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय शहर, जो हर साल संशयवादियों को और उपभोगवादियों को 100 से भी अधिक संख्या में पैदा करता था। यह बूढ़ा बहुत अनूठा था। उनका बौद्धिक विद्वत्ताओं से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने बराबर किताबें पढ़ी थी। लेकिन जब वो बच्चे थे, सत्य के साथ सीधा साक्षात्कार के प्रबल विचार ने उनको कसकर पकड़ा हुआ था। पहले इस व्यक्ति ने अपने ही धर्म का अध्ययन किया और उसके बाद उनके मन में यह विचार आया कि अन्य धर्मों का सत्य जानना चाहिए, और इस विचार के साथ उन्होंने एक के बाद एक अन्य धर्म और संप्रदायों का अनुसरण किया। वो जिनको जानना चाहते थे उन्हीं की तरह खाते थे और कपड़े पहनते थे और उनकी जात और भाषा का इस्तेमाल करते थे। अरे बहुत समय पहले जब सार्वभौमिक धर्म और आपसी भाईचारे के भाव के विचार की आधारशिला रखी जा रही थी और विश्व के किसी भी देश में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, तब यहां एक जीवित व्यक्ति था जिसकी पूरी जिंदगी धर्म की संसद थी। विश्वविद्यालय के कई लोग, संशयवादी, ईश्वर की सत्ता पर संशय रखने वाले, उन्हें सुनने आया करते थे। मैं भी उन्हें सुनने गया। हाँ, वह दक्षिणेश्वर मंदिर का बगीचा था। उनके खुद के कमरे में वह साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे। उनके बारे में कुछ भी असाधारण और उल्लेखनीय नहीं था। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে, মন চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন, পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন। वह गीत सुनते सुनते समाधि में चले गए। মন চলো নিজ নিকেতনে। আ আ मैंने गीत गाया, लेकिन
थोड़ी ही देर में वो उठे और मेरे हाथों को पकड़कर उत्तरीय बरामदे की ओर ले गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा बंद किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनकी आंखों से खुशी के आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं। वह मेरे सामने खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे संबोधित कर रहे थे। हे भगवान, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हो, नारायण के अवतार। इस धरती पर मनुष्य जाति के दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुए हो। मैं उनके इस तरह के आचरण से हतप्रभ था। यह व्यक्ति है कौन जिसे मैं देखने आया हूं? यह जरूर पूरी तरह पागल है। क्यों? मैं तो सिर्फ विश्वनाथ दत्त का बेटा हूं, और फिर यह मुझे क्यों इस तरह संबोधित कर रहे हैं? मैं वापस आया, दोस्तों के पास बैठा, बैठकर गंभीरता से उन पर गौर करने लगा। उनके शब्दों में, उनकी क्रियाओं में और दूसरों के लिए उनके आचरण में कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है यह व्यक्ति पागल हो, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ही इस तरह के त्यागी हो सकते हैं, चाहे पागल ही सही। यह पवित्र व्यक्ति पवित्रों में भी पवित्र है, एक सच्चा संत, और इसलिए सिर्फ यही व्यक्ति समाज से आदर और सम्मान पाने के योग्य और हकदार है। ऐसी दुविधा की मनस्थिति में मैंने कलकत्ता जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার কাছে একাকী আসবে। पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया, और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। शुरुआत में मैंने अपने गुरुदेव की किसी भी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने एक दिन उनसे कहा, भगवान के स्वरूप और इस तरह की और चीजें जो आप अपनी दृष्टि से देखते हैं, सभी आपकी कल्पना के हिस्से हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं। मैंने कहा, चाहे हजारों लोग आपको भगवान कहकर पुकारें, लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपको भगवान कहकर नहीं पुकारूंगा जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो कि यह सही है। उन्होंने कहा, फिर तुम यहां क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं यहां आपको देखने आता हूं, ना कि आपको सुनने। इसे सुनकर वो बहुत संतुष्ट हो गए। श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था, तथ्यों को जानने के लिए। उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला
जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता, मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर, आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता, बिना विभूत हुए। उनके बारे में कैसे बोलूं? उनका प्रेम, एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों, वेदों, बाइबल, कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। अच्छा, मेजेर ऊपरे ওই বইটা ने? ये किताब अन्य चीजों के साथ थी, जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। ना ना ना, आइटा ওইটা ने? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, इसे पढ़ो। मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली এবার পড়। ভাদুরের মেঘ বিপরীত বায়, সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। যদি বর্ষে পাউসে, কড়ি হয় তুষে। যদি বর্ষে মাঘে শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। फिर उन्होंने कहा, अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া। की? ভালো করে নিংড়া। मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा, क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा? जब तक कि पानी बाहर नहीं आता, यह केवल किताब में है। इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए, वह बेकार है। जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है, मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है, जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था, लेकिन उसकी मिठास से अनभिज्ञ था। সেই গল্পের গাধার মতো, যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না। কি ও গাধা? फिर मेरा बहुत बुरा समय आया। ऐसा दुर्भाग्य आया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई और हम गरीब हो गए। जबकि अभी मेरे पिता के शोक का समय भी पूरा नहीं हुआ था। मुझे नौकरी की तलाश में जाना पड़ा, भूखे नंगे पांव। मैं चिलचिलाती धूप में हाथों में प्रार्थना पत्र लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह लोगों ने मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए। जीवन की सच्चाई के साथ इस प्रथम साक्षात्कार ने मुझे विश्वास दिला दिया कि निस्वार्थ दया इस दुनिया में बहुत कम है। इस दुनिया में कमजोर, गरीब और अभावग्रस्त के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन थका हुआ और पैरों में छाले पड़े हुए मैं ऑक्टरलोनी स्मारक की छांव तले मैदान में बैठ गया। एक दो मित्र भी साथ थे। उसमें से एक मित्र ने सांत्वना देने के लिए गाना शुरू किया। ओए नरेन, उठ उठ, देख। बहीचे कृपा घन ब्रह्म निष्पाश पवने। क्या तुम इस गीत को गाना बंद करोगे? ऐसी मनोनुकूल कल्पनाएं उनको अच्छी लग सकती हैं जो चांदी के चम्मच अपने मुंह में लिए हुए पैदा हुए हैं और उनके घर में कोई भूखा रिश्तेदार नहीं। हां, एक समय ऐसा था जब मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन आज जीवन की कठोर सच्चाई के सामने मुझे यह एक
दुखद उपहास की तरह लग रहा है। कभी कभार जब मुझे लगता था मेरे परिवार के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं है और बटुआ भी खाली होता, मैं अपनी मां के सामने दिखावा करता कि मुझे बाहर से खाने का न्योता है और व्यवहारिक तौर पे मुझे बिना खाने के ही रहना पड़ता। ओह, वह गहरी पीड़ा उन दिनों की। मैं नर्क में जी रहा था। इस सभी परेशानियों के बावजूद, हालांकि मेरा भगवान पर से, भगवान के अस्तित्व और दिव्य दया पर से विश्वास कभी नहीं उठा। हर सुबह उसका नाम लेकर मैं उठता और काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता। एक दिन मेरी मां ने मुझसे कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, ओ मूर्ख, तुम भगवान के लिए बचपन से रो रहे हो और उसने तुम्हारे लिए क्या किया? मैं हतप्रभ हो गया। शंका ने मेरे दिमाग में दस्तक दी। क्या भगवान सचमुच में है? अगर है, वह सचमुच प्रार्थनाओं को सुन सकता है? तो फिर मेरी याचनाओं का कोई जवाब क्यों नहीं? मैं पूरी तरह भगवान से गुस्सा था। वो पल था, अवसर था, शक को मेरे दिमाग में उपजने के लिए। जल्द ही ये बातें विश्वसनीय हो गई कि मैं एक नास्तिक हूं और शराब पीने में भी संकोच नहीं करता। और तो और, मैं बार बार बुरी छवि वाले घरों में भी जाता हूं। इन बातों से मेरा हृदय और कठोर हो गया। चिंता की कोई बात नहीं। अगर मनुष्य के अच्छे और बुरे विचार इतने कमजोर नींव पर रखे जाते हों, मैं चिंता नहीं करता। इस दुखी दुनिया में कुछ भी निंदनीय नहीं है उस व्यक्ति में जो सिर्फ थोड़े समय के लिए भी सुख चाहता है। उसे हर चीज में आनंद लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं एक बार भी संतुष्ट हो जाऊं ऐसी स्थिति के प्रभाव से, फिर भी मैं किसी के भी डर से पीछे नहीं हटूंगा उसका अनुसरण करने से। जब श्री रामकृष्ण के प्रिय शिष्य ने आंखों में आंसू भरे उनसे कहा, নরেন যে এমন হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। চুপ কর শালারা, মা বলেছেন সে কখনো ওরকম হতেই পারে না। আর কখনো ওসব কথা বললে তোদের মুখ দেখবই না মা। और मैं यह सुन के चकित था। तब से श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति थे। जब से वो मुझे मिले थे, उन्होंने मुझ पर हमेशा निरंतर विश्वास किया, जबकि मेरे माता व भाई भी यह न कर सके। उनका मेरे ऊपर कभी न टूटने वाला विश्वास और प्यार ही था जिसने मुझे हमेशा के लिए उनसे बांध दिया। एक दिन जब गुरुदेव अनदा गुहा से मिले और उन्होंने उससे कहा कि नरेन के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका परिवार बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, यह अच्छा होगा अगर उसके सारे दोस्त अभी उसकी मदद करते पैसों से। अन्नदा के जाने के बाद मैंने उन्हें डांटा। वह रोने लगे और कहा, ओ नरेन, तुम्हारे लिए मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर भीख मांग सकता हूं। उन्होंने मुझे फांस लिया अपने प्रेम के द्वारा। फिर भी मैं 6 साल तक उनसे लड़ता रहा। আমার ইচ্ছা হয় সুখদেবের মতো 5-6 দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি।
তারপর শুদ্ধ শরীর রাখার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যায়। ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে ওই কথা? আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা না হয় তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। मैंने उन्हें प्यार किया और यही वह चीज थी जिसने मुझे उनसे जोड़े रखा। मैंने उनकी पवित्रता को देखा, मैंने उनके अद्भुत आश्चर्यजनक प्यार को महसूस किया। उनकी महानता तब मेरे ऊपर नहीं बिखरी थी। वो सब तो बाद में आया, जब मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। আমি এসব পারবো না। তুই করবি না, তোর ঘর করবে। वह हमेशा सही थे और अब मैं उनके निर्णय पर आंखें मूंद कर विश्वास करता हूं। तब वह दुखद दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव की मृत्यु हो गई। हमने उनकी भरपूर सेवा की, जितना भी हम कर सकते थे। मैं उनके पास तब गया था जब मैं लगभग 16 साल का था। कुछ और लड़के भी और छोटे थे, कुछ थोड़े बड़े थे। जब मेरे गुरुदेव ने शरीर को छोड़ा तब हम दर्जन भर लड़के थे, जिनके पास ना कोई धन था और ना ही जिन्हें कोई जानता था। हमें एक सार्वभौमिक धर्म की शुरुआत करनी चाहिए, अभी और यहीं। हमें हिंदुओं के दया भाव, ईसाइयों की कर्मठता और मुसलमानों के भाईचारे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे कोई दोस्त नहीं थे। कौन सुनेगा कुछ लड़कों को उनके सनकी विचारों के साथ? कोई नहीं। कम से कम भारत में लड़के कुछ भी नहीं। सिर्फ सोच कर देखिए, दर्जन भर लड़के लोगों को बड़े विचार बताते हुए, कहते हुए कि वे दृढ़ संकल्पित हैं जीवन में इन विचारों पर काम करने के लिए। हमारे खिलाफ 100 से भी अधिक संगठन थे जो भरपूर कोशिश कर रहे थे हमें उगने से पहले ही काट देने की। इस तरह लड़कों की टोली चलती रही। सब हंसते। सिर्फ जो चीज हमें हमारे चारों ओर के लोगों से मिली वो थी ठोकर और कड़वाहट भरे शब्द। बस यही सब। हाँ, हमें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। हमारे भोजन के लिए यहां वहां से एक आध रोटी मिल जाती। हम एक टूटे फूटे मकान में रहने लगे, जमीन के नीचे फुंकारते हुए कोबरा सांपों के साथ, क्योंकि वो सबसे सस्ता घर था। हम उस घर में गए और रहना शुरू कर दिया। ऐसे दिन भी होते थे जब अन्न भरने वाला मटका बिना किसी अन्न के दाने के खाली पड़ा रहता था। अगर भिक्षा मांगकर चावल इकट्ठा हो जाते तो नमक नहीं होता उसके साथ खाने के लिए।
कुछ दिनों तो सिर्फ चावल और नमक रहता। उबले हुए बीम्बा के पत्ते, चावल और नमक कई बार महीनों तक हमारा भोजन हुआ करते थे। मेरा ऐसा दुर्भाग्य आया, 10 साल बिना किसी आशा की किरण के साथ बीते और अगले 10 साल हर समय खराब बिगड़ती हुई तबीयत के साथ। कभी एक बार खाना मिलता 8 बजे शाम को, अगला 8 बजे सुबह, उससे अगला 2 दिन बाद और अगला 3 दिन बाद। कलकत्ता के पास रहते हुए मुझे सफलता के कोई आसार नजर नहीं आते। कलकत्ता में मेरे 2 भाई और मां रहती हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनका बहुत कठिन समय चल रहा है। कई बार उन्हें उपवास रखना पड़ता है। सब कुछ हड़पने की इच्छा से कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। ঘরেতে চাল বারণ তো বাবা, ওখানে খুঁজিস না। এই তো দাদা এলো বলে চাল আনবে, তরকারি আনবে, তখন আমি রান্না করে দেব। দেখবি কি ভালো করে তোরা দুজনে খাবি। সত্যি? হ্যাঁ সত্যি? সত্যি রে বাবা, সত্যি। কত রান্না করে দেবো তোদের, কত সুন্দর সন্দেশ মিষ্টি দাদা আনবে, তোরা খাবি, তারপর দুজনে মিলে ঘুরতে যাবি। मैंने इस आदर्श व्यक्ति को देख और समझ लिया है और फिर अंत में किसी भी चीज की शुरुआत करने में असफल हूं। यह मेरी गहरी पीड़ा है। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। मेरे गुरु मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तुम एक नायक हो, तुम्हारी एक झलक मात्र मुझे साहस से उत्साहित करती है। हाँ, मैं नायक हूं। मैं यह जगह छोड़ रहा हूं इससे पहले कि यह पत्र तुम तक पहुंचे। मेरी अपनी खुद की कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए और उन्हें गुप्त रहना चाहिए। इसने मुझे चलायमान रखा, हिमालय से केप कमोरिन तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। कई बार मैं मौत के जबड़ों में था, भूखा, पांव में छाले पड़े हुए, थका हुआ। कई दिनों तक मेरे पास खाने को नहीं होता और मैं और आगे ना चल पाता। यह सही है कि मैं कई बार बरगद के पेड़ के नीचे सोता, चावल के कटोरे के साथ जो मुझे किसी दयावान किसान ने दिया होता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई बार मैं राजमहल में महान राजाओं का अतिथि भी होता और दासी लड़की को नियुक्त किया जाता पूरी रात मेरे ऊपर मोर पंखों का पंखा हिलाने के लिए। मेरे पर्यटन के समय मैं एक निश्चित जगह पर था। वहां लोग भीड़ में एक साथ मेरे पास आए और मुझे उपदेश देने को कहा। You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. और लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात लगातार कहलवाया, बिना एक पल आराम दिए हुए। उन्होंने यह तक भी नहीं पूछा कि क्या मैंने भोजन खाया या नहीं। ये शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। Pandit ji, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. Tell me, Swamiji, why do you meet Rajas and Maharajas only?
Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swami, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में गरीब से गरीब के पास धर्म के बारे में उच्चतम विचार होते हैं। जो चीज से ये लोग ग्रसित हैं वो है जिंदगी के बारे में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक इच्छा। मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यही लोग मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि इस धरती पर ये सबसे सज्जन लोग हैं। सबसे बेहतरीन सैनिक जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से थे। मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है। ये लोग कभी भी धार्मिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाथ, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा, आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए। अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते हुए और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में, अपने हृदय की असीम गहराइयों से मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजूमदार की मुलाकात यहां हुई। पहले तो उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन जब शिकागो के लोग समूहों में मेरे पास आने लगे, तब उनके दिमाग में नासूर पैदा हुआ। उन्होंने मेरी झूठी निंदा की, ईसाई मिशनरियों से यह कहकर कि मैं कुछ नहीं हूं, झूठा, धोखेबाज हूं। और उन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं यहां आकर संत होने का एक ढोंग कर रहा हूं। और इन पादरियों ने इस देश में मिर्च मसाला लगाकर सबसे भयावह और झूठी बातें फैलाई मेरे बारे में। अखबारों में छापकर उन्होंने कई बुरी बातें फैलाई हैं मेरे बारे में। और कलकत्ता में लोगों को बता रहा है कि मैं यहां अमेरिका में पाप की जिंदगी बिता रहा हूं, खास तौर पर अपवित्र। भगवान उसका भला करे। मैं अमेरिका धर्म संसद में भाग लेने नहीं आया। कौन चिंता करता है इस धर्म संसद की? मैं 12 साल तक पूरे भारत में घूमा। मेरे देश के लिए काम करने का कोई रास्ता न मिलने पर मैं अमेरिका चला आया। मैंने शिकागो और अन्य शहरों में भाषण देना शुरू किया। हर हफ्ते मुझे 12 से 15 उपन्यास देने होते थे, कई बार उससे भी ज्यादा। मैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं आया हूं, यह तो मुझ पर थोपी गई थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपनी देश की रक्षा करने का साहस किया, और मैंने इस देशवासियों को ऐसे विचार दिए जिसकी वह किसी हिंदू से आशा नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वह अमेरिका के लोगों को बताएं कि मैं सचमुच सन्यासी हूं, कोई धोखेबाज नहीं, और मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ शब्द भी खर्च ना कर सके। ओह, आप महान हो मेरे देशवासियों, आप महान हो। मेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मैंने अपने देश को बहुत बहुत प्रेम किया। Swami? Swami, do Indian mothers really throw their babies to the crocodiles? Yes, ma'am. They threw me in. But like your fabled Yona, I got out again. आप में से कितने लोगों ने हिंदुओं की पवित्र किताबें पढ़ी और इस वजह से उन्हें खुद कुछ ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में? कृपया अपने हाथ उठाइए। और फिर भी आप हमें परखने का साहस कर रहे हैं। मैं हालांकि सीधे बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी मंशा अच्छी है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं यहां आपकी खुशामदी करने नहीं आया हूं, यह मेरा काम नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं चलन के अनुसार 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क में चर्च खोल लेता। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी गलतियों, कमियों और घमंडों को इंगित कर तुम्हें अपने आत्म से होकर
भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वह हर चीज जिसकी मूल में स्वार्थता है, एक तरफ प्रतियोगिता है और जिसका उद्देश्य केवल आनंद उठाना है, उसे अभी या बाद में खत्म होना ही होगा। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो यीशु की शरण में वापस जाएं। फटे पुराने कपड़ों में यीशु के साथ रहने को तैयार रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि उन स्थानों में रहना पड़े जहां वह है ही नहीं। हे भगवान, भारत में मेरा समर्थन करने के लिए अगर मेरे पास एक व्यक्ति भी होता, सही योग्यता और बुद्धि के साथ। मैं चिंता नहीं करता कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या कहते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, मेरी बूढ़ी मां है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और इस सब के बीच उसने यह भी सहन किया है कि वह मुझे भगवान और मानव सेवा के लिए दे सके। लेकिन उसे जब यह पता चलेगा कि उसका पुत्र अनैतिक जीवन बिता रहा है दूर देश में, जैसा कि मजूमदार कलकत्ता के लोगों को बता रहा था, यह काफी होता उन्हें मार डालने के लिए। मैं कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं कभी उनमें से एक हो सकता हूं। मेरी जगह तो हिमालय में है। मैं अपनी पूरी चेतना के साथ कह सकता हूं, हे भगवान, मैंने अपने लोगों के बीच अपार दुख देखा है और उसे दूर करने के लिए रास्ता खोजा और भरसक कोशिश की उसे क्रियान्वित करने की, लेकिन असफल रहा। आगे तुम्हारी मर्जी है। A huge locomotive has rushed on over the line. A small worm that was creeping on one of its rails saved its life by crawling out of the path of the locomotive. Yet, this little worm, so insignificant that it can be crushed in a moment, is a little something. While this locomotive, so huge, so immense, is only an engine, a machine. हर पल मुझे भारत से कुछ मदद आने की अपेक्षा थी, लेकिन वह मदद कभी नहीं आई। मैं हर पल अथाह पीड़ा में था। एक अखबार तक भी भारत से नहीं आया। महीनों दर महीनों मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। My religion is to learn. I read my Bible better in the light of your Bible. And the dark prophecies of my religion become brighter when compared with those of your prophets. एक आवाज तक नहीं। यह एक सजा है मनुष्य पर विश्वास करने की। मैंने अपनी जिंदगी में मदद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने की एक भयंकर भूल की थी और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। The voices of the sages of the Himalayas and recluses of the forests, the voices that came down to the Semitic races, the voice that spoke to Buddha. टेक्सास में उपन्यास देने के मुझे $900 मिले, जो 2700 रुपयों के बराबर थे। दूसरे उपन्यास के लिए मुझे $2500 मिले, जो 750 रुपयों के बराबर थे। लेकिन मेरे हाथ में केवल $200 आए। भाषण करवाने वाली एक बदमाश संस्था ने मुझे धोखा दिया। अंत में केवल $300 ही बचे। मैं अपनी नौका लहरों के हवाले कर चुका हूं। आने दो अब, जो कुछ भी आए। मुझे नहीं पता है आगे मैं क्या करूंगा। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে।
तने The Calcutta meeting held in the honor on 5th September 1894. The president was the chief nobleman of Calcutta, and the other man, Mahesh Chandra Nyayaratna, is the principal of Sanskrit College and chief of Brahmin and all of India. जय जगदम्बा। मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला। आखिरकार भारतीय लोगों ने इस प्रवादी को सम्मानित किया है। ओह, मैं कैसा बदमाश हूं। इतनी सी परेशानियों से ही मैं अपना विश्वास खो बैठा। लेकिन भगवान है, वो पिता है, माता है, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक अच्छा समाचार इतने दिनों के बाद। उन्होंने यहां कहा है मैं अद्भुत हूं, अनोखा, और इससे मिलती जुलती कई बकवास बातें हैं। लेकिन पूरी भारत की तरफ से मुझे बधाई दे रहे हैं, और मैं भगवान की करुणा पर एक बच्चे की तरह रो रहा हूं। Sorry, Swami. मैं दुखी हो चुका हूं भारत से आने वाले अखबारों के बंडलों से। मुझे उन्हें लिखना पड़ा है कि वो अखबार भेजना बंद करें। अब वो ये भी लिखने लगे हैं कि मैंने किस किस तारीख को क्या क्या खाया, और मैंने कैसे छींका। उनसे मदद की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता थी। अरे अड़सिंगा जी, अगर भारतीय लोग मुझे जबरदस्ती भारतीय खान पान से बांध कर रखना चाहते हैं तो उनसे कहो कि एक रसोइया भेजें, और उसको रखने के लिए थोड़े पैसे भी। मुसीबत के समय रत्ती भर मदद किए बिना ऐसे बेवकूफी भरे आदेश देना मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ अगर कोई धर्म प्रचारक ये बोले कि मैंने सन्यास के 2 शपथ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन तोड़ा है, तो उनसे कहो कि वो सबसे बड़े झूठे हैं। भारत से आए पत्रों में मुझे बार बार आगे जाने को लिखा होता है। मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस जाऊंगा, लेकिन मैंने इस देश को बहुत जान लिया है। मेरे विचार से मैं जल्दी यूरोप जाऊंगा, और कुछ महीनों इंग्लैंड में काम पूरा करने के बाद मैं भारत वापस चला जाऊंगा। फिर पूरी तरह कुछ सालों के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए अज्ञातवास में चला जाऊंगा। Sorry, Swami. It's a queer life, mine.
No rest. Rest will be my death. मुझे मरने के लिए भी पोस्ट I have no time even to die. I long for my rags, my sleep on the trees, and my food from my packing. Get up. I work, earn my own bread, and help my country. मेरी सफलता इस चर्चित शैली की वजह से है। एक शिक्षक की महानता उसकी सरल भाषा में छिपी होती है। सरलता एक राज है। मेरी भाषा का आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है, बहुत आम बोलचाल की, फिर भी बहुत मुखर। मेरे आदर्शों को कुछ शब्दों में ढाला जा सकता है, और वह है मनुष्य जाति को उसकी दिव्यता का ज्ञान कराना और उसे बताना कि कैसे इस दिव्यता का इस्तेमाल जीवन के हर एक पल में किया जा सकता है। धर्म संसार के लिए मृतप्राय मजाक के समान हो गया है। दुनिया को जो चाहिए वह है चारित्र्य। It is taught in the West that society began some 1800 years ago with the onset of the New Testament. But it is not true as regards the whole world. But why didn't your riches come to England to teach us? Because there was no England to come to. Would they come and preach to the forest? Oh, yes. मैं एक ऐसे दर्शन को फैलाना चाहता हूं जो संसार के समस्त धर्मों को आधार दे सके, और मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। मेरी शिक्षा किसी भी धर्म की शत्रु नहीं है। मेरी शिक्षा हमारी पौराणिक किताबों से निकाला गया है। मेरा खुद का निचोड़ है और मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का प्रकाश उस पर बिखेरा है। मैं कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं करता। जो कुछ भी मेरी शिक्षा में सर्वोच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, और अगर विचारशील मनुष्य उसे अपनाता है, उसका अपनाया जाना ही मेरा पारितोष है। Come on, George. Come on. Let me. Smells good. I made a dish. It's a delicious mixture of saffron, lavender, maize, cubebs, cinnamons, cloves, cream, cardamoms, lime juice, onions, almond, pepper, and raisins and rice. Please. My plan, as I was saying, is to start 2 centers in India. My interests are international, not Indian alone. At 20 years of age, I was the most unsympathetic, uncompromisingly fanatic. I would not walk on the footpath on the theatre side of the streets in Calcutta. But now, at 33, I can live in the same house with prostitutes and never would think of saying a word of reproach to them. Is it degenerate? Or is it that I'm broadening out into the universal love, which is the Lord Himself? Bold words, bolder deeds. That's what we want. I myself couldn't eat it. There was no asafoetida. Pardon me?
asafoetida, hing. Though it would have made it easier to swallow. I've been asked many times, Swami, why do you laugh so much and make so many jokes? I become serious sometimes when I have a stomachache. Sometimes people speak out to my face, Swami, you're a priest. You should not be laughing and making so many jokes like ordinary men. Such levity does not look good on you. To which I reply, we are children of bliss. Why should one look somber and miserable? If one who lives in Lord becomes miserable, what is the use of living in him? What is the use of such a God? Throw him overboard into the Pacific Ocean. We do not want him. Three more lectures and my London work are finished for this season. Dear Lord says, start for old India. And I obey. আমার মা ত্বম হি তারা আমি জানি গো দিন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা আমার মা ত্বম হি তারা। भारत वापस आने के पिछले दिन मेरे एक अंग्रेजी दोस्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, अद्भुत पश्चिम में 4 साल रहने के अनुभव के बाद अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है। स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। पश्चिम के लोगों के लिए मेरा संदेश वीरतापूर्ण था और उससे भी अधिक बेखौफ और वीरतापूर्ण संदेश है मेरे देशवासियों के लिए। हम सब भारत के पतन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस पर यकीन करता था, लेकिन अपने अनुभवों के उस स्थान पर खड़ा होकर मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। पिछले हजारों सालों और उससे भी अधिक समय से आपको हमेशा बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुमने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है।
अरे जब मनुष्य खुद से घृणा करना शुरू कर देता है तब समझो कि उस पर आखिरी प्रहार हो चुका है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है तो समझो कि उसका अंत करीब आ गया है। मैं यहाँ हिंदू जाति का एक छोटा नगण्य सा हिस्सा हूँ, फिर भी मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पर, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आपके देश का वासी हूँ। तुम जो वंशज हो सबसे यशस्वी ऋषियों के, जिन्हें संसार ने कभी नहीं देखा, ईश्वर की कृपा से जो हमें कमजोर मानते हैं और नीची दृष्टि से देखते हैं, वह मुझे अपना गुरु मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की, 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 स्वामी विवेकानंद की। भारत के युवकों, मैं आपको अपनी तरफ से एक जागीर दूंगा। गरीबों को सुधारने का संघर्ष, अज्ञानी और दबे हुए लोगों के प्रति दया, ये जागीर। इसी क्षण पार्थ सारथी के मंदिर जाइए, उस भगवान के पास जो गोकुल के मासूम ग्वालाओं का दोस्त था, हितैषी था, जिसने अपने बौद्धावतार में प्रतिष्ठित लोगों से दिए हुए न्योतों को ना मानकर एक वैश्या के घर गया ताकि उसका उद्धार कर सके। उस भगवान के सामने घुटने टेक कर बैठिए और ये प्रण कीजिए कि आप अपना सारा जीवन इन दबे हुए लोगों के उद्धार में और सेवा में समर्पित कर देंगे। जब मैं पाश्चात्य पहनावा पहन के घूमने वाले अपने देशवासियों को देखता हूं, तब मेरे मन में यह विचार आता है, शायद ये लोग भारत में रहने वाले गरीब, अज्ञानी, अनपढ़ और दबे हुए लोगों को अपना देश बंधु मानने के लिए शर्मिंदा हैं, इसलिए ऐसा पहनावा पहनकर घूम रहे हैं। पाश्चात्य लोगों ने तो हमें अब ये सिखाया है कि लंगोट पहनकर घूमने वाले ये बेवकूफ, गरीब, अशिक्षित, अज्ञानी करोड़ों भारतीय अनार्य हैं, इसलिए हमारे भाई लोग नहीं। अन्य लोगों के इन तुच्छ बातों पर यकीन करके, उनका तुच्छ अनुकरण करके, उनका सहारा लेके कमजोर हुए ओ मेरे भारत, इन दुर्गुणों के सहारे क्या तुम फिर एक बार नागरिकता की असीम ऊंचाइयों को छू पाओगे? आप उस समुदाय से क्या अपेक्षा रख सकते हैं जिस समुदाय ने सैकड़ों वर्ष सिर्फ इस गहरी समस्या की आलोचना में बिता दिया कि वे एक गिलास पानी दाएं हाथ से पिए या बाएं हाथ से? उस राष्ट्र की अवनति और क्या हो सकती है जहां उसके अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने रसोई घर के नियम कानून बनाने में अपनी प्रतिभा को सैकड़ों वर्षों तक व्यर्थ किया हो? इस आलोचना पर कि क्या मैं आपको छू सकता हूं या आप मुझे छू सकते हैं? इस दोष के लिए परिहार क्या है? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। अमेरिका में बिस्तर मुलायम और कोमल था, लेकिन ऐसी कई रातें थी जब मैं अपने खुद के लोगों की अपार गरीबी के बारे में सोचकर उन मुलायम और कोमल बिस्तरों पर सो नहीं पाया। मैंने जमीन पर कई रातें इन गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए काटी, बिना नींद और आराम के। अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं हिमालय पर्वत की किसी गुफा में समाधि की अवस्था में बैठ सकता हूं। फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा और मैं यहां क्यों? देश की गरीबी की झलक मात्र और उसके भविष्य का विचार मुझे और चुप रहने नहीं देगा। इसलिए महसूस करो। क्या आप महसूस करते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य ईश्वर और ज्ञानी पुरुषों की संतानें नृशंस और क्रूर पशुओं के पड़ोसी बन गए हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य लोग आज भी भूख से मर रहे हैं और असंख्य लोग कई सदियों से भूखे हैं? क्या यह आपको विचलित करता है? क्या यह आपकी नींद उड़ाता है? क्या यह तुम्हारे खून में रच बस कर तीव्र गति से तुम्हारी धमनियों में बढ़ता हुआ तुम्हारे हृदय की धड़कनों का अटूट हिस्सा बन पाया है? क्या इसने आपको लगभग पागल कर दिया है? क्या आप दुखी और बर्बादी के इस एक विचार से पूरी तरह भर चुके हैं
और आप अपना नाम, यश, कीर्ति, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी भूल चुके हैं। यही पहला कदम है देशभक्ति की ओर, सबसे पहला कदम। मैं अमेरिका में एक आदमी था और यहां दूसरा। वहां पहले उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, जैसा कि मैं नंगा घूम रहा हूं। और तो और मुझे एक अच्छे होटल में घुसने भी नहीं देते थे। यहां पूरा देश मुझे अपने अधिकारी के रूप में देख रहा है। यहां राजकुमार और महाराजाओं के वंशज मेरे पांव पड़ते हैं, पूजा करते हैं। यहां पूरे देश में प्रगति हुई है, जिसका अभी तक किसी ने निर्देश नहीं दिया। वैसे मैं ये जानकर खुश हूं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे बाल गुच्छों में सफेद रंग के हो रहे हैं और मेरे पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। वजन घटने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 20 साल की उम्र और बढ़ गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उपदेश देने वालों को जवान होना चाहिए? लोगों को बूढ़े व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है, हाँ। और वो ज्यादा सम्मानजनक भी होता है। फिर भी बूढ़े बदमाश सबसे बदतर बदमाश होते हैं, हाँ। ओ दाओ वाइट हेयर, ग्लोरी ऑन टू दी, हालेलुया। ये मधुमेह एक बंगाली संविधान पर निरंतर अनियमित मेहनत का नतीजा है। यह एक वंशानुगत शत्रु है और कुछ ही समय में ये मुझे पृथ्वी की ओर ले जाएगा। टी, चाय। सिर्फ मांस खाना और बिल्कुल पानी ना पीना एकमात्र तरीका हो सकता है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, समझे? कोई रोटी नहीं, चावल नहीं, कोई आलू नहीं, ना ही चीनी की जरा सी मात्रा कॉफी में। बदकिस्मती से मैं सर्कस के उस जोकर के समान हूं जो दूसरों को हंसाता है और खुद मेरा स्वास्थ्य भी वैसा ही है। मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगता, पर मैं अपनी आवाज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि 3000 लोग मुझे सुने और 2 घंटे के बोलने के बाद भी मैं एक अच्छी नींद ले सकूं। आओ आओ। मेरा भरोसा उन युवा शक्तियों में है जो आज्ञाकारी, असीम बुद्धिमान और दूसरों की सेवा करने में तत्पर है, जो अपना सारा जीवन मेरी योजनाओं को साकार करने के लिए तैयार हो, अपने देश की भलाई करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है जब आपको निर्धारित करना है कि आप भविष्य में अपने जीवन का क्या करेंगे। क्या ये यौवन की शक्ति और उत्साह थके हुए बुढ़ापे में रहेगा? सोचिए, अपने आप को जागृत कीजिए।
समय बहुत कम है, बहुत सारे महान कार्य अधूरे पड़े हैं। अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग करने का महान कार्य अधूरा पड़ा है। इसलिए एक लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए सारा जीवन बिताइए। मेरी योजना जो मैंने विकसित और केंद्रित की है भारत के लिए, वह यह है कि मैं भारत के आवाम, उसके आम लोगों तक पहुंच सकूं। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और इंसान पर भी। मैं पीड़ितों की मदद करने में विश्वास रखता हूं। मैं चाहूंगा कि बार बार जन्म लूं और हजारों दिक्कतें झेलूं ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं जिसका अस्तित्व है। वह एकमात्र ईश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वह दुष्ट मेरा ईश्वर, वह पीड़ित सभी जातियों का गरीब मेरा ईश्वर, उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसको पूजना चाहता हूं। दुनिया की यात्रा करने के बाद मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास जागा है कि कोई भी महान वजह या कदम बिना संगठन के सफल नहीं होगा। मैं जितना बड़ा हुआ, मैंने उतना ज्यादा पाया कि हर चीज पुरुषत्व में समाई है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक ऐसे तंत्र को हरकत में ले आऊं जो हर किसी के दरवाजे तक उदार विचारों को ले जाए। महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। शिक्षित महिलाएं ही बताएंगी कि उनके उद्धार के लिए क्या योजनाएं बनानी है। अपने स्कूल में पुरानी कलाओं का पुनरुत्थान करो। अपनी लड़कियों को अच्छा खाना पकाना सिखाओ, सिलाई करना सिखाओ, चित्रकला सिखाओ, रंगोली बनाना सिखाओ, गुड़िया बनाना सिखाओ। तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जीवन के कठोर समय में ये लड़कियां इस शिक्षा के द्वारा 4 पैसे कमा सकें। मैं ईश्वर या धर्म पर भरोसा नहीं करता जो एक विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और एक अनाथ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। धर्म वह है जो किसी किताब या उल्लेख पर निर्भर नहीं करता। मैं सभी धार्मिक शिक्षकों से आजाद बनने में विश्वास रखता हूं, उन पर श्रद्धा रखूं, पर उस धर्म को एक आजाद खोज की तरह देखूं। स्वामी जी, मैंने इस संसार के लिए काम किया और इस संसार ने बिना 1 पाउंड मांस लिए हुए मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। मैं गद्दे पर लेट नहीं सकता। ये सिर्फ बीमारी को बढ़ावा देते हैं। मैं घुटन महसूस करता हूं। मुझे आराम के लिए फर्श पर आकर लेटना पड़ेगा। যতক্ষণ বকবক করছে শরীর ততক্ষণ খারাপ হচ্ছে। ब्रिजेन, हाँ स्वामी जी। जेने राख। हाँ स्वामी। मिसेस जॉनसन की राय में कोई भी आध्यात्मिक इंसान बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा धूम्रपान करना पाप है। पर माँ का कोई भी काम जिसमें मुझे निपुण होना था, उन्होंने मुझसे करवाया और अब मुझे एक तरफ फेंक कर मेरी काया और अहम को तोड़ दिया है। शकले तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है कि मेरा कार्य संपूर्ण हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल बचे हैं।
मैं 40 की उम्र कभी नहीं देखूंगा। स्वामी जी। हे जगन माता, हे गुरुदेव, আমি বীর, আমি প্রার্থনা করি अब ज्यादा ध्यान मत दो, कैसे काया जी और गई। इसका काम हो चुका है, कर्म को इसे नीचे बहाने दो। किसी को इस पर हार चढ़ाने दो, दूसरे को इसे मारने दो। कोई तारीफ या दोष एक ही है। तारीफ या दोष एक ही है। इसलिए शांत और मजबूत बने रहो। सन्यासी, शांत और मजबूत बने रहो। ओम तत्सत। ओम। सिर्फ एकमात्र विचार मुझे तंग करता है, वो ये है, क्या मैं इस कम समय के अंदर अपने विचारों को असर दे पाऊंगा? मैं एक मरता हुआ इंसान हूं, मेरे पास खेल कूद के लिए समय नहीं है। मुझे अपनी संस्था को सही कर्मठ अवस्था में देखना ही है। और तब ये अच्छी तरह जानकर कि मैंने कम से कम भारत में तो अपने आप को मानवता की अच्छाई के लिए कर्म में झोंका, मैं आगे की परवाह किए बिना सो जाऊंगा। ये मेरी बीमारी है ना, मेरे अंदर एक घोर पाप जो मेरी छाती में छुप रहा है। विश्व की सेवा करने हेतु मैंने अपनी मां को दुखी मन से अनदेखा किया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कम से कम अपनी मां की सेवा करूं। उन्होंने मेरे कारण बहुत बहुत सहा है। मुझे उनके आखिरी दिन आरामदायक करने चाहिए। मैं अपनी मां के साथ रहना चाहता हूं। मैं उसके लिए एक प्यारा घर बनाऊंगा और मैं उसे एक पवित्र धार्मिक यात्रा पर ले जा रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए सिर्फ दुख ही लाया हूं। मैं उसकी एक इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे आखिरी दिन आसान बनाएगा और मेरी मां की भी। जय श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जय श्री रामकृष्ण परमहंस देव की এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, আর বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে। श्री रामकृष्ण ने मुझसे कहा था, नरेन, तुम जहां भी अपने कंधों पे मुझे ले जाओगे, मैं वहां चलूंगा और ठहरूंगा। इसलिए मैं खुद उन्हें अपने कंधों पर उठा नए मठ मैदानों में ले जा रहा हूं। यह जान लो कि श्री रामकृष्ण बहुतों की भलाई के लिए आने वाले लंबे समय तक अपने पांव जमाए रखेंगे। ব্রহ্মময় গেল মাদিন, ব্রহ্মময় গেল মাদিন, দেখা তো নাহি দিলে, শ্রীবদনে মামা বাণী পরি গঙ্গা সলিলে।
যদি আয় চলে, এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे। ये लड़का जो एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्मा, वो आज उन जमीनों में पूजा जा रहा है जो कि सदियों से पूजाओं के खिलाफ थी। मैं इस महान आदर्श को आपके सामने रख रहा हूं। इसे परखो, पर मेरे द्वारा नहीं। मैं तो सिर्फ एक कमजोर यंत्र हूं। इस पात्र को मेरी नजरों से मत परखने दो। हमें मायने ये नहीं रखना चाहिए कि परमहंस का प्रचार कौन करता है, मैं, तुम या कोई और, परंतु अब उन्हें मैं तुम्हारे समक्ष रखता हूं। और ये तुम्हारे द्वारा परखने के लिए है। अपने देश की भलाई के लिए तुम क्या करोगे जीवन के महान आदर्श का। अगर ये देश जागना चाहता है तो इसके लिए मेरे शब्द ले लो। इसे जोश के साथ इकट्ठा होना है इस नाम के साथ। ये एक तरीका है, एक अद्भुत सहज तरीका। क्या तुम जानते हो कि इस पल मैं क्या सोच रहा हूं? यह मठ सीखने वालों और आध्यात्मिक शिष्यों के लिए केंद्र बनेगा। हमें देखना है कि सभी मत, पंथ और प्रांतों के लोग ब्राह्मण से चांडाल तक यहाँ आए और अपने आदर्श प्रत्यक्ष रूप से पाएं। भूत से जो कुछ भी सीख सकते हैं उसे सीखेंगे, वर्तमान की रोशनी का आनंद लेंगे और जो भी भविष्य में आएगा उसके लिए अपने दिल की खिड़कियां खोल देंगे। नमस्ते। यह मठ जिसे हम बना रहे हैं ना, यह सबको शांति प्रदान करेंगे। चलिए चलिए। जिस तरह श्री रामकृष्ण परमहंस अत्यंत खुले विचार के थे ना, उसी तरह यह मठ भी ऐसे विचारों को पहुंचाने का एक केंद्र होगा। वैश्विक शांति की सुलगती हुई ऊंचाइयां जो यहां प्रदर्शित होंगी, पूरे विश्व में बाढ़ ला देगी। पता है, सबसे बड़ा त्याग प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना है। मैं तैयार हूं। अब मैं आजाद हूं, क्योंकि मैंने कर्म में अपने लिए कोई ताकत, हक या पद नहीं रखा है। मैंने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने रामकृष्ण की 20 साल से सेवा की है। गलतियों और सफलताओं से होकर मेरा हिसाब चुकता हो गया है। मुझे चाहिए आराम, कुछ खाना और कुछ किताबें। मैं हिमालय की चोटियों में एक छोटी जगह खरीदूंगा।
करीब 6000 फुट ऊंची शाश्वत अमर बर्फ के दृश्य के साथ। वहां झरने, एक छोटी झील, जंगल और फूल ही फूल होंगे हर जगह। इन सब के बीच मेरे पास एक छोटी कुटिया होगी और एक सब्जियों का बगीचा जिस पर मैं खुद काम करूंगा, और मेरी किताबें और लंबे समय में कभी एक आध बार किसी इंसान को देखूंगा। इस संसार की बर्बादी को मैं हो सकता है अपने कानों से सुनूं, लेकिन मैं परवाह नहीं करूंगा। किस तरह मैं जिंदगी भर बिना आराम के रहा हूं। एक जन्मजात खाना बदोश की भांति। आश्चर्य की बात है, मैं अपने लिए जो भी सपने देखूं, उनमें से कोई भी सपना कभी भी हकीकत में नहीं बदलता। जब भी मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचूं, चाहे वो जितना भी कठिन हो, हमेशा वो हकीकत में बदलता है। मैंने अपना संदेश पहुंचा दिया है और अब मुझे चलना चाहिए। एक बड़े पेड़ की छाया छोटे पेड़ों को बढ़ने नहीं देगी। मुझे जाना ही चाहिए, दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए। একলা ওয়াটার পানি বাড়ি নাম দেই জলে, আল্লাহ গড ঈসা মুসা কালী नाम বেঁধে बोले। ब्रजेन, कमिंग स्वामी जी। ये एक अच्छी पोशाक है। मठ में पुराने कपड़े पहन के नंगे पांव घूमता हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं मठ मैदानों से पानी बाहर निकालने के लिए गहरा नाला काटने में मदद करने से अभी अभी लौटा हूँ। बदकिस्मती से इस घनघोर बारिश में मेरा एक बत्तख मर गया। हमारा वो बूढ़ा सन्यासी है ना, वो बोल रहा था, बुझले এই কলিযুগে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। এখন তো বৃষ্টি হলে হাঁসদেরও ঠান্ডা লাগে, ব্যাঙরাও হাসি পায়। ब्रजेन, स्वामी जी, ये शरीर अब कभी ठीक नहीं होगा। मुझे इसे छोड़ना होगा, दूसरा शरीर लाना होगा ताकि मैं अपने आगे का काम पूरा कर सकूं। मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा हूं। मौत मेरे बिस्तर के पास आ चुकी है। मैं बहुत काम और खेल कूद कर चुका हूं। वो मेरे साथ साथ ये किताब भी पूरा विश्व घूम चुकी है। मैंने 7 साल पहले ये शब्द लिखा था। पढ़ो। Now to seek a corner. Now to seek a corner. And lay myself to die. And lay myself to die. Now to seek a corner and lay myself to die. अब तो किसी कोने में लेटकर मरना है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी का पुनरावलोकन करता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैं एक देश से दूसरे देश घूमा हूँ, लोगों को सिखाते हुए। हालांकि मैंने बदले में
उनके कुछ रोटी के टुकड़े खाने को लिए हैं। अगर मुझे पता होता कि मैंने कोई काम नहीं किया बल्कि सिर्फ अपने आप को सहारा दिया है तो मैं खुदकुशी कर चुका होता। आज मैं अपने ज़मीर से संतुष्ट हूं कि मैं एक निष्क्रिय स्वामी नहीं रहा। मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाता हूं और लिख पाता हूं। फिर भी ये पत्र लिखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मुझे डर है, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी पत्र ना हो। ये बात भली भांति जान लीजिए कि जो काम मैंने किया वो विवेकानंद के द्वारा किया गया काम नहीं है, बल्कि ये उस ईश्वर का काम है। अगर एक सेनापति सेवानिवृत्त होता है तो दूसरा उसकी जगह पर राजा के द्वारा पदस्थ किया जाना अनिवार्य है। যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে পারতো বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কালে এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে। श्री रामकृष्ण के हजारों श्रद्धालुओं में से कोई ना कोई मेरी ही तरह उभरेगा जो मेरी तरह बनेगा और मुझे समझ पाएगा। আমার কালো রেশমা মা কি। हो सकता है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाऊं। मैं एक गंदे इस्तेमाल किए हुए कपड़े की तरह इस शरीर को छोड़ दूंगा। विवेकानंद की कभी कमी नहीं होगी। अगर विश्व को जरूरत होगी तो हजारों करोड़ों विवेकानंद पैदा होंगे। नायक उठ, अब और सपने नहीं। मृत्यु ने तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ दिया है, अब भी डर नहीं। जो मैंने अब तक नहीं किया है, युद्ध में से भागना, क्या वो आज होगा? हे शिव महादेव, मेरी नैया दूसरे छोर पर ले चलो। आखिरकार मैं कौन हूं? वो लड़का जो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की बातों को
तन्मयता से सुना करता था बरगद के पेड़ के नीचे। वही मेरा असली व्यक्तित्व है। कर्म और क्रियाएं, अच्छा करना और अन्य ऐसी बातें सब एक भेष है। अब वापस मुझे वह आवाज सुनाई दे रही है, वही पुरानी आवाज मेरी आत्मा को उत्साहित कर रही है। मेरे गुरु की आवाज पुकार रही है, मैं आ रहा हूं गुरुदेव, मैं आ रहा हूं। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, महाराज, 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 महाराज। वो शिक्षक, वो गुरु, वो नेता, वो अध्यापक गुजर गया। वो लड़का, वो शिष्य, वो सेवक पीछे छूट गया।
Come in front of your mat. Bring your feet together. Join your palms. Close your eyes. We'll begin with Om chanting followed by opening mantra. Take a long breath in. Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Swatma Sukha Bodhe Nishreyase Jangalikayamane Samsara Hala Hala Mohashantye Abahu Purushakaram Shankhachakra Shidharinam Sahasra Shirisam Shvetam Pranamami Patanjalim. Bow your head down, being thankful to Lord Patanjali for this beautiful system of yoga practice of Ashtanga Vinyasa. Now very softly open your eyes, drop your hands down. Let's face forward, taking one foot away from the front of the mat, keeping your feet together. Spread your toes, grip the toes on the mat. Then try to keep your knees soft and squeeze your thighs gently. Now lift your chest upward, push your shoulders strongly down. Fingers straight facing down, press your fingers on each other. And push your head gently back, chin down. Gaze your tip of the nose or look at the floor. We'll take 3 Ujjayi breath here. So breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Surya Namaskar A. Ekam. Inhale. Raise your hands overhead. Palms together. Gaze your thumbs. Stretch high. Do exhale. Soft knees. Bend forward. Palms next to feet. Bow your head down. 3. Inhale. Raise your head forward. Look forward. Chatwari. Strong hands. Step back or jump back. Lower down into Chaturanga or lay down. Slide forward. Pancha. Inhale. Pull your heart forward. Chin up. Chin down. Shut. Exhale. Raise your hips super high. Flip your feet. Now first look at your hands. Adjust your hands aligned, fingers wide, grip the fingers. 1. Then try to turn your shoulders wide and towards the knees. 2. Keep your chin slightly in and keep your ribs slightly inward, looking to the navel. 3. Then if you want to stretch more, press your heels gently on the floor. 4. 5. Now lift your heels, shift your weight on hands, look forward, bend the knees. Sapta. Inhale, jump forward, head up. Asto. Exhale, bow your head down to the shin bone. Nava. Inhale, stand up, raise your hands overhead, gaze your thumb. Samasthiti. Exhale. Round 2. Ekam. Inhale, Urdhva Vrikshasana. Due. Exhale, fall forward, soft knees, Uttanasana, head down. 3. Inhale, head up, Ardha Uttanasana. Chatwari. Strong hands, jump or step. Chaturanga Dandasana. Pancha. Inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Shut. Exhale, push on your hands to lift your hips high. Adho Mukha Svanasana. Breathe in long and slow Ujjayi breaths. 1. Keep your chin down, gazing towards your navel. 2. Try to keep your fingertips strong. 3. If you want to lift your toes off to stretch more, you can. 4. 5. Shift your weight forward on your hands, bend the knees. Sapta. Inhale, jump feet together, head up. Asto. Exhale, head down to the shin. Nava. Inhale, stand up, raise your hands as high as you can, palms together. Samasthiti. Exhale, third round. Ekam. Inhale, palms together, lift higher your hands.
Do exhale, hinge as much as you can, head towards your shin, lift your hips high, head down. 3, inhale, push on your hands, head up. Chatwari, lean on hand, jump back to Chaturanga. Then slide forward, Pancha, inhale, up dog, look up. Shut, look down first, push on your hands, lift your hips higher, flip your feet, keeping your feet hip distance apart, and stay. 1. Now try to push your palms and your feet towards each other if you want to engage your abs. 2. And try keeping your face relaxed. 3. Make sure your inner palm is strong on the floor. Don't lift your inner palm off. 4. 5. Now look forward, shift your weight. Sapta, inhale, jump or step, feet together, head up. Asta, exhale, head down to the shin. Nava, inhale, push on your feet, stand up, raise your hands higher, gaze your thumb. Samasthiti, exhale, round 4th. Ekam, inhale, Urdhva Vrikshasana. Dve, exhale, Uttanasana. 3, inhale, Ardha Uttanasana. Chatwari, exhale, Chaturanga Dandasana. Pancha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Shut, exhale, Adho Mukha Svanasana. Hold for 5 slow breaths or minimum 3 breaths. I'll count for 5. 1, 2, keep your chin close to throat. 3, slightly keep your ribs inward, don't let your chest fall down. 4, 5. Now lift your heels high, look forward first. Sapta, inhale, jump into Ardha Uttanasana. Asta, exhale, Uttanasana. Nava, inhale, push on your feet to stand up. Raise your hands, gaze your thumb. Samasthiti, exhale, last round. Ekam, inhale, upward tree pose. Dve, exhale into forward fold, head to the knees. 3, inhale, half forward fold. Chatwari, exhale, low plank. Pancha, inhale, upward facing dog. Shut, exhale, downward facing dog and hold. Try breathing through your throat. 1. Make sure your hands are strong. 2. Try to keep your face relaxed. 3. And feel the breath in your whole back of the body. 4. 5. Lift your heels, lean on your hands. Sapta, inhale, half forward fold. Asta, exhale, full forward fold. Nava, inhale into upward tree pose. Samasthiti, exhale. Surya Namaskar B, bend the knees, push your hips back and down. Raise your hands, inhale, gaze your thumb. Do exhale, belly on the thigh, head down, lift your hips high. 3, push on your hands, head up. Chatwari, jump or step into Chaturanga. Pancha, inhale for Urdhva Mukha, chin up. Shut, exhale into Adho Mukha Svanasana. Turn your left foot inward, right foot forward. Sapta, inhale for Virabhadrasana. Asta, hands back to the floor, take your leg back. Chaturanga Dandasana. Nava, inhale, Urdhva Mukha. Dasha, exhale, Adho Mukha Svanasana. Turn your right heel to the left foot forward. Ekadasha, inhale, Virabhadrasana. Dvadasha, exhale, hands back to the floor, leg back into Chaturanga Dandasana. Triyodasha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Chaturdasha, exhale, Adho Mukha Svanasana. Stay for 3 to 5 breaths. Try slowing down your breath. 1. And breathe through your throat all the way till your perineum. 3. If you want to stretch more, lift your toes, press your heels and push your hands forward strongly. 4. And 5. Lift your heels, lean on your hands. Bend the knees, Panchadasha, inhale, head up. Shodasa, exhale, bow your forehead on your shin.
Bend the knees, Saptadasha. Inhale into chair pose. Samasthiti. Exhale, round 2. Bend the knees, Ekam. Inhale, Utkatasana. Dve. Exhale, fall down, hip high, Uttanasana. 3. Inhale, push on your hands, head up. Chatwari, lean on hands, jump or step into Chaturanga. Pancha, slide forward, pull your heart forward and up, Urdhva Mukha. Shut, chin down, suck your heart, raise your hips high, Adho Mukha. Turn your left heel to the right, right forward, Sapta. Inhale, Virabhadrasana. Asto, exhale, hands down, leg back, strong hands, Chaturanga Dandasana. Nava, inhale, pull forward and up, Urdhva Mukha. Dasha, exhale, push on your hands forward, higher hips for Adho Mukha. Bring your right heel in, left forward, Ekadasha, inhale, for Virabhadrasana. Dvadasha, exhale, hands down, keep your hands strong, leg back, lower down. Triyodasha, inhale, pull forward and higher, press your feet. Chaturdasha, exhale, raise your hips higher, keep your ribs tucked in and gaze towards your navel. If the gaze to the navel too much, just keep your gaze free. Focus on the sensation on your whole back of the body. 1. To stretch your thighs more, push your belly to the thigh and try to create a back bend arch on your back if you want. 3. If it hurts a lot, don't force too much. Keep your spine slightly in rounded cat position, like you crunch your spine. 4. One more slow breath. 5. Now shift your weight forward. Panchadasha, inhale, jump, land soft, feet together, head up. Shodasa, exhale, bow your head down. Saptadasha, bend the knees, inhale, raise your hands, gaze your thumb. Exhale into Samasthiti, third round. Ekam, inhale into chair pose. Dve, exhale into forward fold. 3, inhale, half forward fold. Chatwari, exhale into low plank. Pancha, inhale for up dog. Shut, exhale into down dog. Turn your left heel in, right forward. Sapta, inhale, warrior A. Asto, exhale, hands down, leg back, Chaturanga, low plank. Nava, inhale, up dog. Dasha, exhale into down dog. Bring your left foot forward, turn your right heel in. Ekadasha, inhale for warrior A. Dvadasha, exhale, hands down, strong hands into low plank. Triyodasha, inhale for upward facing dog. Chaturdasha, exhale into downward facing dog and hold. Now try not to force too much, rather be in the position and notice that to be in the position, what kind of effort your body makes itself to allow your face to relax and eyes soften. 3. Make sure your inner palms are flat and fingertips are pressing. 4. And 5. Lift your heels, look forward. Bend the knees, Panchadasha. Inhale, half forward fold. Shodasa, exhale, full forward fold. Saptadasha, bend the knees. Inhale for chair pose. Exhale into Samasthiti, fourth round. Ekam, inhale. Utkatasana, gaze your thumb. Dve, exhale, bend forward. Gaze your nose or navel. 3, inhale, third eye gaze or forward. Chatwari, jump back, look in front of your mat or tip up the nose. Pancha, inhale, look first at your navel, then pull your heart, chin up, gaze your third eye. Bring your gaze to navel, to your hips, raise your hips higher, and then gaze your right foot. Bring your right foot forward, and from there, raise your hands overhead, gazing your thumbs overhead. Asto, exhale, hands back to the floor, take your leg back, gaze to the tip of the nose for Chaturanga. Nava, inhale, move your gaze to navel, to your chest, to your nose, to third eye. Bring your gaze to nose, to navel. Lift your hips higher, shift your gaze to left foot. Bring your left foot forward, Ekadasha, inhale, raise your hands, gaze your thumbs. Dvadasha, exhale, hands back down, gaze to toe, toe back, gaze to tip of the nose, lower down. Inhale, Triyodasha, third eye gaze from your heart to the nose, to the third eye. Chin down, Chaturdasha, exhale, gaze your navel, pushing your hips high.
and try keeping your gaze fixed to the navel or tip of the nose. If the gaze is too stressful, try relaxing your eyes. Don't tense the gaze. 2. Try to push your armpits towards the floor, but keep your chest lifted away. 3. Try to turn the back of the elbows to the floor, but keep your inner palms still flat. 4. Try to push your feet backward and feel that intense stretch on your thighs. 5. Now raise your heels, lean on your hands, look forward. Bend the knees, Panchadasha, inhale, third eye gaze. Shodasa, exhale, gaze to nose or navel. Bend the knees, Saptadasha, inhale, 4 chair pose, gazing your thumb. Exhale, gaze to the tip of the nose, last round. Ekam, inhale, bend the knees into Utkatasana. Dve, exhale, fall forward into Uttanasana. 3, inhale, head up, strong hands if possible. Chatvara, lean on hands, jump or step. Chaturanga Dandasana. Pancha, inhale, pull your heart forward and higher, Urdhva Mukha. Chin down, shut, exhale, suck your heart, raise your hips high, flip your feet. Step your right foot forward and then push on your foot to raise your hands for warrior, gaze your thumb. Asto, exhale, hands down, squeeze your hands towards each other for Chaturanga. Then pull your hands towards your feet as you drag for Urdhva Mukha. And exhale, Dasha, tuck your ribs in, push your hands forward for Adho Mukha, bring your left foot forward. Then push on your left foot. Inhale, raise your hands, gaze your thumb. Dwadasha, exhale, hands down, squeeze your hands to each other, elbows in for Chaturanga. Then pull your hands towards your feet, drag forward, Urdhva Mukha. Bring your chin down, suck your heart, strong hands pushing your hips high for Adho Mukha. And hold for 5 counts, 3 to 5 breaths. If you seem to be out of the breath, this is the posture to calm down your breath. Try keeping your breath from your throat down towards your perineum. 3. If you want to perform Mula Bandha, try to push your navel out but keep your ribs in. 4. And 5. Lift your heels, lean forward, bend the knees, jump or step, feet together, head up. Shodasa, exhale, bow your head down. Saptadasha, bend the knees, inhale, raise your hands, chair pose. Samasthiti, exhale, standing sequence, first posture, Padangustasana, hands on waist, jump or step your feet hip distance apart, bend forward and grab your toes. You can bend the knees, inhale, lift your chest up, chin up, straight elbows, then tuck your ribs in first, then exhale, bend the elbows wide and pull the crown of the head to the floor. Now pull your elbows towards your heels, back and down. Now pull your armpits towards your knees also. 2. Keep your neck relaxed, face soft. 3. Try to lift your sitting bones as high as you can, but keep your ribs tucked in. 4. And 5. 3. Inhale, halfway lift up. Straighten the elbow, head up. Padahastasana. Place your palms under your feet. Ekam. Inhale, long spine, look forward. Do exhale, wide elbows. Pull the crown of the head towards the floor. Now keep your back broad from your back. 1. Try to pull your armpits towards your knees, elbows wider. 2. Feel the stretch in your back of the thighs and your calves. 3. Try to stand on your hands but resist with your hands. 4. 5. 3. Inhale, raise your head up, stay here, release your hands. Exhale, jump in Samasthiti, feet together. Trikonasana, step your right leg 3 feet, hands side, feet parallel. Inhale. Now look to the right hand, turn your right foot out, Dve. Lean on the right, exhale, grab your big toe or grab your ankle, gaze your left hand, Hasta Grahi Drishti. 1. Now keep your toes pressing on the mat. 2. Try to keep your sitting bones down and keep your ribs tucked in. 3. To twist, try to open up your heart to the ceiling. 4. And try to keep your legs pressing strong against each other. 5. Look down, slightly bend the knee, push the floor. Inhale, come up, right foot turns in. Turn your left foot out, look at the left hand, Chatwari. Exhale, follow your gaze with hand, grab the toe. Now look at your right hand.
hold 5 counts. 1. Keep your ribs in and try to breathe in your abdomen deep. 2. Keep your ribs slightly in, tailbone tucked down, and then twist and open up your heart. 3. Reach your right hand as high as you can. 4. And imagine a strong long line from your tailbone to crown of the head. 5. Look down. Pancha. Inhale, come up. Turn your left foot in. Parivrata Trikonasana. Turn your right foot out. Dve. Twist and exhale. Bring your left hand outside your foot. Reaching your right hand, gaze to the right palm. Hasta Grahi Drishti. Now push your both feet strongly against each other, away from each other, and feel that stability. 2. Pull your right shoulder away from the floor and right hand toward the ceiling. 3. Keep your toes, especially of your front foot, pressing. 4. And keep your tailbone tucking down. 5. Look down. 3. Inhale, push the floor to come up. Turn your right foot in. Turn your left foot to the front. Chatwari. Twist your whole trunk and exhale. Hinge and bend. Drop your right hand down. Reaching your left hand high to the ceiling. Gaze your left hand. If you want to keep your gaze in front, straight sideways or down to the floor, you can. First focus is to balance in the posture. 2. Second is to focus on twisting. 3. And third focus is looking at your hand. You can work on individually. 4. One more slow breath. 5. Look down. Pancha. Push. Inhale. Turn your left foot in. Samasthiti. Exhale. Gaze your tip of the nose. Parshva Konasana. Take your right leg 4 feet. Inhale. Hand side. Turn your right foot out. Bend the right knee. Look at the right hand. Dve. Exhale. Drop the right hand next to your right foot. Reach your left hand overhead straight. Now push your both knees away from each other. 1. Try to keep your right knee pushing on your right shoulder. 2. Now push your right shoulder towards your right hip. 3. Reach your left hand far away from your left foot. 4. 5. Look down. 3. Inhale. Pushing the floor, come up, right foot turns in. Look at the left hand. Turn your left foot out. Bend the left knee. Chatwari. Exhale. Left hand down. Right hand overhead straight. And remember those cues. Strongly push your knees away from each other. Push your left knee on left shoulder and twist yourself towards the ceiling while your ribs are tucked inward. 3. Try to turn your right armpit down towards your chin. External shoulder rotation. 4. 5. Look down. Pancha. Inhale. Come up. Turn your left foot in. Parivrata Parsha Konasana. Turn your right foot out. Bend the right knee. Dve. Exhale. Twist. Take your left shoulder to right knee. Drop the left hand on the floor and twist yourself, reaching your right hand overhead straight. Now try to crunch your spine on the right side. Twist and crunch. Imagine you are bringing your left shoulder to the right hip while you are pulling your right hand far overhead away from your right hip. 3. To twist more, push your knee against your shoulder. You can join the palm and then press your palms. 4. 5. Look down. 3. Push. Inhale. Turn your right foot in. Left foot turns to the front. Bend the left knee. Twist. Chatwari. Exhale. Right shoulder blade trying to touch the left knee. Flattening the right palm. Reaching your left hand far overhead. If you are balanced in this position, lift your chin up. Turn your head up and gaze your palm. Very good. Again, try to squeeze your right shoulder towards the left hip. Imagine you want to twist yourself using your abs. 3. Now push your left knee on your right shoulder to twist more and reach your left hand far overhead. 5. Look down. Pancha. Inhale. Come up. Turn your left foot in. Samasthiti. Exhale. Prasarita Padottanasana. Hands on waist. Ekam. Step your right leg 3 to 4 feet. Inhale. Head chest up. Do exhale. Bend halfway down. Place your palms down between feet, shoulder distance. Then push the floor. Inhale. Head up. Lean some weight on your hands.
3 knee, exhale, bend the elbows backward and try to go down while you resist the floor. Imagine that you want to go down while your elbows are bending and pushing the floor at the same time. It's like how you do push-ups or chaturanga. 3, keep your shoulders broad, wide. Pull your shoulders away from ear towards your knees. 4, and elbows towards each other, elbows wrist in one line. 5, Chatwari, inhale, halfway lift up, look forward. Exhale here, hands on waist, tuck your ribs in, slightly bend the knee, push the floor. Inhale, stand up, hold. Exhale here. Ekam, inhale, hands side. Dve, exhale, hands on your waist. Inhale, open up your heart, raise your chin up. 3 knee, exhale, hinge from the hip as much as you can. Try to bring your heart to the floor and then let your chin reach the floor, and at the end allow your crown of the head reach the floor. The goal is not to touch the floor but to go as far as you can go. Also, you shouldn't force yourself too much to stretch. The stretch should not become painful. Stay here for one more slow long breath. Now look at your navel, slightly bend the knee, push the floor to stand all the way up. At the end, straighten your head forward and exhale first. Pancha, inhale, hands go side. Full vinyasa, exhale, hands on waist. Variation C. Inhale, open up your arms sideways. Turn your shoulder inward, take your hands, exhale, Dve. Pull your hands down, raise your heart, chin up. 3 knee, exhale, hinge from the hip as much as you can. If you want to keep your knees soft, you can. Now try to keep your wrists together and reach your hands away from your hips towards the floor overhead. You don't want to hurt your shoulders in this position, and try to keep your elbows in your control. Don't over straighten them. Now try to lean slightly on your toes so the gravity takes you lower. 4, 5, slightly bend the knee, push the floor. Inhale, stand all the way up, hands as it is. Exhale here. Pancha, inhale, hands side. Exhale, hands on your waist. Variation D. Ekam, inhale, raise your heart, chin up. Dve, exhale, halfway fall forward. Grab your toes, raising your toes, big toes with index, middle and thumb. Inhale, look forward, press your toes down. 3 knee, exhale, bend the elbows wider, wider, wider and pull the head deepest into the forward bend. Now try to keep your elbows towards your shin bone and pull them wider and towards your knees. Keep your neck long, keep your face relaxed. 3, lift your shoulders away from ear and try to push yourself strongly towards each other with feet. Now, Chatwari, inhale, halfway lift up. Stay here. Exhale, first hands on waist, slight knee bend. Push the floor. Inhale, stand up. Samasiddhi, exhale. Parshvottanasana. Join your palms at the same time. Step your right leg back 3 feet. Now inhale, chest chin up. Turn your right foot to the back. Twist your whole trunk and Dve. Exhale. Bring your navel on your right thigh. Try to rest your center of the chest on your knee and try to bring your chin towards your shin bone, gazing your second big toe or big toe. Now you want to keep your elbows high and press your palms gently towards each other and try to push your left hip forward, right hip backward so the stretch is on outer right thigh. 4, one more slow breath. 5, subtle knee bend, push the floor. Inhale, turn your right foot in, stay. Turn your left out as you exhale, twist your whole trunk and exhale, bring your navel on the thigh, heart on the knee, chin on your shin. To keep your knee safe, push your left foot forward, right foot backward without moving. Imagine you want to tear the mat apart. And now push your right hip forward, left hip backward. That will stretch your more outer thigh and balance with inner thighs. Stay. 4. Try keeping your breath soft. 5. Subtle knee bend. Push the floor. Inhale, left foot turns in. Samasiddhi, exhale. Utthita Hasta Padangusthasana. So shift your weight on the left foot and now lift your right knee or right leg straight, grabbing your right big toe with your index middle.
Inhale. Dwe, bend the elbow wide and exhale, bring your chin down. Now focus more on balance, then on lifting the leg and use your thigh also to hold the leg. 4, one more count. 5, 3, inhale, stand tall. Chatwari, lift the leg high and take it outside. Now if you can look to the left side, Parshva Drishti, hold. Try to point your toes away and slightly bend the right elbow. Good. 3. Can you turn your heel forward and toe backward? Very good. 4. 5. Pancha, inhale, leg back in front of you, stay. Shut, exhale, bow your head down. Sapta, inhale, both hands on your waist. Let's hold for only 3 counts. Elbows back, chest up, chin back and down. 2. Try to point at the mound of the foot but toe towards you. 3. Exhale, release. Left side, shift your weight on right leg. Asto, inhale, left leg up, grab the knee, chest, chin up. Now exhale, bend the elbow, try to bring your chin towards your shin or just bow your head down. 1. Try keeping your left elbow bent sideways and downward. Face relaxed. 3. Try to point your toes forward. Very good. 4. 5. Dasha, inhale, stand tall. Ekadasha, lift your leg high and take it sideways out. Now look to the right side, Parshva Drishti. Try keeping your left elbow slightly bent and try to point your toes away from you if possible. 3. Try to turn your heel forward, toe backward, external hip rotation. 5. Dwadasha, inhale, leg back in front of you. Triyodasha, exhale, bow your head down. Chaturdasha, both hands on your waist, hold the leg as it is and try to keep your bottom leg straight and strong. Now gently tuck your ribs in but lift your heart up. Then pull your elbows back, shoulders down, head back, chin down. 3. Exhale, release. Feet together, Samasthiti. Ardha Baddha Padma Uttanasana. Take your right leg up into lotus. Grab your right big toe with your right hand. Ekam. Dwe. Exhale, bend forward. Place your left hand next to your left foot and try to bring your chin towards your shin. Try looking at your big toe if you can, or just look at your shin bone or floor. Now keep 10 to 20% weight on your left hand also. 3. Try to pull your right shoulder to the right knee and lift your right knee slightly sideways up. 4. Very good. Be careful of your left knee. Don't lock your knee. Keep it soft. 5. 3. Inhale. Only head up. Hold. Exhale here. Softly bend the knee. Chatwari. Inhale. Stand up. Hold. Pancha. Exhale. Release. Left side. Shut. Take your left knee higher. Turn it out. Grab your big toe. Inhale here. Sapta, exhale, bend forward gently with control. Place your right hand next to your right foot. If you can keep your heel of your palm and heel of the foot in one line, great. 2. Now try to bend the right elbow backward and lower yourself towards your foot. Pull your left shoulder to the left knee and slightly left knee sideways up. 4. And 5. Inhale, Asto, hold, head up. Exhale here first, bend the right knee, Nava, inhale, stand up slowly, find the balance. Samasthiti, exhale, feet together. Utkatasana, Ekam, inhale, raise your hands overhead, Urdhva Vrikshasana. Do exhale, bend forward into Uttanasana, try to keep the maximum hinge and tuck your ribs in. 3, push the floor, head up, lean on hands. Chatwari, step or jump, Chaturanga Dandasana. Pancha, drag forward, look at your heart, then pull your heart forward, chin goes up, gaze your third eye. Shut, exhale, chin down, tuck your ribs in, your heart in, push your hips high, foot downward facing dog. Utkatasana, chair pose, lean on your hands, bend the knees, jump your feet together between palms, bend the knees, raise your hands, inhale, Sapta, hold. For 5 counts, 1, squeeze your glutes gently, pull your heart higher towards the ceiling. Palms gently pressing on each other. 3.
Can you pull your shoulders forward but hands back? Shoulders forward, hands back. Good. 4 and 5. Hands to the floor. Asto. Try to lift your feet off gently. Nava. Chaturanga Dandasana. Dasha. Inhale. Urdhva Mukha. Ekadasha. Exhale. Adho Mukha Svanasana. Virabhadrasana. Turn your left foot in, right forward. Sapta. Inhale for Virabhadrasana. Try to lower your hips down. Pull your heart over your knee and pull your chest up. Pull your hands backward. Gazing your thumb if you can. Stay. 3. Now try to turn your left hip forward as much as you can without moving your left foot. 4. 5. Directly switch the side. Turn your right foot in. Asto. Turn your left out. Inhale. Left hands as it is. Sink on your left knee. And try to keep your left knee towards the center of your toes. Stay. 2. Try to pull your middle back forward and up. And try to reach your hands to the ceiling and then backward to the wall. Very good. 4. Wonderful. Be aware of that back muscle activation and your quads burning. 5. Warrior B. Nava. Exhale. Hands sideways down. Gazing your left hand, legs don't move. Try to twist your trunk a little bit towards the right side without moving your left knee. 2. Press your fingers on each other and try keeping your shoulders low but hands and elbows in the level. 4. Now tuck your ribs slightly in, tailbone down. 5. Dasha. Exhale. Left foot turns in, right foot out. Gazing your right hand. And try to keep your hips square maintained, not falling forward, and avoid leaning. Remain in the center. 2. Now imagine that you're pulling your both knees away from each other and that creates stability. 4 and 5. Ekadasha. Hands to the floor. You can jump or step back in high plank. 2. Chaturanga Dwadasha. Triyodasha. Inhale. Urdhva Mukha. Chaturdasha. Exhale. Adho Mukha Svanasana. Dandasana. Shift your weight forward. Cross legs. Sit down into Dandasana while stepping or jumping. Straight legs forward. Now hands next to your hips. Pull your toes towards you first. Press your thighs on the mat. Then gently press your feet towards each other. This is your perineum engagement. Lift your heart away from your thighs. And push your shoulders slightly down. Push your head back and chin down. And let's perform only 2 Ujjayi breaths here. 1, 2. Paschimottanasana A. Grab your big toes. Asto. Inhale. Raise your head, chest up. And Nava. Exhale. Bend your elbows wide and bring your chin down and forward, looking in front towards your toes. Now try to bring your elbows to the floor. If you want, pull your toes towards you. This is going to put a lot of stretch. And if you want to stretch gentle, point your toes forward and keep your knees soft. And now breathe in your upper back to lower back. 3. Imagine your lungs are 3-dimensionally expanding backward. 4. 5. Dasha. Inhale. Head, chest up. Stay. Exhale, place your hands next to your thighs and let's try to lift your whole body or at least your legs off the floor and hold. If you can lift your whole body with your hips off, try. Exhale, relax down. Paschimottanasana B. Grab your feet from on top, finger facing down. Asto. Inhale, pull your heart, chin up. Now exhale, bend your elbows wider, bring your chin forward. Imagine you want to move your nose towards your toes. Keep your shoulders wide. And pull your armpits down to the floor and elbows forward and wider. Very good. Feel that nice pull on your lats, your back of the muscles. 3. Don't stress your face. Calm down your face with your breathing and awareness. 4. And 5. Dasha. Inhale. Straight elbow, head up, look forward and up. Exhale. Hands next to your thighs. Ekadasha, try to lift your only legs or whole body if you can. Hold for 3 seconds or 1 breath.
And exhale, come down. Paschimottanasana C. Grab your heels from outside, or you can do D by grabbing your wrist in front of your heel. Inhale, raise your heart, chin up. Now exhale, go into deepest forward bend. If you want, rest your nose between your shin bone. If you are a beginner, cannot pull too hard, keep your knees soft and look forward. If you feel this is intense, point your toes. 3. If you want to stretch more, pull the toes, press your thighs on the mat and pull your chin towards your ankles. 4. One more slow breath. 5. Dasha. Inhale, straight elbow, head up. Exhale, Dandasana. Ekadasha. Inhale, try lifting your whole body up, cross the legs. Dwadasha, step or jump. Chaturanga Dandasana. Triyodasha. Inhale, Urdhva Mukha, pull your heart, chin up. Chaturdasha, exhale, go into Adho Mukha Svanasana. Counter pose, Purva Uttanasana. Cross legs, lean forward, then jump or step crossing your legs into Dandasana, straight legs forward. Now lay down on your elbows back and replace your elbows with your palms, finger pointing forward. Now look at your navel, tuck your ribs in, and then inhale, Asto. Raise your heart super high. Try to raise your chin to the ceiling, don't hang your head. Now point your toes to the floor. If you feel it is cramping, lift your toes but press your mound of the foot still down. Good. Turn your thighs inward. 3. Good. Now can you pull your hands and feet towards each other and feel your calves, hamstring, glutes. 4. 5. Nava. Exhale. Slowly come into Dandasana. Dasha. Lift yourself with cross-legged. Ekadasha, Chaturanga Dandasana. Dwadasha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Triyodasha, exhale, Adho Mukha Svanasana. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Lean on your hands, Sapta. Jump with cross leg, you can step, sit down with straight legs. Now bend your right knee completely to the chest. Then drop your right knee down and then place your heel to the navel and grab your right big toe with your right hand. Grab your left foot with your left hand. Asto, inhale, lift your chest, chin up. Nava, bend your left elbow, bring your chin towards your shin bone, gazing your left big toe. Great. Now try to press your right knee on the mat and pull your right shoulder lower to the floor to square your shoulders. Wonderful. 3. The stretch is your left under thigh and a little bit of your outer glute. 4. 5. Nava. Inhale, head, chest up, stay. Release your right leg, come in Dandasana. Exhale, hold. Bring your knees to the heart, cross legs, Dasha. Inhale, up. Ekadasha, Chaturanga Dandasana. Dwadasha. Inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Left side, lean on hands. Chaturdasha, cross legs. Sit down, straight legs forward, Dandasana. Bend your left knee, lotus pose, drop your knee down. Grab your left big toe with your left hand behind your back. Right foot big toe with your right hand. Inhale, pull your heart, chin up. Panchadasha, exhale, chin down. And then try pulling your left shoulder lower. Very good. And try to breathe in your whole upper back to your back of the thighs. 3. Keep your shoulders down but elbows pulling forward and down. 4. 5. Shodasa. Inhale, head up, straight elbow, stay. Dandasana. Exhale, stay. Saptadasha. Lift up. Ashtadasha. Step or jump. Chaturanga Dandasana. Ekona Vinshati. Inhale, Urdhva Mukha. Pull your heart forward, chin higher. Exhale, Vinshati for Adho Mukha Svanasana. Tiryang Mukha Ekapada Paschimottanasana. Shift your weight forward, cross legs. Sit into Dandasana with straight legs. Now fold your right leg back. Grab your left foot with both the hands. Grab the left hand wrist with your right hand. Then inhale, look forward. Asto, exhale, bring your chin on your shin and gaze your big toe if you can. Now while you pull your navel closer to the thigh, keep your ribs tucked away from your knee while your heart is still pulling forward.
3. Can you keep your armpits lower to the floor and pull them towards your knees? Good. 4. Elbows bending wide and down. Amazing. 5. Nava. Inhale, straight elbow, head up, stay. Release yourself into Dandasana. Exhale, take your time. Dasha. Inhale, lift up. Ekadasha, step or jump chaturanga. Dwadasha. Inhale, Urdhva Mukha. Open up your chest really well. Triyodasha. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Left side. Chaturdasha. Lean forward. Cross legs. Sit down with straight leg first. Now bend the left knee, flatten your left shin bone. Grab your right heel with right hand with left. Then inhale. Panchadasha. Bend the elbows wider. Pull the elbows down and look at your big toe. Padograhi Drishti. Stay. 2. Try to pull with your hands but push with your foot. And try to square your hips by dropping your left sitting bone down if you can. 4. And breathe in your whole upper back. 2. Lower back. 5. Inhale, straight elbow, head up. Dandasana. Exhale, release. Saptadasha. Inhale up. Ashtadasha. Chaturanga Dandasana. Now Vinshati. Inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Counter this pose really well. Vinshati. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Janu Shirsasana A. Sapta. Inhale. Lean on hands. Cross legs. Sit down. Dandasana. Bend your right knee to right hip and then drop your right knee down as if in tree pose. Grab your left foot. There should be 90 degrees angle at the hip. Inhale, chest up. Now twist your trunk forward and exhale. Bring your forehead on the knee. Try to perform cat pose, rounding your back. If you feel this is uncomfortable for you, then you keep your spine tall. If you're a beginner, keep your spine straight. Stay. 2. Now this posture should feel twisting and bending. So you'll feel stretch on your right side of the trunk and left thigh. Try to keep your right knee pushing back and right thigh pressing down. Very good. 4. Feel the stretch in your lat, including your QL under to your love handles. 4. Try not to stress your face. 5. Inhale, head chest up, stay. Dandasana. Exhale, right leg forward. Dasha. Inhale, up, hold. Ekadasha. Chatwari Chaturanga. Dwadasha. Inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Left side, lean on hands. Chaturdasha. Cross legs. Sit down straight. Dandasana. Bend your left knee closer to the heel. Drop it down. Then grab your right heel with your right hand with left. Inhale, head up. Panchadasha. Exhale. Tuck your ribs in and bow your forehead on your knee or shin bone. Now press your left knee back and down on the mat while your right thigh is pressing on the floor as well. Now try to pull your left shoulder down and forward. Square your shoulders with spiral movement. 3. Keep your armpits wide and down. 4. And try to keep your face soft. 5. Inhale, shoulders are head up. Dandasana. Exhale, release. Saptadasha. Inhale up. Ashtadasha. Chaturanga Dandasana. Ekona Vinshati. Inhale, pull your heart higher and forward. Vinshati. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Janu Shirsasana B. Sapta. Lean forward, cross legs, sit down into Dandasana. Again, bend your right knee, drop it down. This time, sit on your right heel while shifting your weight forward and then grab your left foot with your both hands. Inhale first. Now, Asto, exhale. Bring your forehead on the knee again. Round your back, cat pose. Let me see that cat. Now, square your shoulders with spiral spine. Very good. A complicated posture. Twisting with forward bend with slight side bend. Wonderful. Stay. 2. While you round your back, the tension may move to your face. Try relaxing your facial expressions. 4. And breathe through your throat. Remember, deep to your perineum. 5. Inhale, Nava, head up, hold. Dandasana, release your right leg, exhale. Dasha, inhale, up. Ekadasha, Chaturanga Dandasana. Dwadasha, inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale, Adho Mukha Svanasana.
Left side, Chaturdasha, lean on hands, jump with soft legs straight forward, Dandasana. Bend your left knee, drop it left knee down, sit on your left heel. Make sure your left foot toe is pointing forward. Grab the foot, inhale, look forward. Panchadasha, tuck your ribs in, bow your head down, shoulders wide and broad. Pull your armpits down to the floor. Wonderful. Stay. 1. Now keep your sitting bones gripping back and down as if you are doing PPT. If you remember this. Good. 3. And try to breathe in all those sensations where you feel the stretch. 4. And 5. Inhale, shoulders are head up. Dandasana, exhale, release. Saptadasha, inhale up. Ashtadasha, Chaturanga Dandasana. Ekona Vinshati, inhale, Urdhva Mukha. Vinshati, exhale, Adho Mukha Svanasana. Janu Shirsasana C, lean on hands, cross legs, Sapta, inhale, sit forward, straight leg, Dandasana. Now bend your right knee, try to rotate your heel towards your chin. Curl your toes, toe pointing down. And now grab your left foot. Your knee, try to bring your right knee in the level of left knee to try to lessen the angle. So right knee a little bit more forward in 60 degrees. Then grab the foot, inhale here. And exhale, bow your forehead down, tucking your ribs in. Wonderful. Stay 4, 5. 4. Remember, your face is index of mind. Keep your face soft so your mind is calm through your breath also. 2. 1. Inhale, Nava, head up. Release your right leg, release the pose, Dandasana, exhale, take your time. Dasha, inhale up. Ekadasha, Chaturanga, Dandasana. Dwadasha, inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale, Adho Mukha, left side, lean on hands, Chaturdasha, inhale, cross legs, sit down into Dandasana. Drop your left knee down, bending it, and turn your heel to the chin, curl your toes and mount up the foot down, grab your right foot. Knee should be in one level, 60 degrees in. Grab the foot, inhale, look forward, grab the right hand wrist if you want. Panchadasha, exhale, tuck your ribs, forehead on the knee. And be aware of that nice round of your back where the sensation travels superficially on the whole spine back to your heel. This is one of the good postures to stretch even your sciatic nerve, including your muscles. And the sensation could really help you become more aware and use your awareness as the energy prana to travel with that stretching sensation. 2. 1. Inhale, raise your head up, stay. Exhale into Dandasana, left leg forward. Saptadasha, inhale up. Ashtadasha, Chaturanga Dandasana. Navavinshati, inhale, Urdhva Mukha. Vinshati, exhale, Adho Mukha Svanasana. Marichi Asana A, Sapta, inhale, lean forward. Cross legs, sit down. If you want, go in Dandasana first. Now bend the right knee completely close. Keep one palm distance. So basically knee and foot one line. Now take your right hand forward, turn your shoulder inward and grab your left hand wrist with your right hand. Inhale, chest chin up. Now exhale, try to bring your chin down. Pull your left foot toe towards you. Now imagine you want to move your nose towards your toes. Very good. Stay. Push your shoulders downward away from your ear. And imagine you want to straighten your elbows. Squeeze your shoulders on the knees. Wonderful. 3. Keep your left thigh pressing on the mat. 4. And try to stand upon your right foot. 5. Inhale, Nava, head up, hold. Exhale, release for Dandasana. Dasha, cross leg, inhale up. Ekadasha, Chaturanga. Dwadasha, inhale. Triyodasha, exhale, left side. Chaturdasha, lean forward, cross legs, sit down, Dandasana. Bend your left knee, one palm distance, grab your left. Keep your left armpit as forward. Grab your right hand wrist, inhale, look up and forward. Panchadasha, exhale, bring your chin on your shin, gaze your big toe if you can. And try to press your right thigh on the mat, trying to stand up on the left foot. 3. Now push your shoulder against the knee
and squeeze your knee inward. 4. Amazing. 5. Inhale, raise your head up, hold. Exhale into Dandasana, left leg forward. Saptadasha, inhale up. Ashtadasha, Chaturanga Dandasana. Ekonvinshati, inhale. Vinshati, exhale. Marichyasana B, Sapta, inhale, cross legs, sit down into Dandasana. Take your left leg in lotus and then bend your right knee facing up. Now, take your right armpit in front of your right knee, grab your left hand rest behind your back, inhale here. Asto, exhale, bring your chin or forehead down and stay. Again, try to squeeze your shoulders towards your knee. Keep your right knee pushing inward towards your ribs. 3, 4, 5. Inhale, head up. Release the posture. Exhale, Dandasana. Dasha, cross leg, lift up. Ekadasha, Chaturanga Dandasana. Dwadasha, inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale, Adho-mukha, left side. Chaturdasha, lean forward, cross legs, sit down, straight, Dandasana, exhale. Right leg lotus, bend the left knee facing up. Grab your left shin bone with your left armpit, grab your right hand with your left hand. Inhale here. Panchadasha, exhale, chin or nose to the floor. And squeeze, try to keep your armpit as close as possible to the shin bone. Great. 2. You are trying to stand on the left foot but sit on the right hip at the same time. Great. 4. One more slow breath. 5. Inhale, head up, hold. Release the whole posture into Dandasana. Exhale here. Saptadasha, inhale up. Ashtadasha, Chaturanga Dandasana. Ekonvinshati, inhale, Urdhva Mukha. Vinshati, exhale, Adho Mukha Svanasana. Marichyasana C, Sapta, inhale, cross legs, sit down, Dandasana, bend the right knee directly if you can. Keep your right heel as close as possible to your hip. Twist to the right. Take your left shoulder to the right knee. Crunch your spine and then turn your shoulder in. Grab your right hand wrist. Now look back. Great. Now can you shift your weight forward so your right hip can be off? Wonderful. And pull your left foot toe towards you in two-door C flexion. Great. 3. And try to breathe slower. While the resistance is there, it will improve your diaphragmic strength. 4. And 5. Look forward. Great. Release your hands. Cross legs directly. Asto. Inhale up. Nava. Chaturanga Dandasana. Dasha, inhale. Ekadasha, exhale, left side. Dwadasha, lean forward, bend your knees, cross legs. Sit down with right leg straight, left bent. Twist to the left, right shoulder to the left. Crunch and twist, remember. And turn your right shoulder as much in as possible. Grab the left hand wrist, twist and look back. Now don't twist your head too much. Keep your head in comfortable twisted position. Great. Parshva Drishti. 3. Lift your body forward towards your right leg. So your left hip is kind of off. 4. One more slow long breath. And 5. Look forward. Cross leg directly here. Triyodasha. Inhale up. Chaturdasha. Chatwari. Panchadasha. Inhale. Urdhva Mukha. Shodasa. Exhale. Adho Mukha Svanasana. Marichyasana D. Lean forward. Cross legs, sit down, Dandasana, left leg lotus, bend your right knee, twist to the right side. If you can't grab the hand, just twist by pressing your elbow. Otherwise, focus on turning your shoulder in and keep your shoulder as low as possible. Now look back, Parshva Drishti. 2. Push your right knee outward to resist against your left shoulder to twist more. Very good. 3. Pull your right shoulder backward, away from the left. 4. Amazing. And try slowing down your breath. Ujjayi breath. 5. Look forward. Release your hands and directly cross your legs. Asto up. Nava. Chaturanga Dandasana.
Dasha, inhale, Urdhva Mukha. Ekadasha, exhale, Adho Mukha, left side. Dwadasha, lean forward, cross leg into Dandasana. Right leg lotus, bend the left knee and twist to the left side. Try to take your right armpit outside the left knee and rotate your shoulder in. Try grabbing your hands behind and look back. 2. Try to push your left knee away from your right knee. 3. 4. 5. Look forward, release your hands, cross legs. Dwadasha up. Exhale, Chaturanga Dandasana. Inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Shodasa. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Navasana. Sapta. Inhale, cross leg. Lean forward, sit straight into Navasana. Feet together, hands by your shoulders. Point your feet forward, but toes, only toes towards you. Good. 3. 4. Keep your chest higher. 5. Knees to chest, cross legs. Asto. Inhale, up, hold. Exhale, down. Sapta. Inhale, Navasana. Hold here. Try lifting your heart higher. Stay. Head back, chin down. 2. Keep your feet gently pressing on each other. 3. 4. Try slowing down your breath, Ujjayi breath. 5. Cross legs. Asto. Inhale, up, hold. Exhale, down. Sapta. Navasana. Third time. We'll do it 5 times. 2. 3. Keep your chest higher. Legs up. 4. 5. Cross legs. Lift your hips up. Asto up. Hold. Exhale, down. Sapta. Navasana. 4th time. Keep your shoulders down but chest higher. Great. 2. 3. 4. 5. Cross legs. Asto. Inhale up. Exhale, down. Navasana. Sapta. Last time. Keep your toes higher towards your head and away from you at the same time. 3. Be aware of that burning which gives you strength later. 4. One more breath. 5. Cross legs. Asto. Up. Hold. Nava. Chaturanga Dandasana. Dasha. Inhale. Ekadasha. Exhale. Adho Mukha. Bhuja Pidasana. Sapta. Jump forward. Try directly jumping. Cross your legs in front or jump in Malasana. Then try crossing your legs. Asto. Exhale. Try to touch your head or chin down or you can stay there. Hold. Very good. 2. If possible to touch your chin, try that. If not, head is also okay. 4. 5. Nava. Inhale, head up, straighten the legs. Try. Bakasana. Dasha. Ekadasha. Chatwari Chaturanga. Dwadasha. Inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Kurmasana. Sapta. Inhale, lean forward, cross leg, jump into the same Bhuja Pidasana position. Then sit down, exhale. Now, take your legs forward and take your shoulders under the knees, hands wider. Straighten your legs forward, sideways forward and look forward. Amazing. Stay here. 2. If possible to press your knees on your shoulders, lift your heels off. Great. 4. And 5. Now bring your legs closer overhead. Try cross your feet. Asto. And take your head under the heels. Take your hands behind and try to grab your fingers or wrist. Amazing. Stay here. 2. 3. Be careful of lower back. 4. Breathe in your upper back deep.
5. Release your hands only. Now try to place your hands down. Lift yourself up into firefly Nava. Dasha into crow pose. Ekadasha Chaturanga Dandasana. Dvadasha, inhale Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale Adho Mukha Svanasana. Garbha Pindasana Sapta, inhale, lean forward, cross legs, sit down into Dandasana. Now take lotus and place your hands through the lotus. And now bring your palms towards your chin and hold. Keep on squeezing your knees to the shoulders and engage your abs to do that. 3. Shoulders down but chest slightly lifting up. 4. And 5. Hands on your head, forehead, and now fall back. Make 5 to 9 circles on the right to left to come forward. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Try to make 5 circles max or 9 max, not more than that. Inhale, exhale, inhale, exhale. Alright, Kukutasana. Lean forward and lift yourself on your hands. Inhale, hold. 4, 5, 4. Gaze your nose. 3, 2, 1. Exhale, release. Now cross leg or maintain lotus. Lift up. Dasha, inhale. Ekadasha Chaturanga Dandasana. Dvadasha, inhale Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale Adho Mukha Svanasana. Baddha Konasana Sapta, inhale, jump, cross legs, sit down, Dandasana. Bring your both feet to the hips, bend the knees wide, sole of the feet together, grab your toes, inhale, Asto, bring your chin to the floor in front of your toes, exhale, look forward and stay. Gaze your tip of the nose and push your knees down as much as you can. Try not to lift your hips off. Stay. 3. Grip your sitting bones on the mat and then pull your heart and chin forward. Good. 4, 5. Nava. Inhale, straighten your spine, sit back up. Now open your feet like a book and place your crown of the head between feet. Round your back. Asto. Exhale and head between your feet. Try to perform cat. Tuck your ribs in, pull your sitting bones back, round your back as much as you can and place your elbows on your thighs inside on the groin. Pull your elbows back and down as well. Stay. 3. Round your back more, protraction of shoulders. 4. Good. And 5. Nava. Inhale, lift your chest up, chin up and gaze your third eye. Lock your elbows. Stay here for 3 breaths more. 2, 3. Cross legs. Dasha. Inhale up. Ekadasha Chaturanga Dandasana. Dvadasha. Inhale. Triyodasha. Exhale. Upavishta Konasana. Sapta. Inhale. Jump forward. Sit down in Dandasana. Now keep your legs wide outside the mat. Grab your toes. Inhale. Asto. Bring your chin down. Exhale. Look forward. Elbows down towards your knees and hold. 2. Keep your shoulders away from ear. Pull your shoulders down to the floor but chest forward and up. 4, 5. Nava. Inhale. Lift your head, chest up. Now lean back. Try to release your legs. Lean back. Grab your toes or feet from out and hold here. Chest up. Look up. Antaradrishti, look up toward the ceiling or just infinite. Great. Stay. 2, 3, 4, 5. Cross legs. Dasha. Inhale up. Ekadasha Chaturanga Dandasana. Dvadasha. Inhale. Triyodasha. Exhale. Supta Konasana. Sapta. Inhale. Jump through. Sit down in Dandasana. Now slowly lay down. Exhale. Feet together.
Asto, inhale, take your legs overhead in halasana as if. Grab your toes and open your legs outside the mat and stay. Lift your hips higher, try to balance on your shoulders and shrug your shoulders to the mat. Great, stay. 3. Try to straighten the knees, pull your toes towards you, point your heels away. 4. 5. Nava, inhale, come up, find the balance for a second. Dasha, exhale, try to go down, chin to the floor. Ekadasha, inhale, head up. Exhale, Dandasana. Ekadasha up. Dwadasha, Chaturanga, Dandasana. Triyodasha, inhale, Urdhva Mukha. Chaturdasha, exhale, Adho Mukha, Svanasana. Supta Padangustasana. Sapta, inhale, jump through, sit in Dandasana. Feet together. Asto, exhale, lay down. Now raise, place your both hands on your thighs first. Raise your right hand up. Asto, inhale, grab your big toe with your right hand. Nava, exhale, bend the elbow, bring your chin to the shin if you can and gaze your big toe. Try to bring your elbow towards your knee. Amazing. And use your abs also to lift up. Wonderful. Keeping your left knee straight and down. 3, 4, 5. Dasha, inhale, head down, stay. Ekadasha, pull your leg towards you and outside towards the floor. Try to take your toe to the floor. Look to the left side without disturbing your left hip. Head on the floor. Great. 3, 4. Try to keep your right elbow slight bent. 5. Dwadasha, inhale, leg back in front, stay. Triyodasha, exhale, chin to the shin. Chaturdasha, inhale, head down only. Now only release your legs. Panchadasha, exhale. Now release your hand also. Now left hand up, Shodasa. Left leg up, grab the left big toe. Saptadasha, chin to the shin. Gaze your big toe if you can. Hold. Right hand goes straight down to the knee. Right hand, stay. 3. And use your abs to crunch more. Great. 4, 5. Ashtadasha, head down. Ekona Vinshati, pull your legs sideways downward and look to the right. Parshva Drishti, try to keep your heel facing up and toe pointing downward. Amazing. 2, 3, 4, 5. Vinshati, inhale, leg in front. Eka Vinshati, exhale, chin to the knee. Dvaya Vinshati, inhale, head down. Triyo Vinshati, release your leg down, then your hand on your thigh. Chakra Vinyasa, Chatur Vinshati, inhale, exhale. Pancha Vinshati, inhale, Urdhva Mukha. Shad Vinshati, exhale, Adho Mukha. Let's walk forward in front of the mat, stay. Ubhay Padangustasana. Sapta, inhale, lean on hands, cross legs. Sit down into Dandasana. Now look at the navel, lay down slowly, exhale. Asto, inhale, take your legs overhead, toes pointing back, grab your big toes. Now Nava, inhale, come up, find the balance on your hips. Straighten your legs forward, point your toes away, chin, chest up. And stay. 2, very good. 3, keep your toes pointed. 4, try straightening your spine as much as you can. 5, cross your legs, exhale, down. Inhale, up. Ekadasha, Chaturanga Dandasana. Dwadasha, inhale. Triyodasha, exhale. Urdhva Mukha, Paschimottanasana. Lean forward. Sapta, inhale, cross legs, sit down, Dandasana. Exhale, lay down. Only lay down first. Asto, inhale, take your legs overhead. And this time grab your heel or feet from outside. Now Nava, inhale, come up, find the balance on your hips. You can bend the knees. Now straighten the legs and bring your chin
to the shin bone. If you can look at the big toe, try. If not, bow your forehead. Good. Stay. 3. Wonderful. 4. Try to go closer to thigh and higher toward the toe. 4. One more breath. 5. Only head up. Inhale, straight elbows. Dasha. Stay. Exhale, hands down, cross legs. Ekadasha, up. Dwadasha, Chaturanga, Dandasana. Triyodasha, inhale, Urdhva Mukha. Chaturdasha, exhale, Adho Mukha, Svanasana. Setu Bandhasan, bridge pose. Sapta, inhale, lean forward, cross legs, sit down, Dandasana. Exhale, lay down. Now bend your knees slightly, heels touching, and keep your toes pointing outward. Prepare. Now fish pose, 2, bridge pose, Nava. Inhale, come into the position. If you want to do the regular one, you can. Lift your hips higher and straighten the knees. Take your hands on your chest. Stay. 2. Wonderful. 3. 4. 5. Exhale, down. Straighten your legs. Chakra Vinyasa. Ekadasha, inhale, exhale, Chaturanga. Dwadasha, inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale, Adho Mukha. Let's walk forward, form down dog. Urdhva Dhanurasana. Sapta, inhale, lean forward. Cross legs, sit down in Dandasana first. Exhale, lay down. Bend the knees, hands over your shoulders. Asto. Nava. Inhale, rise up and hold. Now try to push your feet forward and take your heart beyond your hands. Stay. 2. Very good. Squeeze your fingertips strongly and try to turn your armpit towards your face. Very good. 4. 5. Touch your crown of the head down and walk your hands towards your feet. Nava. Inhale, up, hold. Try to shift your chest over your hands. Look between your palms if you can. If it is too much, just look back. 3. 4. 5. Crown of the head down. We'll do it last time more. Walk your hands closest to your feet. Nava. Inhale, rise and stay. Shift your weight more to the hands. Wonderful. Stay. 2. 3. 4. 5. First bring your chin up, then slowly touch your back of the head, upper back, straighten your legs forward first. Chakra Vinyasa, Dasha. Inhale, exhale, Chaturanga. Inhale for Urdhva Mukha. Triyodasha. Exhale, Adho Mukha, Svanasana. Walk forward. Paschimottanasana. Sapta. Inhale, lean forward, cross legs, sit into Dandasana. Now place your hands from on top. We do Paschimottanasana B. Inhale, raise your head, chest up. Exhale, bow your head down and go into the deepest forward bend. Now don't force yourself. Now to actually make it feel a counter pose, I want you to tuck your ribs in, squeeze your abs and try to perform cat pose and hold. 3. We'll do for 8 breath. 4. Keep your face relaxed and feel that lower back release and stretch. 5. Breathe in your whole upper back, lower back, in your love handle. 7. And 8. Inhale, head up. Exhale, Dandasana. Ekadasha, inhale up. Dwadasha, Chaturanga Dandasana. Triyodasha, inhale. Chaturdasha, exhale. Sarvangasana sequence. Sapta. Inhale, lean forward, cross legs, sit down, Dandasana. Lay down, exhale. We'll do 5 breath relaxation. Separate your feet, Shavasana position for 5 breath. And allow your body to calm down, preparing for inversion positions.
One more slow, long breath in and breathe out. Now gather yourself, feet together, straight legs, hands by your thighs. Look at the navel, press on your hands, inhale, Asto up. Raise your hips higher, support your back for shoulder stand and lift your hips higher, higher, higher. Try to bring your elbows closer and closer to each other, palms supporting your back and gaze your tip of the nose and feel that lock in the chin. Try to keep your head slightly lifted backward and hold. We stay 8 breaths, 3, 4, keep your toes pointing up, toes down but feet, mound of the feet up, 7, turn your thighs inward, and 8. Now without moving your back, only hinge from the hip to drop your legs slowly down, overhead halasana, Asto, exhale. Now interlock your fingers behind and wiggle your shoulders closer, squeezing your shoulders closer. Try keeping your elbows on the mat and stay. Curl your toes towards you if you want, or you can point the toes, whichever you are comfortable with right now. 3. Now don't round your back. Try to keep your spine as straight as possible. Good. 4. Keep on shrugging your shoulders on the mat. 5. 6. 7. 8. Karnapidasana. Drop your knees down to your ears, squeezing your knees softly against your ear. Asto. Hold. 1. Remember, keep your elbows down. Now you can round your back if you want. Try to keep your knees down, but push your ribs away from your chin. 3. If it is too much pressure on knees, keep your toes tucked, knees away from floor. 5. 6. 7. 8. Support your back for shoulder stand, Asto. Inhale, raise your legs up for shoulder stand first. Lotus pose, Urdhva Padmasana. Perform Padmasana, lotus pose. Then place your hands on your knees, Nava, and hold. Find the balance. Keep your weight more toward the head so you don't fall back. Now you are pushing your knees away from you while your knees are pressing on your hands. It will create space in your lower back. 3. Keep on shrugging your shoulders down. 4. 5. 6. 7. 8. Pindasana. Drop your shin bone on your nose. Now take your hands around your thighs. Interlock your fingers if you can. If this is too much pressure on your neck, place your hands on your back and stay. Stay there. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Exhale, slowly release the pose. Maintain the lotus. Use your hands and release your upper back, middle back, lower back, and knees all the way to the floor. Now grab your toes and try to perform fish pose, Asto. Inhale, press on your elbows, raise your heart, grab your toes now. And now squeeze your shoulders backward towards each other and pop up your heart as far forward as possible. 2. We'll do 5 breaths. Can you press your head on the mat strongly? 3. Let's do 8 breaths for counter. 4. Remember, keep on pressing your head down and squeezing your shoulders. 5. 6. 7.
8. Uttanapadasana, release the lotus, come in boat pose with your legs and remain in fish with your back. Join your palms and reach your fingers to the toes and press your head on the mat and keep on lifting your chest up, head down to the floor. 2. If this is too much pressure on the lower back, knees can be soft. 4. 5. 6, 7, 8. Exhale, release. Chakra Vinyasa, Dasha. Inhale, exhale. Dwadasha, inhale. Exhale into Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Shirsasana. Drop your elbows down from table or down dog. Interlock your fingers. Asto. Inhale, come into headstand, pressing your elbows, feet together. And hold for 15 breaths. Keep your thighs turned inward. Keep your mound of the foot facing up, but toes slightly curled to avoid cramps. 3. Keep your thighs turned inward, remember. Separate your heels slightly. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Urdhva Dandasana. Come halfway down with your legs and hold for 8 breaths. You can point your toes or curl your toes towards you. Stay. 2. We stay 8 breaths. Keep your elbows strong. 3. 4. Continue with Ujjayi breath. 5. 6. 7. 8. Inhale, come back up in headstand. Now slowly come back down into child pose. Stay for a couple breaths. Allow that heaviness from your head to relax. Let your whole forehead rest completely. Alright, extend your hands forward. Dasha, Chaturanga Dandasana. Ekadasha, inhale. Dwadasha, exhale. Adho Mukha Svanasana. Padmasana, Sapta, inhale. Cross legs, sit down in Dandasana. Make lotus, half lotus, or just cross your legs. Now from lotus, if you can grab your hands to the toes for Baddha Padmasana. Now Asto, bring your chin on the floor for Yoga Mudrasana and stay. If you cannot grab your toes, just grab your wrist. If you couldn't make lotus, just cross leg and forehead or chin down. Stay. 5 breath. 3, 4, 5. Inhale, Nava. Sit back up. Maintain the lotus. Release your hands in Chin Mudra in front of you. Lock straight elbows. And now keep your chest lifted up. Navel in, head back, chin down. Pull the perineum up and throw it down gently. And continue with Ujjayi breath with that gentle partial contraction. Gazing at the tip of the nose. Nasa Grahi Drishti.
Okay, Utpluti, floating lotus. Place your hands next to your hips. Nava, inhale up and hold. For 15 counts, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can do inhale, exhale, deep and fast if you want. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exhale, release. Now undo your legs, so keep them as it is. Cross leg, lift yourself up. And Ekadasha Chaturanga Dandasana. Dvadasha, inhale, Urdhva Mukha. Triyodasha, exhale, Adho Mukha Svanasana. Let's complete the vinyasa here. Chaturdasha, inhale into Ardha Uttanasana. Jump step, feet together, head up. Exhale, bow your head down into Uttanasana. Now push the floor to stand up without raising your hands. And join your palms. Exhale. We'll do closing mantra. We start with Om, begin and end with Shanti, followed by closing mantra. Breathe in slow and long. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisha gau brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Bow your head down, being thankful to Lord Patanjali for this beautiful practice of our well-being. Being thankful to yourself, to your energy in this wonderful time where you have been totally meditative with yourself. And this beautiful practice of Ashtanga, known as Yoga Chikitsa, has brought you health and well-being. Very softly release your hands down, back in Samastiti. Let's do last vinyasa for Shavasana. Ekam, inhale, Urdhva Vrikshasana. Dve, exhale into Uttanasana, bow your head down. Trini, inhale, head up. Chatwari, Chaturanga Dandasana. Pancha, inhale, Urdhva Mukha. Shat, exhale, Adho Mukha Svanasana. Sapta, lean forward, cross legs. Sit down into Dandasana. And separate your feet, lay down slowly. Exhale, Shavasana. Let's spend 5 to 10 minutes in Shavasana here. Now be aware of your whole body from bottom to top first. Allow your calves and your thighs to completely rest and become heavy on the mat. Allow your thighs and your buttocks to completely rest. Imagine that there is a constant force which is pulling yourself towards the mat. Allow your abdomen to completely soften and let your navel fall and allow you to relax. Be aware of your upper back and your shoulders. Allow your upper back, shoulders to completely fall on the mat. And then move your awareness towards your arms, your elbows, forearms and palms. Being aware of them, taking a deep, slow breath in. As you exhale, completely relax and let them fall dead on the floor. Being aware of your crown of the head and back of the head resting completely
And then let your facial expression disappear, a complete calmness on your face. And allow your whole body to melt and become completely dead on the mat. It's the Shavasana. Your body should completely be dead with that tension in it. Take a slow breath in throughout the body, feeling that tension that if you feel, and when you exhale, allow whole tension to disappear throughout your body. And allow your body to sink more and more to the mat. Now be aware of the stillness of your body and slowly move your awareness to your breath. Now allow your breath to become so gentle and calm that there is no sense of the breath at your nose or throughout your body. Allow your breath to become as soft as possible. Try to breathe in for 10 seconds in without any sound, and exhale for 10 seconds out with no sound. And slowly allow your breath to become so subtle and calm that you have no sense of your breath, and then move your awareness towards your mind, your thoughts, and allow your thoughts to come and go, just watching them, and get used to that so much that you can go beyond even your mind and let everything be now. You're not trying to do or not do something, simply being there. Now imagine yourself lying down on the floor. Watch your body from a distance and see yourself lying down on the floor, dead, physically, and completely become aware that you and your body are two different things. Your body is the house where you reside, and try to see clear difference between you and your body. Now move your awareness towards your mind and watch your mind. Mind is the store of memory which provides your thoughts. Now if you watch your thoughts, if you can watch your thoughts, you will be able to see yourself different from your thoughts. Thoughts coming and going, and you are just witnessing thoughts as your mind. And try to see a clear difference between you and your mind and your body. Three different things there. You witnessing your mind and your body separately. Watching that clear difference and distinction. Right now you are in the state of complete Shavasana, where the body is totally dead for you in this moment. The mind is separately playing its game
and you are witnessing and simply being a part of this cosmos, like a free energy. And now move yourself towards your mind and take it with you. Allow yourself to become your thought and move your awareness to your breath now, and notice that you are your breath. Though there's a difference, but you can be your breath by being aware of the breath. Similarly, bring your awareness towards your body now and enter your body, being aware that you are the body now. And very softly start moving your toes, your fingers, noticing that you have control over the body. Bring your whole arms, shoulders, move your head, bring your legs together, bring some expression on your face. And now take your arms overhead, taking a long breath in, stretching yourself long. And as you exhale, relax, bend your knees, turn towards the right side. Use your right arm as a pillow. Place your left hand in front of your heart on the floor. And become aware of the energies settling down on your right side, allowing your left nostril to become a little active and calming your mind down. Now gently push on your left hand, slowly come back up, sit in any cross-leg position. Join your palm to the heart and take a moment to be grateful for this wonderful experience of you being in the state of meditation, where you could realize who you actually are, and bow your head down to be thankful. Now gently rub your palms. Place your palms on your eyes and allow your mind to calm down. Look between your eyebrows in that empty dark space. Release your hands down, softly open your eyes. Namaste.